So hello everybody, very good morning and welcome to this training session on free ISO 14001 internal auditor training program. And our tagline for this training program is get internal auditor certified on environment management systems. So first of all, I would like to thank all of you to grace this meeting with your presence early this morning on Sunday. And again, I congratulate you on your investment of time on this Sunday morning for gaining this valuable skill, right? So today we are having Mr. Atul Suri as our lead trainer, and we are having Mr. Sandeep Kumar from Flipkart group of companies who will be our guest speaker for the day, right? So the structure of this course, we'll start with an introduction. We'll start with revision and history. We'll start with important concepts. Clause 1 to 4, we'll be discussing structure, scope, definitions, context of the organization, followed by clause 5, leadership, clause 6, planning, clause 7, support, clause 8, operation, clause 9, performance evaluation, and clause 10, improvement, right? Then we'll be talking about impact on the organization and auditors, and then we'll be talking about internal auditing. So the objectives of this course are to understand the principles and requirements of ISO 14001 EMS, develop skills as an internal auditor, and learn how to contribute on environment management system within the organization. So these are the objectives of this course. So what are the outcomes of this course basically, right? So to contribute to the organization's environmental management efforts, conduct internal audits, identify areas for improvements in the EMS, implement corrective actions to address non-conformities, and support the organization's commitment to environmental sustainability. And in a brief introduction about the trainer. So our trainer for the day is Mr. Atul Suri. Mr. Atul Suri is a BE Electrical and MBA educated. He is a certified lead auditor for ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 22,000, 27,001, 13485, and 26,000. He is a BE certified energy auditor from Bureau of Energy Efficiency. And he has a professional experience, 30 years plus in the industry with a strong foundation in engineering and management, 20 plus years as a seasoned management systems auditor and trainer, delivering expertise across multiple sectors, worked with various top-notch certification bodies as a lead auditor and reviewer like Quality Asia, Intertech, Apave, Moody International, IRQS, etc. So thank you very much, Atul Suri sir, for gracing this training program with your great knowledge and helping our audience on developing competence and knowledge on ISO 14001 systems. So about Quality Asia, our mission is to clearly state, to such as to empower organizations with world-class quality standards and sustainable practices. Our vision is to describe company's vision to the leading provider of quality assurance and certification solutions in India. We are an NABCB accredited organization. So we are NABCB accredited, that is National Accreditation Board for Certification Bodies, which means that their certifications are recognized internationally. They are an IAF member. Ethical certifications, we are committed to providing 100% audit and compliance services, ensuring transparency and integration in every certification we issue. Comprehensive expertise, we specialize in ISO 9001, 14001, 45001, and 6 other standards, offering a full spectrum of certification services tailored to your organization's need. We provide free internal auditor training on various ISO standards to empower your teams with the free training, helping you build internal expertise and maintain compliance with the international standards. A global reach and a local touch, serving clients across multiple Indian cities and international locations. We combine global expertise with our personalized local services, right? And our commitment to excellence, our mission is to support businesses in achieving and maintaining their certification statuses and unlocking new opportunities and improving operational efficiency in the companies. Then about our free live internal auditor training program. So we offer a focused training sessions on various ISO standard each month, ensuring continuous learning and up-to-date knowledge for your team. So these are monthly live training programs. Last month we had done ISO 9001 training program. It was a success. Upward of 250 people signed up. Upward of 180 people attempted the examination, and proudly we certified around 175 people out of them. Right. So that was our success story for the last month. And, we launched 175 new internal auditors on ISO 9001 in the industry, which is a gift to the industry, or you can say a contribution to the industry from our end. So also we are having flexible learning options. So you miss a session, no problem. We put these trainings on Quality Asia School on our website. So you can log in and learn at your own pace. I'll be showing you the last training program also right now after this slide.
And our mission is to, we are dedicated to increasing awareness about ISO standards and enhancing internal auditor competence. Our goal is to uplift industry operational standards by empowering professionals with the knowledge and skills they need to drive excellence in their organizations. So before I hand over to Mr. Atul Suri, I would like to show you a glance of our Quality Asia school, wherein you can access this training program later. So you log into our website, www.qualityasia.in. I hope my browser screen is visible to all. Can someone please confirm? Yes. Yeah, sure. It is visible. Okay, I think so. We can take this. We can take this part later during the meeting since the time has already started. It's 9:20 right now, and I'll hand over to Mr. Atul Suri for further communication and all. Right. So Atul sir, please take this up from here. Thank you very much, and I hope all of you have a lovely training sessions. We'll see you during the workshops as well as the final examination and various other touch points in the training. Atul Suri sir, please, up to you now. Okay, thank you so much. Good morning to all of you, and I hope many of you have attended that previous training program also. International Organization for Standardization. So they have made several management system standards in addition to other standards, and of these several standards like I 9001, 14001, 45001, 22,000, 27,000, 20,000, 50,001. So there are several standards which are very popular. So today we are talking about ISO 14001, which is Environmental Management System Standard. As it was requested in the previous training session that I should use both Hindi and English mixture. So I'll not speak only English, I'll speak English and Hindi so that understanding better hai, kisi ko bhi samajhne mein dikkat na ho. Okay. So now we are discussing ISO 14001 2015. I would request everybody to mute your mic, please, so that there is no distortion, no disturbance. Okay, so ISO, International Organization for Standardization, it made various standards. ISO 14001 was first published in the year 19. I was talking about ISO 14001 standard. So ISO 14001 standard was 1996, then year 2004, and recent version came in the year 2015. So ISO 14001 basically it's an environmental management system standard. So it was first published in the year 1996, then first revision came in the year 2004 and followed by recent version which is 15 version. Okay. So जब 1996 में start हुआ था ये standard introduced हुआ था, तो it was basically first time it was published with the focus on environmental management system standard. एंड ईयर 2004 में एक प्रोसेस बेस्ड अप्रोच को स्टार्ट किया गया था और इसको अलाइन किया गया था दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड. सो उस टाइम पे प्रेवलेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स कौन से थे? ISO 9001 व्हिच वाज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड. बिकॉज ISO 9001 का भी आप एक हिस्ट्री देखो तो 1987, देन 1994, देन ईयर 2000, देन ईयर 2008. तो ईयर 2000 ISO 9001 में प्रोसेस बेस्ड अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड उसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ISO 14001 2004 में भी प्रोसेस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इसको दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सके. एंड रीसेंट वर्जन केम इन द ईयर 2015. अब रीसेंट चेंजेस में क्या है? बिकॉज जैसे 9001 में रिस्क बेस्ड थिंकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया ISO 9001 2015 में, इसी तरीके से ISO 14001 2015 में भी रिस्क बेस्ड थिंकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, प्लस एक लाइफ साइकिल असेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है. लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में. और इसको बाकी मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट किया गया. बाकी मैनेजमेंट सिस्टम माने बिकॉज जैसे ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, ISO 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है. तो जो कंपनीज फूड रिलेटेड एक्टिविटीज करती हैं उनके लिए एक दूसरा स्टैंडर्ड है ISO 22000 2018. इसी तरीके से IT कंपनीज के लिए ISO 27001 स्टैंडर्ड है. जो कंपनीज सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करती हैं उनके लिए ISO 20000 है. एक स्टैंडर्ड ISO 50000 है विच इज एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड. एसेट मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड भी है. तो इस तरह से काफी सारे मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स हैं. और 2015 वर्जन में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे हम बोलते हैं हाई लेवल स्ट्रक्चर. हाई लेवल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जितने भी ISO मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स में जो क्लॉजेस की नंबरिंग होती है वो
it starts from 1 and ends at 10. जैसे आप ISO 14001 स्टैंडर्ड भी देखें तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्लॉज नंबर 1. सो क्लॉज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसी तरह सारे मैनेजमेंट सिस्टम्स स्टैंडर्ड्स के क्लॉजेस की नंबरिंग इसी तरीके से 1 2 3 and then clause number 4 to 10. These clauses 4 to 10 address the various requirements with respect to that particular management system standard. For example, clause number 4 to 10 जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट यानी क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एड्रेस करता है. अगर वही स्टैंडर्ड हम 45001 की बात करते हैं तो वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करता है. वही अगर हम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो वो एनर्जी सेविंग और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं. बट अल्टीमेटली सारे स्टैंडर्ड्स का स्ट्रक्चर एक ही है. इसका एडवांटेज ये है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करती हैं. तो जब आप मल्टीपल स्टैंडर्ड्स की टर्मिनोलॉजी एंड मल्टीपल स्टैंडर्ड्स का स्ट्रक्चर एक ही होगा तो आपको एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी. आपका डॉक्यूमेंटेशन कॉम्पैक्ट और इसके अलावा आप इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, पॉलिसी सेटिंग, बहुत सारी जो स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है उनको आप मर्ज करके एक कॉमन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं. तो इसलिए 14001 2015 में जो लेटेस्ट चेंज था, जो लेटेस्ट रिवीजन था, वो था एक रिस्क बेस्ड थिंकिंग का, लाइफ साइकिल असेसमेंट का एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसको बाकी मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट किया गया था ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करती हैं. ISO 14001 is an internationally recognized standard for environmental management system, and over the years it has gone several revisions to keep pace with evolving environmental concerns and best practices. तो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड 1996 में पब्लिश हुआ, फिर 2004 में अपग्रेडेशन हुआ and recently 2015 में अपग्रेडेशन हुआ. And just for your information, as I explained in the previous training session on ISO 9001 also, अभी भी ISO 9001 का recent version 2015 है, but recently March 2024 में एक amendment आया है. उसमें उन्होंने even if the company is not certified to ISO 14001 or other standards, but they need to address climate change in their quality management system also, if they are implementing ISO 9001 standard only and not other standards. तो climate change एक ऐसा कहना चाहिए एक करंट इशू है, करंट टॉपिक है, बिकॉज एवरीबॉडी इज अफेक्टेड बाय दैट. अब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर सिटिंग इन दिल्ली राइट नाउ. बिकॉज ऑफ दीज एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट वी आर फेसिंग द एक्सट्रीमिटी ऑफ एवरी सीजन. मतलब जब दिल्ली में सर्दी पड़ती है तो एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है. इस बार गर्मी पड़ी मई, अप्रैल एंड मई के महीने में, सो इट वाज एक्सट्रीमली हॉट. मतलब the temperatures were like 48, 49, 50 degrees, even almost touching 50 at some places, जो कि कभी भी नहीं था. And rains भी आप देखो तो इतनी बारिश हुई है इस बार, because जैसे कभी पहले कभी नहीं हुआ. because क्या है कि climate change की वजह से जो सारा जो एक natural cycle है different seasons का, that has got disturbed. तो ultimately क्या है, everybody as an individual and every organization has some moral responsibility towards solving environmental concerns, towards addressing environmental concerns. तो organization के लिए that way ISO 14001 का compliance becomes all the more important. कुछ changes के बारे में बताया गया, revision background के बारे में. As I explained, ISO 14001 1996 was first time introduced, so it was primarily focusing on environmental performance and compliance with regulation. Although this focus will always remain, because ultimately 14001 environmental management system का one of the key objective is improving your environmental performance. Regulations means जो regulatory requirements applicable to environmental management system. तो उसमें approach क्या था? Approach was introduce a systematic approach to environmental management system, including implementation, changing and corrective action. तो जैसे हर एक मैनेजमेंट सिस्टम का एक बेसिक थीम होता है PDCA साइकिल. PDCA साइकिल मींस प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. तो वही अप्रोच ISO 14001 की भी थी, या है पुराने स्टैंडर्ड की भी और करंट स्टैंडर्ड की भी, कि यू नीड टू प्लान योर एक्टिविटीज, यू नीड टू एग्जीक्यूट योर एक्टिविटीज, you need to have checks and measures in place and take appropriate corrective actions wherever required. Okay. Then came the revision ISO 14001 2004. So as I explained, 9001 2000 ईयर में जब अपडेशन हुआ था तो एक प्रोसेस बेस्ड अप्रोच को
इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोसेस बेस्ड अप्रोच, मतलब ईच एक्टिविटी इज लाइक अ प्रोसेस. सो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस हैज गॉट इनपुट्स एंड प्रोसेस हैज गॉट आउटपुट्स, एंड ऑल्सो प्रोसेस हैज गॉट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, चेक्स एंड मेजर्स आर देयर. तो इसका रिवीजन हुआ था ईयर 2004 में, जबकि आईएसओ 9001 का रिवीजन हुआ था ईयर 2000. तो जब 2004 में 14001 का रिवीजन हुआ तो उसको अलाइन किया गया था 9001 के साथ, और एक प्रोसेस बेस्ड अप्रोच जो फोकस 9001 में था उसी फोकस को 14001 में भी इंट्रोड्यूस किया गया था. तो मेजर चेंजेस क्या थी? इंट्रोड्यूस द पीडीसीए साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल, एंड ऑल्सो एम्फसाइज्ड अपॉन टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट. जैसे कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे हम 9001 की बात करते हैं, इसी तरह 14001 एंड ऑल मैनेजमेंट अदर टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट. 2004 में टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट के ऊपर और फोकस दिया था, एंड कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो कि एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड थी, उनको और क्लैरिटी के साथ एम्फसाइज किया गया था, रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया था. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट वर्जन आईएसओ 14001 2015. तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब environmental management system then now you will focus on the current standard, that is ISO 14001 2015, where 2015 is year of application of the standard. तो अभी स्टैंडर्ड में क्या किया है? कुछ डेफिनेटली जब भी कोई नया वर्जन आता है, स्पेशली द वर्जन इज कमिंग आफ्टर 7 years 2004 से 2015 में, सो देयर आर बाउंड टू बी सर्टेन चेंजेस. तो वो चेंजेस क्या थी? कुछ फोकस एरिया क्या था इसका? फर्दर रिफाइन द स्टैंडर्ड to align with high level structure of other management system standard. तो वो हाई लेवल स्ट्रक्चर क्या है? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स हैं उनकी जो क्लॉजेस की टर्मिनोलॉजी है या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है 1 2 3 बेसिकली इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड टर्म्स, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस का मेंशन करता है, बट मेन इंप्लीमेंटेबल क्लॉजेस हैं क्लॉज नंबर 4 to 10. 2001 2015 इलेबरेट किया और उनको अलाइन किया दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के साथ. एंड अल्टीमेटली एम्फेसिस क्या था? रिस्क बेस्ड थिंकिंग बिकॉज 9001 2015 एक प्रोसेस अप्रोच को रिस्क बेस्ड थिंकिंग में कन्वर्ट किया था. दैट मीन्स यू हैव टू डू अ रिस्क असेसमेंट फॉर वेरियस प्रोसेसेस. तो इसी तरीके से 14001 2015 में भी you have to do a risk-based approach, follow a risk-based approach, and you need to do risk assessment and based on the measures and also identify the opportunities for improvement. So basically what you need to do, you need to balance your inputs and outputs in terms of risk and opportunities. And again जैसे 9001 2015 में एक major change था stakeholder engagement, because earlier standard was talking about customer focus, but 2015 version of all standards focus on the stakeholder engagement. So who are the stakeholders? Basically the interested parties. Like employees are also an interested parties. Other than customers, there are several interested parties for an organization. So employees are one of them. Your customers are one of them. यहाँ पे because 14001 में हम legal requirements की बात करते हैं, so regulatory bodies or the compliance bodies, they are a major stakeholder. Then there are other stakeholders also. If it is a listed company, then there are shareholders also, board of director है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है. 14001 में आपको उन stakeholders की engagement को और उन तो ultimately key change क्या है? Introduce a risk-based approach to identify and address environmental risk and opportunities. As I said, process-based approach को risk-based approach में convert किया है, और आपको environmental risk and opportunities, जैसे आप quality management system में आप QMS risk and opportunities for various processes identify करते हो, यहाँ पर आपको environmental risk and opportunities को identify करना है और emphasize करना है importance of leadership and commitment. So it was always there in all standards, but again with more clarity and more definition, better definition. Ultimately, there is an enhanced requirement for stakeholder engagement. PDCA cycle क्या है? PDCA cycle हमने पिछले ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी डिटेल में बात करी थी, उसी को रिपीट करते हैं. आपको क्या करना है? आपको प्लान करना है एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड द प्रोसेसेस नीडेड टू डिलीवर रिजल्ट्स. नाउ जब हम एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो क्या चीज दिमाग में आती है? एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है, फॉर दैट मैटर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव लीड करता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को. तो एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो सकता है? जब आप रिसोर्सेज को कंजर्वेशन की बात करते हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, फॉर एग्जांपल वाटर सेविंग,
फॉर एग्जाम्पल पेपर सेविंग, एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आप ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट फिक्स करते हो रिजेक्शन एंड रीवर्किंग को रिड्यूस करने का, उसी तरीके द सेम ऑब्जेक्टिव इज एप्लीकेबल फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो, बिकॉज जब आप रिजेक्शन एंड रीवर्किंग रिड्यूस करते हो, रिड्यूस करते हो, आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करते हो, आप रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करते हो, सो अल्टीमेटली द सेम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इज लाइक एन एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। वहां पे आप क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की टर्म्स में रिजेक्शन रिवर्किंग को रिड्यूस करते हो ताकि आपकी कॉस्ट ओवरहेड्स वगैरह सेव हो, बट अल्टीमेटली by following that objective you are also following an environmental objective, because saving energy, you are saving your manpower, you are saving your materials, you are saving your resources, you are saving everything, okay? तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करना है टू एलोकेट योर रिसोर्सेज। तो 14001 की रिक्वायरमेंट में से हम बोलते हैं EMP, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल इफ यू विश टू सेव एनर्जी, अब एनर्जी सेव करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, लेट अस से पर कैपिटा कंजम्पशन एग्जांपल से, लेट अस से फॉर पर लाख सेल ऑफ योर गुड्स यू वांट टू सेव एनर्जी बाय 5% और 2% और 3%। तो अब उस एनर्जी को सेव करने के लिए आप क्या करोगे, अब एनर्जी को सेव करने के लिए आप क्या करोगे, आप बेसिकली एनर्जी सेविंग से रिलेटेड जो गुड प्रैक्टिसेस है आप उनको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करोगे। क्या हो सकता है, जैसे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल आप देखते हैं कि सब जगह एलईडीज यूज होती हैं, तो जब आप कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी को या ट्यूबलाइट को आप एलईडी से रिप्लेस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी सेविंग होगा, एनर्जी रिडक्शन होगा। या जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर आप VFDs, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स लगाते हैं, तो दैट विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ एनर्जी। या आप अपनी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं उनको आप रिप्लेस करते हो एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स। So though basically cost is involved, but every investment has got a return on investment. तो उसका ROI क्या है, कितने टाइम में पे बैक करेगा। सबसे बड़े एग्जांपल एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव का क्या है आज के टाइम में, सोलर एनर्जी। आप बहुत जगह देखते होंगे सोलर पैनल्स लगे हैं, इवन आजकल तो लोग घरों में सोलर पैनल लगाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट पेज बैक। अगर हम एक जनरल टर्म्स में बात करें तो एक सोलर प्लांट, इवन आप अगर आप अपने घर में भी सोलर प्लांट लगाते हैं, इंडस्ट्री के लिए तो है ही बेनिफिशियल, तो नॉर्मली जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो 2 से 3 साल में पे बैक कर जाती है, जबकि उसी सोलर पैनल की या उसी सोलर सिस्टम की जो एक लाइफ होती है वो करीब 20 से 25 साल होती है, एटलीस्ट 20 ईयर्स, बट आइडियली 25 साल। तो जो सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है वो अल्टीमेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट आपका 3 साल 4 साल मैक्सिमम पे बैक करता है, लेकिन अगले 20 साल में जो एनर्जी सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है दैट इज अल्टीमेटली फ्री ऑफ कॉस्ट, so it is very beneficial for the organizations. So this is part of your environmental objective, जहाँ पे आप एनर्जी सेव करने के लिए एक टारगेट सेटअप करते हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप एक रोड मैप बनाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो अप करते हो, मॉनिटर करते हो, ओके। सो सेम PDCA साइकिल हेयर आल्सो, प्लान योर एक्टिविटीज, देन आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। आपने जो प्लान किया अल्टीमेटली रिजल्ट्स तो कभी मिलेंगे ना जब उसको एग्जीक्यूट करोगे। आपने सोलर प्लांट अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाने का प्लान किया, 25 किलोवाट पावर का, 5 किलोवाट पावर का, 500 किलोवाट पावर का, 1 मेगावाट का, तो अल्टीमेटली आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट्स ना। सो इम्प्लीमेंट द, देन चेकिंग एंड मॉनिटरिंग भी जरूरी है, मॉनिटरिंग एंड मेजर द प्रोसेस अगेंस्ट द पॉलिसी, अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स, द क्राइटेरिया एंड रिपोर्ट रिजल्ट्स। आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया वाटर सेविंग का, आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया पेपर सेविंग का, आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया रिजेक्शन को रिड्यूस करने का, रीवर्क को रिड्यूस करने का। लेट अस से योर ऑब्जेक्टिव वाज रिडक्शन बाय 2%, रिडक्शन बाय 3%, 5%, तो आप उसको मॉनिटर करोगे। मॉनिटर कैसे करोगे, जो आपका कंप्लायंस डाटा है प्रोडक्शन का, क्वालिटी का, मटेरियल एक्सेप्टेंस का, उसको आप अगेंस्ट द लेड डाउन ऑब्जेक्टिव्स आप मॉनिटर करोगे, एंड जहां पर भी आपको करेक्टिव एक्शन की जरूरत पड़ेगी, not able to achieve the objective fully, that means you need to put in more effort, that means you need to provide more resources। तो आप उन प्लानिंग के हिसाब से उसको मॉनिटर करोगे, चेक करोगे, रिपोर्ट करोगे, एंड उस इम्प्रूवमेंट के लिए आप फिर फर्दर एक्शन लोगे। तो एक्ट, टेक एक्शंस टू improve continually। So PDCA cycle is applicable for all management standards including
ISO 14001. Plan your activities, do your activities, check your activities, and take appropriate action. Yani, establish environmental objectives and processes needed to deliver results. Implement the processes as planned. Monitor and measure the processes against the policy, the objectives, the audit criteria, and the audit and the report results, and report the results, and take actions to improve continually. So this again is a basic theme for ISO 14001. तो हमें environmental management system की क्यों जरूरत है? Our organization, because the three pillars of sustainability: environment, society and economy. तो basically हम तीन pillars की बात कर रहे हैं. Overall environment की बात कर रहे हैं, एक society जिसमें हम बात कर रहे हैं, रहते हैं, and तीसरा है economy. तो इन तीनों का हमें एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल चाहिए, बैलेंसिंग एक्ट चाहिए, बिकॉज एनवायरनमेंट भी हमें चाहिए. अब आप में से जो लोग दिल्ली में रहते हैं या एनसीआर में रहते हैं, यू ऑलवेज फील कि सडनली इमीडिएटली आफ्टर दिवाली इट बिकम्स चोकिंग, बिकॉज क्या होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, अनबियरेबल हो जाती है. इट इज मेजर हेल्थ हैजार्ड आल्सो. इवन देयर आर स्टडीज व्हिच से दैट दोस पीपल हु आर बेसिकली, इट इज लाइक वर्चुअली पैसिव स्मोकिंग. 20 सिगरेट दिन में स्मोक करने के बराबर है, जो आप ना चाहते भी यू आर इनहेलिंग, बिकॉज एयर क्वालिटी इज बैड, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बैड, एयर क्वालिटी इज एक्सट्रीमली पुअर. तो एनवायरनमेंट चाहिए आप, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे आपको मालूम है कि इंडिया होता है जीडीपी की 7%, 6%, 7.5%, वट एवर इट इज, that growth is the highest in the world because we are a growing economy. So disturbance is there because we are a growing economy. तो अल्टीमेटली जहाँ पे भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे रिसोर्सेज यूज होंगे, वहाँ एयर पॉल्यूशन भी होगा, लैंड कंटेमिनेशन भी होगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा, बट वी हैव टू डू इट इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर, कंट्रोल्ड मैनर. ठीक है. तो अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए बिकॉज आवर्स इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी. तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, तीनों पिलर्स को, एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी को बैलेंस करते हुए वी हैव टू डू अवर एक्टिविटीज, बिकॉज एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड. ठीक है. As concern grows for continually improving the quality of the environment, organizations for all types and sizes are increasingly turning their attention to the environmental impact of their activities, products and services. तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोशनल एक्टिविटीज है या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी उन चीजों को कंप्लाई करने का, एक्टिविटीज के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को, यानी आप जो सर्विसेज डिलीवर करते हो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, उस चीज को एड्रेस करने का, उस चीज को फोकस करने का धीरे धीरे वो रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है. ओके. सो environmental performance of an organization is of importance to internal and parties. तो internal external parties की हमने बात करी, stakeholders की बात करी, because let us say for example there is some industry, बहुत सी industry जो है बैंक से लोन लेके growth करती है, expansion करती है, and some industries are doing some hazardous processes also, but then there are regulatory requirements, there are regulatory standards for controlling those hazardous processes also. So that means आपको pollution control equipment लगाने होते हैं. ठीक है. बट अगर let us say कोई कंपनी लापरवाही कर रही है और उन pollution control equipment को यूज ना करे या इंस्टॉल ना करे, तो अल्टीमेटली होगा, अल्टीमेटली बिकॉज देयर आर पढ़ते भी होंगे, खासतौर से दिल्ली एरिया में तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज वेरी एक्टिव. बहुत सारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम करती हैं, बर्तन वगैरह बनाने का, एंड दीज आर स्मॉल कंपनीज, तो दे आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स प्रॉपर्ली. वो क्या करती हैं, जो बेसिकली दे थ्रो इट, अल्टीमेटली क्या होता है, ये चीजें छुपती नहीं है, वॉच डॉग की नजरों में आता है. तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज, इस तरह की इंडस्ट्रीज रातों रात सील हो जाती है, इंडस्ट्री बंद हो जाती है. अब जब इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो जो लोग काम करते हैं उन इंडस्ट्रीज में दे आर अफेक्टेड, उनकी जॉब चली जाती है. जो बैंक्स हैं जिन्होंने आपको लोन देकर उन इंडस्ट्रीज को लोन दे रखा है, बैंक को लोन की जो इन्वेस्ट बैंक ने जो लोन दिया, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स.
तो बैंक्स के पास भी काफी पावर्स होती है अपने एसेट्स को रिकवर करने के लिए, एंड ओनर्स आल्सो दे गेट इनटू डेब्ट ट्रैप। तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती, so they are doing a risky business, so anytime they can be caught and anytime their industry can be sealed. तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडस्ट्रियल पार्टीज के पर्सपेक्टिव से। एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू अडॉप्ट अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग ए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस है, एंड अल्टीमेटली बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन through following of objectives, through achievement of those objectives, it is always good to have an environmental management system. तो वो environmental management system आप कैसे implement कर सकते हो अपनी organization में, अपनी industry में, by following the standard ISO 14001 latest version, that is ISO 14001 2015. So sustainable development is meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. So this standard ISO 14001, it provides a systematic approach to environmental management. क्या है ये environmental management system? Environmental management system is like any other management system, like quality, occupational health safety, information security, any system, but which focuses on the environmental aspects, environmental requirements, environmental guidelines. So that is an environmental management system. तो एक definition क्या है management system की? Management system है set of interrelated or interacting elements of an to establish policies and objectives and the processes to achieve those objectives. So policies and objectives क्या है? Environmental policy, environmental objectives. So as I said, if the organization is implementing an integrated management system, so everything can be integrated. Like you can have an integrated policy instead of an environmental policy. You can have integrated objectives. You can have integrated internal audit or integrated management review meetings also. तो मैनेजमेंट सिस्टम जो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट पे फोकस करते हुए पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करता है, उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड टू मैनेज एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, fulfill compliance obligations. Now this compliance obligation is a very important aspect, and subsequent slides में we will discuss about compliance obligations in detail. तो compliance obligations क्या है? Basically regulatory requirements जो एक industry को चलाने के लिए with respect to environmental requirements applicable है, and compliance obligation is basically a generic term जो कि बाकी management systems के लिए भी यूज होती है। अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके एक लेटर से BIS का लाइसेंस मैंडेटरी है, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। इसी तरह आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को आपको एड्रेस करना है, फैक्ट्री लाइसेंस आप लेते हैं, स्टेट स्पेसिफिक फैक्ट्री रूल्स हैं, उन रूल्स को दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। इसी तरह रेगुलेशंस हैं, उन एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को आप फुलफिल कर, एंड अल्टीमेटली रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एक बेसिक थीम है 2015 वर्जन ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स। तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आप, बिकॉज हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, so we are talking about environmental risk and opportunities, so which needs to be addressed in your integrated management system or environmental management system. तो ultimately एक environmental management system का aim क्या है? सबसे बड़ा aim है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है protecting the environment, यानी कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। कैसे? बाय प्रिवेंटिंग और मिटिगेटिंग एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम करते हैं या आप एनोडाइजिंग का काम करते हैं, फॉस्फेटिंग का काम करते हैं, देयर आर सेवरल प्रोसेसेस व्हिच आर क्रिएटिंग एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है डेफिनेटली। अब उसको प्रिवेंट करने और मिटिगेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यू नीड टू इंस्टॉल पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ठीक है, यानी कि आपको फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो उससे आप क्या कर सकते हो? आप प्रिवेंट कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी से जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहे हैं। आप कुछ करते हो जिससे कि आप वेस्ट वाटर जनरेट होता है, तो नॉर्मली उसकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ETP, या अगर जैसे कोई बड़ा बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसको SC
3P क्या होते हैं? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रिक्वायरमेंट आपको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है। यानी कि आपका जो वेस्ट वाटर है, वो वेस्ट वाटर जो आपके ऑपरेशन से भी हो सकता है और अदरवाइज बिल्डिंग की एक्टिविटी से भी हो सकता है, सैनिटरी एक्टिविटी से भी हो सकता है, उसको आपको एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू रूट करना पड़ता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का पर्पस क्या होता है? बेसिकली केमिकल प्रोसेसिंग है। वो उस वाटर को फिल्टर करने के बाद जो बेसिकली स्लैग निकलता है या जो स्लज निकलता है, दैट इज हजार्डस वेस्ट। ठीक है, तो वो उस हजार्डस वेस्ट को आपको एक ऑथराइज रिसाइकलर को, जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल, जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूव्ड होते हैं, उसको आपको डिस्पोज ऑफ करना होता है। या और उसके बाद जो आपका ट्रीटेड वाटर है, उसको आप ड्रिंकिंग पर्पस आप उसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप उस पानी को अपने ये वॉशिंग सिस्टम में या फ्लशिंग सिस्टम में आप उसको रिसर्कुलेट कर सकते हो, अगर एक एसटीपी है। अदरवाइज आप उसको क्या कर सकते हो, बिल्डिंग में या ऑफिस में या कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे आपका ग्रीन एरिया है, उस ग्रीन एरिया में मतलब उस पानी को आप मतलब इरिगेशन पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब ये आप तभी करोगे जब आप एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को फॉर्मली अडॉप्ट करोगे। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी कंपनीज, कुछ कंपनी जो कि एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, उस वेस्ट वाटर को वो सड़क पे डाल देते हैं या जो लोकल नाली होती है उसमें डाल देते हैं। बट नो, अल्टीमेटली दे आर स्पॉइलिंग द एनवायरमेंट। तो जब आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को काम करते हो, तो आप उस वाटर को ट्रीट कर रहे हो। आप उसको डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, आप उसको ट्रीट कर रहे हो। इवन एयर पोल्यूशन भी अगर आपके प्रोसेसेस में है एंड विच इज परमिटेड एज पर द लॉ, तो आप उसको फिल्टर करके, एयर को फिल्टर करके देन यू आर डिस्चार्जिंग टू द एनवायरमेंट। फाइन। तो अल्टीमेटली ये मैनेजमेंट सिस्टम आपको हेल्प कर रहा है कि एनवायरमेंट को करने के लिए by preventing or mitigating the adverse environmental impacts of your organization's activities. Ultimately, what happens? Mitigating the potential adverse effect of environmental conditions on the organization. Because there is always a risk. अगर आप legal requirements को comply नहीं करोगे, तो there is always a risk कि watchdog or the regulatory bodies will catch hold of you, and then your industry can be sealed also in extreme cases, or industry can be penalized also, which is not a good thing for any organization, because ultimately organization में आपको काम करना है, business करना है, ना कि you have to carry a risk of getting sealed or getting deregistered or getting licenses cancelled. तो जब आप environmental management system implement करते हो, तो ये आपको help करता है, आपके organization को help करता है mitigating the potential adverse effects of environmental conditions on the organization. ये आपको असिस्ट करता है fulfillment of compliance obligations. So as I said, compliance obligations is very important part of any management system, and compliance obligations are not related to EMS alone. They are for all standards. Every standard, every management system has got own compliance obligation requirements, and ultimately one of the help of the environmental management system, or for that matter any management system, is it helps you to fulfill the legal compliance obligations, because it is always good to be on the right side of the law. Never try to be on the wrong side of the law, because there is always a risk. Fine. तो ये मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो ISO 14001 में या किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि what are those legal requirements which are applicable for our organization, and then you fulfill those obligations. This management system also helps you in improving the environmental performance. So as I said, when you are on the right side of the law, when you are fulfilling all the legal requirements, the related monitoring and testing, ultimately you contribute to enhancing the environmental performance also. This management system also helps controlling or influencing the way the organization's products and services are designed, manufactured, distributed, consumed, and disposed by using a life cycle perspective. Now, this life cycle perspective is also important, and this has been introduced in 2015 version
We will discuss about this life cycle perspective in detail. So that can prevent environmental impact from unintentionally shifted elsewhere within the life cycle. Life cycle का मतलब क्या है कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अल्टीमेटली उसमें बेसिकली यू आर गेटिंग डिफरेंट इनपुट्स. आप रॉ मटेरियल लेते हो, फॉर एग्जांपल लेट अस से स्मॉल असेंबली यूनिट और लेट अस से मोबाइल फोन असेंबली यूनिट. तो मोबाइल फोन असेंबली यूनिट क्या करती है, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट मटेरियल्स को, कंपोनेंट्स को इकट्ठा करती है, उसको असेंबल करती है. देन अल्टीमेटली you and me purchase that mobile phone, but उसका एक लाइफ साइकिल है. नॉर्मली एंड ऑफ लाइफ साइकिल, अब अगर आपने मोबाइल फोन की भी बात करो तो 3 या 4 साल चलता है, 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, उसका प्रोसेसर कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है. बट व्हाट अबाउट आफ्टर द लाइफ? तो आपने देखा होगा अभी अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले आईफोन 16 लॉन्च हुआ इंडिया में. अब जैसे ही आईफोन 16 लॉन्च हुआ तो बहुत सारे लोग अपने पुराने आईफोन 13, 14, 15 जो भी है उसको डिस्कार्ड कर देंगे. अब डिस्कार्ड कर देंगे तो क्या होगा, बिकॉज इट इज ई वेस्ट. अब उस ई वेस्ट को कैसे आप डिस्पोज ऑफ करोगे? तो अल्टीमेटली देयर आर रेगुलेशंस विच आर एप्लीकेबल फॉर सच काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का असेंबली है या सैमसंग की असेंबली है या फॉर दैट मैटर एनी मोबाइल फोन असेंबली. So they are responsible for collecting at least 30% of mobile phones after their shelf life. तो आप कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर खरीदने जाओ, स्पेशली द मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, तो आप देखोगे, अब आप एक नोकिया के सेंटर पे जाओ या आईफोन के सेंटर पे जाओ या सैमसंग के सेंटर पे जाओ, तो यू विल फाइंड सम बिग बॉक्सेस आर पेज्ड देयर. सो दे आर सेइंग कि यू प्लीज डंप योर एंड ऑफ लाइफ दिस मोबाइल फोन्स इनटू, मतलब वो मोबाइल फोन जो आप यूज नहीं कर रहे हैं या नहीं करने वाले, बिकॉज इट्स एन ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो आप इसमें डाल दीजिए. तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, these big companies, they will get it recycled from the authorized recyclers in a responsible manner. ठीक है? So that is one example of life cycle. Then there are financial and operational benefits also, which can result from implementing environmental sound alternatives that stand to organization's market position. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी तरह एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, एंड ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स अल्टीमेटली लीड टू इम्प्रूवमेंट, ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स अल्टीमेटली लीड टू कॉस्ट सेविंग, ऑल दीज अल्टीमेटली improve the financial and operational performance of the organization. आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हो, आप वाटर सेव कर रहे हो, आप रिसोर्सेज सेव कर रहे हो, आप रिजेक्शन को रिड्यूस कर रहे हो, रीवर्किंग को रिड्यूस कर रहे हो. सो अल्टीमेटली क्या है, कॉस्ट बेनिफिट्स है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, एंड ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंड अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का एक जो मार्केट शेयर है, मार्केट पोजीशन है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, उसको इम्प्रूव करते हैं. And this environmental management system also helps in communicating environmental information to the relevant interested parties. So this 14,001/2015 standard talks about the requirements for an environmental management system standard, and it can be applied to any organization. Like it can be an IT company, it can be even a hospital, school, college, it can be, of course, manufacturing sector is there. So all kind of organizations can apply to this environmental management system standard. And as I mentioned, it was first published in 1996, then 2004, and we are talking about the current revision, that is year 2015. So basically it's a series of standards, but auditable standard is only 14,001. तो कोई भी स्टैंडर्ड जब पब्लिश होता है तो उस स्टैंडर्ड के साथ उसके कुछ गाइडलाइंस, कुछ सपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी पब्लिश होते हैं. बट अल्टीमेटली ऑडिटेबल स्टैंडर्ड मतलब जिस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज ओनली वन स्टैंडर्ड, दैट इज ISO 14001 2015. बट उसके सपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है? अब फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट ISO 14001 इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सो यू रिक्वायर सर्टेन गाइडलाइंस, बिकॉज स्टैंडर्ड क्या आपको रिक्वायरमेंट्स बताता है. अब उन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेफिनेटली यू वुड लुक फॉर सम एडवाइस, सम गाइडलाइंस की, और वो गाइडलाइन वो जो कि एक अप्रूव्ड गाइडलाइंस हो, तो उसके लिए यू रेफर टू द स्टैंडर्ड ISO 14001. So ISO 14001 is guideline for implementation of the environmental management system. Then there are other standards also. Like ISO 14002 is, अगर आप कोई टॉपिक स्पेसिफिक गाइडलाइन चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल
on water, climate, resources, and waste. So you can refer to ISO 14002. Then if you want to incorporate eco-design, then there is a standard ISO 14006. And ultimately, monetary evaluation of environmental impact and assessment. उसके लिए आप स्टैंडर्ड है ISO 14008. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जैसे काफी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेशली इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइन है कि एनी प्रोजेक्ट जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 500 करोड़ से ज्यादा होती है, तो उसमें EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इज ए मैंडेटरी थिंग. तो अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बिकॉज क्या होता है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कहीं पर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट लग रहा है, कहीं पर कोई वाटर रिसोर्स डेवलप हो रहा है, तो अल्टीमेटली उनका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है. बिकॉज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, पहाड़ों में कहीं पर इस्टेब्लिश होना है, तो कहीं पर उसका पावर प्लांट बनेगा, वाटर टनल बनेगी, और भी रिसोर्सेज काफी हिसाब से जो भी हाइड्रो पावर प्लांट की रिक्वायरमेंट है, डैम बनेगा. तो कई जगह पे आपको एनवायरनमेंट को, बिकॉज काफी जगह पे पेड़ भी काटने पड़ते हैं. ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज टू बी डन लीगल, आप इलीगली कुछ नहीं कर सकते. आप पेड़ क्या, आप तो एक फॉर एग्जांपल जैसे हम दिल्ली में हैं और आपके घर के बाहर एक पेड़ है और उससे कुछ हिंड्रेंस है, लेट अस से यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू इवन कट ए ब्रांच ऑफ द ट्री. आप उस पेड़ की शाखा भी नहीं काट सकते हैं. अल्टीमेटली यू हैव टू request to the forest department, they will do a survey, and then based on their survey and their findings, they will ensure some cutting and all that. But यही अगर आप एक environmental project की बात करते हैं, hydro power project की बात करते हैं, जहाँ पे maybe need basis hundreds of trees cut करने पड़ते हैं, तो they have to seek permission, और उसके एवज में उनको extra, मतलब for every tree cut they have to plant 10 सैम्पलिंग्स, एटलीस्ट 10 सैम्पलिंग्स. मतलब आप जो एक पेड़ काट रहे हो एक प्रोजेक्ट की वजह से, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से, दो दैट प्रोजेक्ट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू डिलीवरिंग ग्रीन एनर्जी. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बेसिकली ग्रीन एनर्जी, क्योंकि आप पानी की एनर्जी को यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. यू आर नॉट यूजिंग कोल, सो यू आर नॉट पॉल्यूटिंग. सो दैट वे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ए ग्रीन एनर्जी. बट उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस, especially in forest areas, especially in hilly areas. तो hilly areas are always having lot of tree plantation, तो आपको trees भी कट करने पड़ेंगे. तो उन trees को कट करने के लिए you have to take permission, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है. और सबसे पहला स्टेप होता है उसमें EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. आपके प्रोजेक्ट की वजह से उस इन्वायरमेंट, उस लोकल एरिया के इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. इट इज नॉट ओनली cutting of trees, it can be relocation of local habitat also, local people also. कोई local villages होंगे, आपको लोगों को relocate करना पड़ेगा. There are several other things also that itself it is a vast subject, environmental subject. But ultimately you need to follow some guidelines. तो ISO 14008 एक गाइडलाइन देता है जो कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हाइड्रो एनर्जी में या बड़े प्रोजेक्ट्स में डील करती हैं, तो वो उसको रेफर कर सकती हैं कि उस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को और एस्पेक्ट को आप मॉनिटरी टर्म्स में कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, वैल्यूएशन कैसे कर सकते हो. ठीक है. सो ऑल दीज आर बेसिकली गाइडेंस स्टैंडर्ड्स, बट अल्टीमेटली द ऑडिटेबल स्टैंडर्ड इज वन, दैट इज ISO 14001 2015. ऑडिटेबल स्टैंडर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट ऑडिट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, और जिसके अगेंस्ट आपको once you meet all the requirements, fulfill all the requirements, you get a certificate. Fine. So this is the standard ISO 14001 2015. So as I explained, 1, 2 and 3 are basically the introductory part. So it talks about scope, normative reference, terms and conditions, and the requirements related to EMS, the implementable requirements, they are mentioned in clauses, clause number 4, which is context of organization, and these clauses are further sub clauses. So clause number 4 is context of the organization, 5 is leadership, 6 is planning, 7 is support, 8 is operation, 9 is performance evaluation, and 10 is improvement. So there is a small workshop. I would request Samar to take over for this workshop. Yes, everybody, I have putting one link in the chat box. So it's a 5-question workshop. So Atul sir, I'll request you to please stop sharing your screen so that Sagar can present his screen, Yes. as he's having the workshop with him.
right? Okay. Sagar, please share your screen and Yes. I'll request audience to please mute yourselves. All right. So this is a workshop, and the link is being pasted in your chat box. So you can just interactively open the link. Sagar, can you please paste the link in the chat box? Yes. So it's Right. a 5 question. Yes. So it's a 5-question workshop. I'll just read out the questions, and in the meantime, you can just everyone you can just open the link and fill in your responses. So Sagar, first of all, question number 1 is what is the primary purpose of ISO 14001? And we have 4 options: to ensure product quality, to protect human health and environment, to improve financial performance, and to enhance employee satisfaction. Sagar, the next question, please. So the next question, second one is ISO 14001 standard is developed by A, International Organization for Standardization ISO, B, the United Nations Environment Program UNEP, C, WHO World Health Organization, and D, International Labour Organization ILO. Then we'll have a third question, Sagar. Third question is which of the following is a key principle of 14001? Prevention, customer focus, leadership, or all of the above? Then we have so you don't need to respond in the chat box, everybody. Just open the link and put your answer. Sagar will have your responses with him and he'll display. Right? Yes. Sagar, the next question, please. ISO 14001 certification demonstrate a company's commitment to environment sustainability, financial stability, technological innovation, employee well-being. Just open it in the tree map format only. Tree map format, actually, everybody filled the response, so it's showing the percentage wise. Okay, no problem. Next, please. Next question, Yes. let's discuss. So ISO 14001 standard is applicable to only manufacturing organizations, all types of organizations regardless of industry, only service-based businesses or government agencies. Sagar, let's go on from first question and let's discuss the answers. So I think so most of them must have been submitted by now. Right. So the first Yes. question, 100% vote is going to protect the health and environment, and the right answer is also this one. So kudos everybody, you have given the right answer. Next, please. The next one is 14001 standard is developed by. So answer is A, ISO, and it is the correct answer. So this is also we are having 100% right submission, and we are still having the responses. Then we are having the right answer is prevention, all of the above, but prevention, but most of you have ticked the all of the above option, which is wrong. So prevention is the right answer over here, and we have received 37 responses on this. Sagar, next one. Then we are having 14001 certification demonstrates a company's commitment to. Answer is environmental sustainability, and we have 43 responses, 100% towards the right. Next one, Sagar. And then we are having ISO 14001 standard is applicable to all types of organizations regardless of size and industry. So we have 94% the right answer and 54 responses we have submitted. So thank you audience for your wonderful participation, and again we are having 64 responses and the responses are increasing. So I'll ask all of you to actively engage in these activities, since these activities will also be counted towards your certification that you'll be getting towards the end, and we are getting your responses submitted on this, right? Apart from the final exam which will be there. So thank you very much for your excellent participation, and this stands the end of this workshop. And there's also a QR code, so in case you have your phones in hand, so you can just scan this QR code and it will come on your phone and you can respond hereby only, right? So we are also upgrading our technology on this bit, and we request active participation in this. Thank you very much. Sagar, I'll request you to please move on to the next part. Yes, I'm Just stop sharing. Yes. Just stop sharing your screen, and Atul sir, you can just continue right away. So please share your screen and get onto it. Thank you very much. Okay, so I will move further. Okay, so clause number 4, we are talking about clause number 4. Clause number 4 is context of the organization. So there are 4 sub clauses: 4.1, 4.2, 4.3, and 4.4. 4.1 is understanding the organization and its context. 4.2 is understanding the need and expectation of interested parties. 4.3 is determining the scope of the environmental management system, and 4.4 is ultimately environmental management system standard. So first is context of the organization. 4.1, determining internal and external issues which are relevant to the organization's purpose and that affect its ability to achieve the intended outcome of the environmental management system, including environmental conditions affecting the organization or
capable to affect it. So there are always internal and external issues which are relevant for an organization. So those who had attended that ISO 9001 standard training program, so that time we discussed internal and external issues in quite a detail. So what are these external and internal issues? See, for any organization, there are two things. One thing is related to the internal working of the organization, and the another thing is external issues which affect the working of an organization. तो ये internal and external issues क्या है? Internal issues, as the name implies, internal issues जो कि within the organization applicable है, ठीक है? तो normally उसके लिए हम एक technology और tool use करते हैं जिससे हम बोलते हैं SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities and threat. And एक्सटर्नल इश्यूज वो इश्यूज हैं जो कि एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी टू परफॉर्म एंड वर्क एंड अचीव द इंटेंडेड आउटकम. तो हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, उसमें से एक ई एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, एंड फाइनली लीगल. तो पेस्टल का मतलब क्या हुआ? Political, economical, social, technological, environmental. E is more specific to the environmental and legal. ये वो factors हैं जो beyond the control of any organization होती हैं. For example, everybody understand कि हमारी country क्या, किसी भी country of the world, the policies are decided by the local government. Our local government, हर state, हर country में elections होते हैं, including US. हर 4 साल बाद यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं, हर 5 साल बाद इंडिया में इलेक्शन होते हैं, हर कंट्री में इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट सेम भी रहती हैं, गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती हैं. तो हर गवर्नमेंट के अपना एक विजन स्टेटमेंट होता है, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, और उन पॉलिसीज को उन पॉलिसीज को हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर इंडिविजुअल को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? तो ये वो इश्यूज हैं जो कि एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है और आपका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, बट यू हैव टू कंप्लाई विद दैट. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन बढ़ा दिया किसी चीज पे, या गवर्नमेंट ने टैक्सेशन घटा दिया किसी चीज पे, तो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी पॉजिटिवली इम्पैक्टेड ऑल्सो, और ऑर्गेनाइजेशन कैन बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन काफी होती है, स्पेशली इन द विंटर मंथ्स. तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या करती है? डीजी सेट बैन कर देती है कि आप डीजी सेट नहीं चला सकते, बिकॉज ऑलरेडी पॉल्यूशन काफी है, और अगर आप डीजी सेट चलाओगे तो दैट विल एड ऑन टू द पॉल्यूशन. तो देयर इज नो चॉइस. अगर आपकी एक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे आप डीजी सेट पे बेस्ड हो, तो यू हैव नो चॉइस. वैसे तो अब पावर क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई है, पावर कट्स कम होते हैं, बट स्टिल होती हैं पावर कट्स, ब्रेकडाउन भी होते हैं. बट इन केस ऑफ दैट पावर ब्रेकडाउन, even if you have DG set in your organization, so you cannot use it, okay? Or they have changed the fuel of the organization, that you have to use PNG. You cannot use diesel as a fuel in their DG set. तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो related kit है वो आपको लगानी पड़ेगी. So that is a cost to the company, but then you have to follow it. You have to implement it. और जब पॉल्यूशन पीक होता है तो गवर्नमेंट ऑफ, स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है? एक ऑड इवन स्कीम कई बार इंप्लीमेंट कर देती है. तो आपकी गाड़ी का नंबर ऑड है तो आप एक दिन पे चलाओगे, इवन नंबर है तो दूसरे दिन चलाओगे. तो अल्टीमेटली क्या होता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन. रीजन बीइंग बिकॉज अल्टीमेटली एम्प्लॉइज आर कम्यूटिंग फॉर देयर वर्क प्लेस, और आपके पास एक पर्टिकुलर दिन ऑड नंबर या इवन नंबर के हिसाब से आपके पास वो व्हीकल अवेलेबल, अपना पर्सनल व्हीकल अवेलेबल नहीं है, देन यू हैव टू डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की working performance impact होती है. But these are external things which you cannot control. And accordingly, like pricing also. अभी आप जो लोग वर्ल्ड न्यूज को फॉलो करते हो, आपको मालूम है ये इजराइल का कंफ्लिक्ट, इजराइल इज फाइटिंग वॉर विद सेवरल कंट्रीज इन सिंगल दिस थिंग. तो अचानक ही कभी जो क्रूड ऑयल है उसका रेट या तो अचानक ही शूट कर जाता है 4-5% इन ए सिंगल डे. तो दैट एड्स टू द वॉलेटिलिटी. तो जब वो क्रूड प्राइस का रेट बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली जो कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेंट कंपनीज हैं या लुब्रिकेटिंग ऑयल कंपनीज हैं, जो कि क्रूड ऑयल या उसका किसी बाई प्रोडक्ट को यूज करती हैं एज ए रॉ मटेरियल, तो उनका रॉ मटेरियल कॉस्टली हो जाता है.
So ultimately their performance or their company's profitability affects. So these are all external issues which affect an organization, but you cannot control those things unless you are a big shot like some Tata, Birla, Reliance और आज के टाइम में अदानी. Otherwise आप उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. ठीक है. और इंटरनल इश्यूज क्या होते हैं? इंटरनल इश्यूज वो इश्यूज जो स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. So ISO 14001, just like all other management system standards, it says you need to determine the external and internal issues which are relevant to the organization's purpose and which affect its ability to achieve intended outcome of the environmental management system. Okay, so अब example क्या हो सकता है? For example, external issues के लिए E बोला था, टेक्सटाइल में one of the E is environment. तो environment में जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एनजीटी का, डीजी सेट की गाइडलाइंस का, फ्यूल को चेंज करने का या डीजी सेट में बैन का. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन बट इट अफेक्ट्स योर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग परफॉर्मेंस. ठीक है. तो आपको एक्सटर्नल इश्यूज को भी आइडेंटिफाई करना है और आपको इंटरनल इश्यूज को भी आइडेंटिफाई करना है. एंड इंटरनल इश्यूज जनरली आर बेस्ड ऑन योर SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. अब इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है इंटरनल इश्यूज का? फॉर एग्जांपल, यू हैव ए टेक्निकली कॉम्पिटेंट टीम इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर फाइनेंशियली साउंड कंपनी, so you can afford to install solar energy system in your plant. So that is based on your internal strength. But let us say the company is not financially sound or technical know-how nahi hai, so definitely there will be nobody in the organization to motivate or basically plan for solar system installation. So solar system exists in the system means it is a available option for the organization, but क्योंकि organization की strength नहीं है उन चीजों को implement करने की, उन चीजों को follow करने की या उन चीजों को afford करने की, so that becomes a weak point for the organization. And similar organization, some other organization having the financial resources and having the technical know-how can go in for that solar installation, that becomes the strength. तो एक ही एक्टिविटी एक कंपनी का स्ट्रेंथ भी हो सकती है और किसी दूसरी कंपनी का वीकनेस भी हो सकती है. So basically what this standard talks about, you need to identify your internal and external issues and you need to review them and accordingly take a decision. तो इसमें कुछ फर्दर एग्जांपल दे रखे हैं. कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल इश्यूज क्या हो सकते हैं, इंटरनल इश्यूज क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हो सकती हैं. जैसे एक्सटर्नल इश्यूज, अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज, एक्सेस टू financial resources, competition, supply chain, legislation is one of the most important thing which is an external issue which is beyond anybody's control. And internal issues क्या हो सकते हैं? आपकी कंपनी के अपने resources, structure, capabilities, governance, culture, contractual relationship with your suppliers, service providers, कंपनी के अपनी internal policies, objectives. Environmental conditions, as we already discussed, extreme weather conditions we are facing everywhere. अगर आप यूएस का डाटा स्टडी करोगे तो वहां पे अक्सर हरिकेन्स मतलब तूफान आते हैं. So that hurricane frequency has increased all because of global warming. And global warming की वजह से I'm sure you must be reading in the newspapers also, because global warming की वजह से क्या हो रहा है, glaciers melt हो रहे हैं. And glacier melt होने से क्या हो रहा है, ultimately slowly sea level is increasing. So there are studies, I don't know how far these are correct also, मतलब कहने का मतलब है कि कितना correctly वो pinpoint कर सकती है, but there are studies says कि another 60 years even Mumbai will be submerged because of rising sea level. And कुछ और छोटी countries, I'm forgetting the name, I think it is Maldives or so, तो उनके बारे में तो they are saying कि maybe in another 10 years that particular place or maybe partially that country will get submerged within the water because of rising sea water. So these are the things which we need to take control. इसी वजह से काफी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग की इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, not only national, India is also signatory to those kind of activities, but international level पे भी काफी सारे मीटिंग्स होती हैं, काफी सारे डिसीजंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं. क्योटो प्रोटोकॉल वाज वन ऑफ देम. काफी डिसीजन लिए जाते हैं so that companies address the issues related to global warming.
So I was reading somewhere, I'm forgetting the name of that place. Yeah, अभी हाँ कल कहीं मैंने न्यूज़ पढ़ा था, असम में whole of the country is basically having excessive rainfall, and Assam में yesterday or few days back they were having extreme heat wave, मतलब extreme high temperatures are being recorded in Assam. तो क्या है, हर चीज हैंकी पैंकी हो चुकी है, हर चीज का इम्बैलेंस हो चुका है. तो these environmental conditions have become extremely tough, and unless, because ultimately वो एक कहावत है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है. तो every organization has to take its responsibility towards environmental protection. Then only we can address this climate change and other related issues. So these are some of the examples of context of the organization which an organization has to address in its environmental management system. Okay, so as I've already explained, internal and external issues, political, economical, social, technological, legal, and environmental. So environmental is the main theme for this ISO 14001, which we are discussing. But environmental also includes the legal things, because environmental part includes legal requirements which the organizations have to meet. Environmental also needs a technological, because technology is also required to operate the system. अब चाहे वो आप ETP implement कर रहे हो, STP implement कर रहे हो, effluent treatment plant, sewage treatment plant, या आप pollution control equipment लगा रहे हो, filters लगा रहे हो. So all this is possible only through technology. Economy is also involved because cost is involved. Social is involved because people are involved, policies are involved, governance is involved, and political, ultimately everything starts from the politics only. Who are the lawmakers? कौन लोग हैं जो regulations बनाते हैं? These are basically political parties. ये legislation कैसे बनते हैं? So ultimately, complete pestle is responsible, or complete pestle is to be addressed for environmental management system standard. And as I said, internal issues को आप कैसे address करते हो? Through SWOT analysis. Strength, weaknesses, opportunities, and threats. Then there are stakeholders, also interested parties. Again, everybody who is connected to the organization is he or she is an interested party. तो earlier standards, यानी कि जो ISO 9001 का 2000 वर्जन था, या ISO 14001 का 2004 वर्जन था, they were silent on stakeholders. But all these 2015 version standards, 9001, 14001, 45001, 22,000, 50,000, every standard, 27,001, every standard addresses interested parties, the stakeholders. So what the organization has to do is, you have to identify who are the stakeholders for our organization, who are affected by our decision or perceived to be affected by our decision. And we need to address their requirements also. So as I gave an example, various big projects, 500 CR and above, environmental impact assessment is a mandatory requirement. For example, that hydropower project, because even the local villagers who are affected, they are not at all related with that particular organization which is implementing or which is making that hydroelectric power project, but they become stakeholder for that project because they are affected. They need to be relocated. और जैसे आप पढ़ते होंगे ना, कई बार कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं आ जाती है, तो because earlier it was not happening like that, but because of the policies, because of the deforestation, because of the building up of some dam or something, because of some other development going on, so those local villagers are also affected. So knowingly or unknowingly, चाहते ना चाहते हुए भी, they become a stakeholder. So that means organization has to take care of those stakeholders also. Organization has to identify community and society also as a stakeholder. Stakeholder वो नहीं है जिनका business interest है organization के साथ. Stakeholder वो भी हैं जो कि affected हो सकते हैं आपकी organization की ISO 14001 policy से या एक general working policy से. तो जब आप environmental management system design करते हो, तो आप उन stakeholders की requirements को भी, जो directly affected हैं या perceived itself to be affected by the decision or activity, आपको उन interested parties की requirements को भी identify करना पड़ता है. तो उसमें क्या हो सकता है? Normally, again, these are covered by the legislation, regulatory requirements. So there are government policies, there are government regulations, there are some definitions of compensation, because those villagers
related to hydro project need to be relocated. अब आप relocate कर रहे हो, किसी का land acquire कर रहे हो, किसी को shift कर रहे हो, तो there is a monetary cost involved to it. तो उसमें compensation देना पड़ता है. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करती है तो उसको सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उन स्टेक होल्डर्स की नीड एंड एक्सपेक्टेशंस को अपने मैनेजमेंट सिस्टम में एड्रेस करना पड़ता है. सो अल्टीमेटली हु इज एन इंटरेस्टेड पार्टी और स्टेक होल्डर? पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड और perceive itself to be affected by a decision or an activity of the organization. So as I said, you need to identify need and expectations of these interested parties. So you have to determine the relevant interested parties, and so there are different relevant interested parties. For example, employees, investors, regulatory bodies, NGOs, customers, etc. And you need to identify the need and expectations of these interested parties, and also identify, because some of these needs and expectations are also part of your compliance obligations, legal requirements. So because several needs and expectations are, you have to follow, you are bound to follow as per the applicable legislation. So that is part of compliance obligations also. So compliance obligations की definition क्या है? Compliance obligation basically legal requirements है जो किसी भी organization को comply करना है. Legal requirements that an organization must comply with other requirements that an organization must or choose to comply with. So legal requirements के साथ other requirements भी आ जाती हैं. Other requirements क्या है? For example, you are part of supply chain. You are a vendor of Maruti, you are a vendor of Toyota, you are a vendor of Honda. So there are certain green guidelines, there are certain obligations which as a vendor you have to fulfill. For example, there is a requirement of ROHS compliance, restriction on hazardous substances. तो जो आप रॉ मटेरियल, जो भी आप कंपोनेंट और मटेरियल अपने कस्टमर को सप्लाई कर रहे हो, उसमें जो हैजार्डस मटेरियल्स हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में होना चाहिए. तो उनको नॉर्मली क्या करना पड़ता है, जो टेस्ट अप्रूव्ड टेस्ट लैब्स हैं, फॉर एग्जांपल SGS है या इंटरटेक है या दूसरी गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स हैं, उनसे उनको अपने मटेरियल को टेस्ट करा के वो टेस्ट रिपोर्ट देना पड़ता है. मे बी फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द कस्टमर, चाहे वो 6 महीने में एक बार है या साल में एक बार है, जो भी डिफाइंड फ्रीक्वेंसी है, या 2 साल में एक बार है. तो दैट बिकम्स ए पार्ट ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स. तो लीगल रिक्वायरमेंट्स प्लस अदर रिक्वायरमेंट्स इज इक्वल टू compliance obligations. तो ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मली क्या करते हैं, एक लीगल रजिस्टर बनाते हैं और उस लीगल रजिस्टर के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेबल अदर रिक्वायरमेंट्स, उसमें रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट कंपनी का कंप्लायंस लेवल क्या है, उन कंप्लायंस लेवल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. तो एक छोटा सा टेबल है, नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज. इंटरेस्टेड पार्टी क्या है, उसकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या वो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन का पार्ट है या नहीं है. कंप्लायंस ऑब्लिगेशन मींस लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इन्वेस्टर्स है, यू कैन आल्सो बी एन इन्वेस्टर. अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड यू बाय सम शेयर्स ऑफ से हीरो होंडा और मारुति, सो यू बिकम एन इन्वेस्टर. सो और देयर कैन बी बिग इन्वेस्टर्स आल्सो जो कि फंडिंग करते हैं. तो उनकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. यू कैन इन्वेस्ट few hundred rupees also, and you can invest, or the individual or the organization, their investor organization can invest hundreds of crore rupees also in that particular venture. So what their need and expectation is, expect proper management of risk and opportunities. Like all these 2015 version standards, 2015 onwards version standards like 9001, 14001, 45001, 27001, 22,000, 20,000, 50,000, 55,000. All standards want risk assessment to be done with respect to the requirement of that particular standard. So as an investor also you want proper risk management, proper risk and identification of risk and opportunities. So that is that risk and opportunity part of legal requirements? Definitely yes. For example, because every organization has to follow the legal requirements for that particular, which are applicable for that industry. And wherever industry does some non-compliance to a particular or more than one legal requirements, there's always a risk of litigation. There is always a risk of some
penalty from the regulatory body. So investors क्या चाहते हैं? They want proper management of risk and opportunities, and it is a part of legal compliance also, of compliance obligation also. Employees, आप जिस organization में काम करते हैं, what do you expect? You expect to work in a safe and healthy work environment. So is it a part of legal requirement? Yes. For example, वो company जिनमें hazardous processes execute होते हैं, electroplating, anodizing, phosphating, मशीनिंग, ग्राइंडिंग, बफिंग, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि एक हजार्डस प्रोसेसेस के अंदर आते हैं. तो अब हजार्डस प्रोसेसेस भी करना जरूरी है बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. बट जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उस हजार्डस प्रोसेस में दे हैव टू बी एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड. तो प्रोटेक्शन इज आल्सो कवर्ड अंडर ISO 45001, which is a dedicated standard for that, which is occupational health and safety management system. But protection is also part of environment because ultimately that particular industry is polluting the environment also. तो उस pollution को prevent करने के लिए जो भी safeguard चाहिए, for example effluent treatment plant का input and output की proper testing चाहिए, या sewage treatment plant की working monitoring चाहिए, या DG set का जो stack emission है, जो धुआं निकलता है, उसकी periodic testing चाहिए. So all this is part of legal requirements. Yes. So ultimately employees want to work in a safe and healthy environment, and that safe and healthy environment is part of legal compliance. Now the regulators, pollution control boards, और से जो agencies जो कि आपको certificate provide करती हैं. So what they want, what they expect from you, they expect compliance with the laws and regulations. That is also a part of compliance obligation. And customer X, they want at least 80% recycled material in the product. So is it a part of legal requirement? No, it depends. See, अभी ऐसा कोई mandate नहीं है, but कई बार, but it is always better. Recycling is always preferred. I just share an example with you. Recently, I audited, and I've been auditing that company for last several years. So I audited one company in Hyderabad for 3 management system standards, that is ISO 9001, ISO 14001, and ISO 45001. So what that company is doing, I was just sharing one example with you. I recently audited a company, and rather I've been auditing that company for last several years. Every audit, I did the stage 1 audit, stage 2 audit, surveillance 1 audit, surveillance 2 audit. So that company, what they are doing is they are recycling the plastic waste. So what kind of plastic? जो आपकी वाटर बॉटल्स होती हैं जैसे बिस्लरी वगैरह की, जो पेट बॉटल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, प्लस जो दूसरी HDPE की बॉटल्स होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल लाइजॉल या जो दूसरे केमिकल्स वगैरह हैं, वो कंपनी उस प्लास्टिक को रिसाइकल करके अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू ग्रैन्यूल्स. सो दे हैव ए वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. तो अगर हम उस कंपनी की बात करें, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स एंड ये दाना वगैरह बनाती है, प्लास्टिक दाना मटेरियल बनाती है. So what is their raw material, what is their input? जो भी discarded waste होता है, so that waste comes to that company, they collect it, and there are only few plants in the whole country, maybe 3 or 4 are there, and even the technology is quite advanced. I think some European country, I'm forgetting the name of that country from where they have got this technology. So that's a big plant. तो उसको जो raw material waste है, that is PET bottles and this HDPE bottles, उसको प्रॉपर एक कंप्रेस फॉर्म में, मतलब एक ब्रिक फॉर्म में उनके पास आता है, उसको वो वेस्ट को प्रॉपर्ली वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, कुछ एडिटिव, लेकिन यू आर ऑल्सो म्यूट सर, प्रोसेसिंग है, एंड उसको प्रोसेसिंग को करने के बाद देन अल्टीमेटली दे कन्वर्ट इनटू ग्रैन्यूल्स फॉर्म. एंड इवन अगर आप जैसे आप पेप्सी या कोक की बोतल वगैरह, कई बार आप उसको जो लेबल वगैरह उसको आप ढंग से पढ़ें तो उसमें आपको कई बार आपको मिलेगा कि दिस बॉटल हैज बीन मेड फ्रॉम रिसाइकिल्ड प्लास्टिक. सो दैट मीन्स बेसिकली जो उस कंपनी, सो companies like Pepsi and Coke and these companies, because these are big multinational companies and there are legislations which they have to follow, not only from the country which they are operating, and also their parent organization also. So there are several regulations which they have to follow. तो उसमें से एक प्रोटोकॉल उनका ये भी होता है रीयूज ऑफ द रिसाइकल्ड मटेरियल. तो कई बार मैंने देखा उन बॉटल्स में लिखा होता है कि दिस बॉटल हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम recycled material. So that means it's not a
pure virgin material. It is basically a recycled material. So sometimes it can be a part of legal requirement also, country specific, or it can be organization's own responsibility towards environment. Okay. So the answer can be yes as well as no, both for this question, depending upon the customer, depending upon which country it is operating. So recycled material को use करना in the product is also like a, though it is as of now India में ऐसा कोई mandate नहीं है, but definitely in the times to come, definitely it will become. Climate change action, as I already said, कि climate change को up to even 9001 also with effect from March 2024, organizations have to address climate change. So climate change has become a very important requirement. So organization shall determine whether this climate change is a relevant issue. Of course, it is a relevant issue, and relevant interested parties can have requirements related to climate change. Climate change itself, it is a vast subject, but आप अपनी organization में आप उस climate change को कैसे address करते हो, that you need to address in your quality or environmental management system. Climate change का एक अच्छा example मैं आपको देता हूँ. I visit several IT companies also. Now IT companies, of course, IT companies, they are exporters also, basically exporting software, and they are earning. They have got huge earnings in terms of dollar revenue also. They are basically quite competent people. But अगर आप उन IT companies का work environment देखें, मतलब they have got a very good building, but if you enter that building, you start shivering, because जो उनका air conditioning system होता है, basically AC plant, normally they set it at a temperature of 18 to 19 degree, which is not a requirement. Ultimately, I've seen people working there, they are shivering. Some people, even in the hot summer also, they are wearing some jackets, etc., just to protect, because they are feeling cold. So ultimately, what they are doing is they are basically adding on to that climate change. They are spoiling the environment. वो AC का basic function है to provide you comfort, but इसका basic function ये नहीं है कि you keep it to 18 degree temperature. Even 24-25 degrees temperature which is maintained in AC, that gives you a comfortable working system. But I have seen in IT companies, they keep the temperature to 18 and 90 degree, 18-19 degree. They think they can afford electricity, that is fine, but ultimately they are wasting the resources. So somewhere they are not addressing this climate change properly in their quality management system or environmental management system. So we have to be environmentally responsible. अभी आने वाले टाइम में जो although there is some legislation also that Bureau of Energy Efficiency, it is working on that. तो आने वाले टाइम में जो आपको नए एसीज मिलेंगे, उसमें आप टेम्परेचर 24 डिग्री से नीचे कम ही नहीं कर पाएंगे. अभी क्या, इट इज मोर ऑफ ए रिकमेंडेड नेचर, कि जब आप अपने रूम टेम्परेचर एसी वगैरह सेट करो, तो आप टेम्परेचर को 23-24 डिग्री से नीचे मत रखो. बट आई हैव सीन people keeping the temperature as low as 18 degree, 19 degree, and then shivering. I don't know what pleasure they get from that. So ultimately, they are contributing to global warming. Okay, so we have to be environmentally responsible also. Utilize that facility, but to an optimum level. Don't waste any resource for that. So you are wasting electricity also, and you are making yourself uncomfortable also. बहुत ज़्यादा ठंडे environment में आप काम भी नहीं कर सकते ठीक से. Okay, so somewhere companies need to have some policy with respect to climate action changes also. So likewise, for any management system, you need to define the scope of the environmental management system. That scope defines the core activity of that organization, what that organization is doing. So organization shall consider its ability to exercise control and influence. All activities, products, and services within the scope shall be addressed by the environmental management system. The scope shall be maintained as documented information and available to the interested parties. तो आप किस स्कोप के अगेंस्ट स्पेसिफाइड आप सर्टिफाइड हो, वो आपको डिफाइन करना है. एंड फाइनली, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट, मेंटेन एंड कंटिन्यूअली इंप्रूव. So that is just giving an overview. तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्लॉज को रिकैप करें, तो बेसिकली देयर आर 4 सब क्लॉजेस: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. So 4.1 was about determining the internal and external issues relevant for the environmental management system. 4.2 was about identifying the stakeholders and determining their need and expectations.
4.3 was establishing the scope of the environmental management system. Scope is a topic or the this thing for which you are getting an ISO 14001 certificate. And finally, environmental management system has to be established, implemented, maintained, and continually improved. So this is the recap of clause number 4. So I think now one exercise is there, Samarth, to take over. All right, sir. I'll start sharing. Sagar, share your screen, please, and put the link of the workshop in the chat box. So let's start with the discussion. So the first question is, since we have 35 responses submitted now, so what is not a requirement under clause 4.1, understanding the organization and its context of ISO 14001? So there are 4 options, and Sagar, can you show me the right option? So right answer is identification of significant environmental aspects and impact. Sagar, you can please hide this and show us the next question. Yeah. So next question is, we are having 41 responses on this. Which of the following refers to interested parties in the context of ISO 14001? The right answer is any person or organization affected by or affecting the QMS, and we have 88% right response on this. Next one, please. Next question is, which of the following is not a key element of understanding the context of an organization according to 14001? So the right answer is to understand external and internal issues that may affect the EMS, and we are having 24% right answer. Next is legal and other, according to 14001 clause 4.3, when determining the scope of the EMS, which of the following must be considered? So right answer is legal and other compliance obligations, and we are having 60% right answers on this with 45 responses. Next, please. The next is, what is the main purpose of understanding the context of the organization in ISO 14001-2015 to identify external and internal factors that affect the EMS. So, and we have 68% right responses on this, right? So thank you audience for the wonderful participation. And now we would like to move on to our guest speaker, Mr. Sandeep Sharma from Flipkart Group of Companies. So Sandeep ji, I'd request you to please switch on your camera, and Sagar, I'd request you to please play the slides relevant to Mr. Sandeep Sharma. Sandeep ji, over to you. Welcome to this training session, and thank you very much for gracing this chapter with your presence and your time taken out on a Sunday. And we would like you to tell more about your experience with the ISO standards and why they should take it up, right? So Sandeep Sharma ji, over to you, please. Thank you. Yeah, a minute. So I think my camera some issues there. Just a minute. Okay. Okay, yeah. We'll wait. No worries. Yeah. So now, am I audible, Smart? Yes, you are perfectly audible. Okay, great. So hi, good morning, everyone. And first of all, let me say my all appreciation and thanks to Samarth and Atul Suri sir for all the privilege they have given to us. Sandeep ji, your voice is not audible anymore. Can you please check the connection? So, okay, so once again, I'm sharing my gratitude to Samarth and Atul Suri sir for all the privilege to have this session attended and giving me opportunity to be a guest speaker in this session. So, a brief introduction about me. I am graduate engineer in electronics and communication and MBA. And I have been a lead auditor for ISO 9001 and ISO 14001 also. And I am having almost 24 years experience in service operations and quality domain. So right now I'm working with F1 Solutions as a manager quality assurance, and F1 and Jeeves Consumers also. So both are Flipkart group of companies. So F1 is into mobile laptops and other electronic products repairs. We have some service centers, pan-India service centers, our own as well as service franchisee also, where customer walk in with their defective products, just like mainly mobiles, laptops and all that. And mainly we are catering to major brands just like Asus, Realme, Apple, Google, Samsung, and all that. Jeeves is also a Flipkart group of company where we are having installation and repairs of TV, AC, HA, furniture, and other products, which customers buy from the Flipkart portal. So our engineers go at the customer place and install them. So and secondly, we are having a repair activity also of the same products. Yeah, next slide, please, Samarth.
Okay, so benefits of implementing ISO already, I think Atul Suri sir have conveyed many on that. So, so just a brief on that key, many things it helps organization to improve their environmental performance also through more efficient use of resources. That is the main, you can say, implementing of ISO 14001 2015 standard. And legal compliance that is also a second major aspect of that. Reduction of waste, reduce insurance costs, getting a competitive advantage also. That is also a very good, and trust of stakeholders, because once you are ISO 14000 certified, so this creates a trust of the stakeholders as interested parties, you can say, which already Tulsuri sir has I think given the details about that. And increase reputation with the consumers, so that is also who are our consumers and consumers, so this also having a increased reputation of the same. So these are the benefits of implementing ISO 14001 2015 in our organizations. Yeah, Smarth, next slide please. So beneficial from this certification training, which we all are attending. So many benefits are there. I'm just summarizing few only. And the first of all, that key uh, you will gain valuable knowledge and strengthen your credibility and marketability also. So means, because you can add in your resume also ki yes, you are an internal, because whenever you apply anywhere, so they see that ki okay, for which particular standard you are certified internal auditors, already you know that. So that will be a added advantage to you. And internal auditor helps increase being an internal auditor efficiency and potential cost saving. That can be the second matlab, you can say, takeaway from this training program. And improves overall total environment performance and compliance. A certified internal auditor can help for that. So that is also a third, you can say, takeaway from this internal quality program. And this quality program being, then you will understand and environmental management system properly, and you will be expertise to seek that key effectively how organization can have this standard implemented also. So you will once you know in depth, so definitely you will be able to implement it properly in your organization and understand also. Because sometimes what happens ki we are not aware about that, so you cannot deep dive into that. But once you are aware, so definitely you can have a many other, you can explore many other options also. So that will also add to your you can say knowledge about that. So many others are also there, but I have summarized few only. So I think that's all from my side, Samarth. Thank you very much. That's great, sir. It was very, deeply insightful and knowledgeable. And thank you very much for participating with us in this internal auditor training program and taking time, especially out on a Sunday, for our audience, right? So I hope the audience must have gained some valuable insights for them, and it would help them enhance their careers as well as their implementation journey at their companies. And I thank you very much from the bottom of my heart for joining this program. Hello everybody, welcome back to the training session on ISO 14001 internal auditor training. So we'll just resume with our content. Atul Suri sir, I'll request you to please begin. Now we start with clause number 5, which is leadership. So there are basically 3 sub clauses: 5.1 leadership and commitment, 5.2 environmental policy, 5.3 organizational roles, responsibilities and authorities. So first is leadership and commitment. So as in any management system, ISO 14001 also requires leadership and commitment, because ultimately for implementation of any management system, including ISO 14001 2015, management has to provide the resources, management has to demonstrate the leadership, management has to demonstrate the commitment with respect to that particular management system standard, including environmental management system standard. So what ISO standard requires, ISO 14001 standard requires leadership and commitment, that top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the environmental management system standard.
तो लीडरशिप एंड कमिटमेंट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप मैनेजमेंट की? टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम. सो लाइक एनी मैनेजमेंट सिस्टम, overall accountability has to be taken by the top management of the organization. So take accountability for effectiveness of the environmental management system. More importantly, provide resources, make resources available, because see, ISO 14001 standard requires several compliance obligations to be met. So now these compliance obligations demand resources. For example, if you have a DG set with DG set and it is in Delhi NCR and it has to be provided with PNG kit, so then resources are required, investment is required, money is required. ठीक है. इसी तरह से you need to install STP, sewage treatment plant, you need to install effluent treatment plant as per the requirement of the consent or as per legal requirement. So everywhere resources are required. You require manpower, you require equipment. So ultimately costs money, everything costs resources. So resources can be provided only by the top management, because only top management can provide and sanction the funds which are required for installing pollution control equipment. So most important requirement on behalf of top management is make the resources available. And then top management also has to integrate the environmental management system into the business processes. That means the goals of environmental management system has to be integrated with overall business objectives of the organization. So again, that comes under the responsibility of top management, leadership. And top management also has to communicate within the organization the importance of effective environmental management system. Now, top management again doesn't mean the owner of the company. The top management also includes local top management, plant head, unit head, industry head, ठीक है, branch head. So respective top management has to demonstrate the commitment for overall accountability, make the resources available, integrate the environmental management system into the business processes, and communicate within the organization the importance of meeting the requirements of ISO 14001 and implementing the environmental management system effectively. So leadership and commitment demands support others to demonstrate the leadership. Leadership has to promote continual improvement, keep on improving, and direct and support individuals to contribute to the environmental management system. Leadership responsibilities also ensure that environmental policy and environmental objectives are established. Environmental objectives we discussed in the morning session. Wherever you set up objectives for improving the environmental performance, that is an environmental objective. For example, saving electricity, saving energy, saving water, saving paper, increasing green area, reducing rejection, reducing reworking. So all these things are environmental objectives. So these objectives have to be established within the organization. That has to be ensured by the top management. And also top management has to ensure that environmental policy is formulated, established, and it is known to the people working in the organization or for the organization. So all these comes under the responsibility of top management. Top management also has to ensure that environmental policy is established, implemented, and maintained within the organization. Now, if multiple standards are being implemented, like ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, food safety, ISO 27001, information security, ISO 50000, energy management system. So all standards require policy to be established, implemented, and maintained. So likewise, ISO 14001 require environmental policy. That environmental policy can be standalone policy, or that environmental policy can be part of integrated management system policy. So you can have an integrated policy or you can have standalone policy, separate policy. But ultimately, top management has to ensure that the policy is prepared, the policy is implemented, the policy is known to the individuals working on the organization, the policy is available to the interested parties also, and the policy is implemented and followed. तो क्या रिक्वायरमेंट है पॉलिसी के लिए? चाहे वो पॉलिसी
स्टैंड अलोन एनवायरमेंटल पॉलिसी है या वो पॉलिसी पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड पॉलिसी है। द पॉलिसी हैज़ टू मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पॉलिसी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जिस फील्ड में काम करती है, आप चाहे आईटी कंपनी है, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप चाहे कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिस भी फील्ड में है, ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरमेंटल पॉलिसी या इंटीग्रेटेड पॉलिसी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए उस पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स जो आप की एक्टिविटीज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हो उसका रिफ्लेक्शन उस पॉलिसी के अंदर आना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? पॉलिसी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे सेटिंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। तो आपकी पॉलिसी के जो कीवर्ड्स हैं उसमें से आप एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी पॉलिसी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करती है, तो उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव आपने सेटअप किया है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉलिसी। आपकी पॉलिसी बात करती है प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन के लिए, तो उस प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन के लिए आप क्या ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, दैट इज डिराइवेबल फ्रॉम योर एनवायरमेंटल पॉलिसी। ओके, आपकी पॉलिसी बात करती है लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का, तो उस लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, एंश्योर करने के लिए यू कैन सेट अप सम एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। एंड आपकी पॉलिसी बात करती है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का, तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यू कैन सेट अप सम ऑब्जेक्टिव। So the requirement is environmental policy should be appropriate to the purpose and context of the organization. The policy should provide a framework for setting environmental objectives. The policy should mandatorily include the following, that is commitment to protect the environment including prevention of pollution, and it should also include other commitments like use of sustainable resources, climate change mitigation and adaptation, protection of biodiversity, etc. as applicable. But more importantly, policy should have a commitment for meeting the and fulfilling the compliance obligations, legal and other requirements. Policy should have a commitment for continual improvement and protection of environment, prevention of pollution. तो नॉर्मली जब आपका ऑडिट होता है तो उसमें एक्सटर्नल ऑडिटर्स पॉलिसी को वेरीफाई करते हैं, और अगर वो पॉलिसी में कोई भी चीज़ का कमिटमेंट एज डिजायर्ड एज पर दिस रिक्वायरमेंट मिसिंग है, देन ऑडिटर्स आस्क यू, देयर इज ए नॉन कन्फॉर्मिटी एंड दे आस्क यू टू रिवाइज योर एनवायरमेंटल पॉलिसी। तो जब भी आप एनवायरमेंटल पॉलिसी फॉर्मुलेट करें ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, बट पॉलिसी के अंदर एक फ्रेमवर्क, एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंस होना चाहिए। पॉलिसी के अंदर कमिटमेंट होना चाहिए इन तीन चीज़ों का, मैंडेटरी कमिटमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, commitment for fulfilling the legal requirements and other requirements, commitment for continual improvement, and it can include other commitments also as applicable. पॉलिसी की रिक्वायरमेंट ये है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मतलब इट शुड बी अ डॉक्यूमेंटेड थिंग। पॉलिसी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्मली आप जो ISO 14001 कंप्लाइंट कंपनीज होती हैं उनमें आप विजिट करो तो यू विल फाइंड द डिस्प्ले ऑफ पॉलिसी एट वेरियस प्लेसेस इंक्लूडिंग आउटसाइड द प्रेमिसेस, बिकॉज योर पॉलिसी हैज़ टू बी अवेलेबल टू द इंटरेस्टेड पार्टीज ऑल्सो। So one of the ways through which you can make the policy available to interested parties is either one, display outside the premises, secondly you can also put up in your website. तो पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्या है? पॉलिसी में बेसिक इनपुट्स जो होने चाहिए स्टेटमेंट में, वो पिछली स्लाइड में थे, वो मेंशन थे। पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, रिटन डाउन पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी को कम्युनिकेट करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड पॉलिसी आपकी जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको भी अवेलेबल होनी चाहिए। देन अकॉर्डिंगली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करना, असाइन करना, कम्युनिकेट करना, वो भी टॉप मैनेजमेंट की बात कर, वो भी टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं with respect to the environmental management system, because roles and responsibilities can include overall roles and responsibilities also, but उन roles and responsibilities के अंदर या responsibilities and authorities के अंदर environmental management system से relevant roles and responsibilities क्या हैं वो भी documented होने चाहिए, assigned होने चाहिए and communicated within the organization होने चाहिए। For example,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज में जैसे आपने देखा कि ISO 14001 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना, फुलफिल करना, मीट करना। तो जब आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज डिफाइन करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा प्रोसेस ओनर या कौन सा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है for fulfilling the legal requirement, and legal requirements also can be assigned to different individuals and different processes as per the applicability. For example, production से related, quality processes से related environmental roles and responsibilities can be assigned to production in charge or quality in charge, and other roles and responsibilities like e-waste disposal है या hazardous waste के लिए एक किसी एक्सटर्नल बॉडी से अप्रूव्ड बॉडी के साथ एग्रीमेंट करना, एंश्योर करना है हैजार्डस वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ हो। तो इट कैन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट ऑल्सो, स्टोर डिपार्टमेंट ऑल्सो, एडमिन डिपार्टमेंट ऑल्सो एज एप्लीकेबल। तो कहने का मतलब ये है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है, कम्युनिकेट करती है, असाइन करती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड टास्क या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस इंडिविजुअल की, किस डिपार्टमेंट की, किस प्रोसेस ओनर की है, दैट शुड ऑल्सो बी एडिक्वेटली एंश्योर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट को क्या करना है, एंश्योर करना है कि 14001 से रिलेटेड कंप्लायंस को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज डिफाइंड हो, एंड ऑल्सो बिकॉज टॉप मैनेजमेंट की EMS की इफेक्टिवनेस में भी इन्वॉल्वमेंट है, अकाउंटेबिलिटी है। So somebody should be reporting on the, it can be an individual, it can be some department, it can be several departments also, but they need to report to the top management on the performance of the EMS. So top management को ensure करना है, assign responsibility authority for ensuring that environmental management system conforms to the requirement of ISO 14001:2015, and also reporting on the performance of the environmental management system to the top management. तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, जो कंपनी में मैनेजर्स हैं वो क्या इंश्योर करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स, अब लीगल रिक्वायरमेंट्स कई हैं। इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन we will discuss what are those legal requirements, but these legal requirements can be fulfilled by different individuals, different department, different managers. Production related, for example, production related जो भी legal requirements हैं, that can be met by production in charge. जो ETP, effluent treatment plant, sewage treatment plant related requirements हैं, that can be fulfilled by utilities manager or the admin department. Managers overall can be responsible for ensuring that organization meets the legal requirements, legal and other requirements. Other requirements, as I explained, they include customer specific requirements. For example, Maruti, Hero Honda, automotive supply chain में, even in non-automotive also, there is a restriction on use of hazardous substances. So raw material or the components or the parts which you supply to your customer, they should be compliant to ROHS. तो ROHS में you need to get your product tested from external labs, जिसमें कि जो heavy materials हैं, hazardous materials हैं, as per that list, उनका जो overall percentage है, that should be within the described norms. So that responsibility can be assigned to production department. So likewise, management can fix up the responsibilities. Then overall environmental objectives, चाहे वो environment, चाहे वो water source, water saving है, energy saving है, paper saving है, tree plantation है, green cover को बढ़ाने का है, rejection और rework को reduce करने के लिए है. तो that can be assigned to different managers as per the responsibility, as per the objective. So some examples are like managers can be given the responsibility to ensure that organization meets legal requirements and other requirements. Develop objectives in relation to the environmental management system. Sales and marketing can identify customer requirements, because ultimately automotive sector में या in general other sector also, your organization does a MOU or contractual agreement with the customer. तो उस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं EMS नॉर्म्स को लेकर, सो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. इसी तरीके से परचेज डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर सकता है एनवायरमेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट फॉर द सप्लायर्स एंड द क्राइटेरिया फॉर द इवैल्यूएशन. अगेन फॉर एग्जांपल इन
automotive supply chain and other sectors also. Earlier, organizations used to ask for ISO 9001 bare minimum for their suppliers, but now they are also asking for ISO 14001 certified. They are also asking for ISO 45001 certified. Even now, they are asking for ISO 27001 information security management system or ISO 50000 energy management system. तो सप्लायर से कौन इंटरेक्ट करता है? परचेज डिपार्टमेंट या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आल्सो इन समटाइम्स इन सम ऑर्गेनाइजेशंस, बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? परचेज की। तो परचेज क्या कर सकता है? एनवायरमेंटल रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को सप्लायर्स को कम्युनिकेट कर सकता है या क्राइटेरिया फॉर द रिवैल्यूएशन कर सकता है। हर एक स्टैंडर्ड बात करता है सप्लायर्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की, registration as well as performance evaluation. So it is not only the quality parameters, but it is also about the suppliers fulfilling the legal requirements. It is also about supplier fulfilling health and safety related requirements. So all that can be documented in the criteria for suppliers performance evaluation, and overall responsibility can be of purchase department. इसी तरीके से every individual who is working in the organization need to have some basic understanding and compliance to EMS requirements. For example, they need to ensure कि कोई spillage ना हो, कोई wastages ना हो, unnecessary electricity. जैसे आप बहुत offices में जाएंगे तो over the electrical switch plates you find a board, please switch off when leaving the room. Okay, AC बंद करना है, lights बंद करना है. So those kind of things, small things, all personnel have to ensure. Okay, so these are few examples how the environmental management system responsibilities can be added to overall roles and responsibilities of the individuals or the departments within the organization. So let us recap this clause number 5. Basically, three parts are there: leadership and commitment, environmental policy, roles, responsibilities and authorities. तो क्या करना है? Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the environmental management system. There has to be an environmental policy. So establish, implement and maintain an environmental policy. Communicate that policy within the organization and make it available to the interested parties. And roles and responsibilities, very important. Ensure that responsibilities and authorities relevant for environmental management system are assigned and communicated to personnel within the organization. Okay, so now there is one exercise. So I think again, Samad, you have to take over. All right, sir. Thank you very much. And let's start with the discussion. So Sagar, I'd request you to please show the correct answers. Right. So first question is, which of the following is the primary responsibility of leadership according to clause 5 of ISO 14001? So the right answer is ensuring that the environmental policy and objectives are established and aligned with the environmental management system. So 89% right responses we are having. Sagar, move on to the next question, please. Yes. So second question is, under clause 5.2 of ISO 14001, what must the top management ensure regarding the environment policy? So the correct answer is it is communicated within the organization and to interested parties, and we are having a 78% correct response to this. That's overwhelming. Sagar, next please. Which of the following is not a requirement for top management to under clause 5 of 14001 2015? The right answer is preparing detailed environmental reports for the external auditors, and we have 54% correct answers for this. Next question. Next, we are having clause 5.3 of ISO 14001 requires leadership to assign and communicate which of the following within the organization. So the correct answer is roles, responsibilities and authorities for the EMS, and we are having 85% correct response for this. Next please, Sagar. Final question we are having, according to clause 5.2 of ISO 14001, what must the environmental policy include? So the answer is commitment to protect environment, including prevention of pollution and sustenance. So we are having 76% correct response of this, and as of now we are having 67 responses submitted, 70. So thank you very much everyone for the active engagement, and we will proceed with the training content now. I'll request Atul Suri sir to please take over this thing. So now we come to clause number 6, planning. Action to address risk and opportunities. So now this particular clause is very important as far as understanding
and implementing the requirements of ISO 14001 in your organization. So what it talks about there are basically two clauses, 6.1 and 6.2, with further sub clauses. So 6.1 talks about action to address risk and opportunities. So 6.1.1 is general, and 6.1.2 is environmental aspect, 6.1.3 is compliance obligation, 6.1.4 is planning actions to objectives and planning to achieve them, and 6.2.2 is planning actions to achieve the environmental objectives. So 6.1 talks about risk and opportunities. Organization shall determine risk and opportunities that need to be addressed. Now here we are talking about risk and opportunities related to environmental management system. If you can recollect those who attended last session on ISO 9001, so ISO 9001 talked about risk and opportunities related to quality management system standard. But here we are talking about to environmental management system. So what can be the risk and what can be the opportunities? For example, there are legal obligations, there are legal and other requirements which need to be followed by the organization, and there are certain opportunities also. What can be the opportunities? For example, if you set up environmental related to energy, paper saving, and also related to reduction of rejection and reworking. So all these objectives create an opportunity where the organization can save on the resources, time, but opportunity also. But if you are not meeting any legal requirement which is specified by the customer with respect to EMS, then definitely there is a risk करना है, risk and opportunities को identify करना है, address करना है. So this risk assessment process also, which includes risk for all activities, that is including your QMS risk, your EMS risk, your occupational health safety management risk, your IT risk, your energy management system risk, or all other risks, your business risk also as applicable. But idea is that risk and opportunity is a mandatory requirement not only of ISO 9001 but also of ISO 14001 and other management systems. So part of integrate, if you are implementing an integrated management system, so that overall risk assessment which is an integrated risk management which is an integrated risk assessment will take care of your risk assessment for all the process. तो रिस्क एंड जब आप एनवायरमेंटल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, किन चीज़ों को आप ध्यान रखते हो? एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट को. नाउ व्हाट इज दैट, वी विल डू इट इन वी विल अंडरस्टैंड इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. आप उसमें कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को, अदर रिक्वायरमेंट्स को आप एड्रेस कर सकते हो, एंड आप अदर इश्यूज एंड रिक्वायरमेंट्स को भी एड्रेस कर सकते हो जो कि आपने पार्ट ऑफ योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, पार्ट ऑफ योर पेस्टल एनालिसिस आपने आइडेंटिफाई किया था. तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी जब हम EMS के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हमारे लिए 3 कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं: एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, the legal and other requirements which are applicable for the organization, identification and review of needs and expectations of interested parties, and the review of your internal and external issues. So one of the requirement of ISO 14001 which you will find in the subsequent clauses is emergency preparedness also. Emergency preparedness means identifying all the emergency situations which can happen in the organization. These emergency situations can affect your business operations. These emergency situations can affect your occupational health and safety. And these emergency situations can also have an environmental impact. For example, if there is some fire happening within the organization, so this can have an environmental impact. खासतौर पे गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में और इंडस्ट्रीज में कुछ आग की इंसिडेंट होते हैं. केमिकल प्रोसेसेस में, केमिकल इंडस्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से भी इमरजेंसी सिनेरियोज क्रिएट होते हैं. तो ये इमरजेंसी हैपनिंग्स जो है, इमरजेंसी सिचुएशन जो हैं, ये
ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मतलब लोगों के लिए भी जानलेवा होती हैं, और इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब नॉट ओनली people working in that organization get affected, but it affects neighborhood also. अगर आप में से कुछ लोग रिकलेक्ट कर पाएँ तो मे बी आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बट मे बी 11-12 साल पहले जयपुर में जो इंडियन ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आई डोंट रिमेम्बर दोनों में से कौन सा था, शायद इंडियन ऑयल का जो ऑयल स्टोरेज टैंक्स होते हैं, बड़े बड़े ह्यूज टैंक्स जो कि लाखों किलो लीटर ऑयल स्टोर करते हैं, उसमें किसी में आग लगी थी। एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड थिंग कि कोई वेल्डर काम कर रहा था, देयर वर स्पार्क्स एंड proper fire safety arrangement was not there, and that ultimately resulted in huge fire. फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एंड बिकॉज ऑफ दैट फायर नॉट ओनली जयपुर टू दिल्ली डिस्टेंस इज अराउंड 250 किलोमीटर। कैन यू बिलीव कि जो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था, जो एयर पोल्यूशन था, इम्पैक्टेड दिल्ली which is around 8 kilometers from that location. So ultimately जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो तो आपको पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशंस को भी आइडेंटिफाई करना है जो कि एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। These impact not only the environment, they impact all aspects of organization. More importantly, occupational health मतलब health of safety of employees also, those who are working, living in the vicinity. Okay, so talk about environmental aspects. So one of the key activity or the pillar of Sir, you're on mute, please. Can you please unmute? So I think potential emergency scenario that was audible ना, खाली इस particular clause के context में हम बात कर रहे हैं। Yes, sir. Okay, so environmental aspect, one of the key activity of ISO 14001 standard is environmental aspect impact assessment. So what organization has to do? Organization has to determine the environmental aspect of its activities, products and services which it can control, and also those which it can influence and their environmental impact. मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधि से, एक्टिविटीज से, प्रोडक्ट सर्विसेज से क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, और आपको लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव को एड्रेस करना है। लाइफ साइकिल का मैंने एग्जांपल दिया था, एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल क्या उस प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल जो पेट बॉटल्स हैं, ये एचडीपी बॉटल्स हैं, यूज बॉटल, उन साइकिल क्या है कि दैट कैन बी रिसाइकल्ड। एज आई गिव एन एग्जांपल कि आई ऑडिटेड वन कंपनी विच इज बेसिकली डूइंग द रिसाइकलिंग, कि उस वेस्ट को पेट बॉटल्स को, वेस्ट एचडीपी बॉटल्स को वो पूरा एक रिसाइकल करके उसको फ्रेश ग्रैन्यूल्स, रिसाइकल्ड ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो we will discuss more examples on life cycle perspective when the relevant slide comes. तो आपको समझना क्या है एनवायरमेंटल। देखो हमने दो टर्म्स की बात कर रही, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और दूसरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, ये बेसिकली एक रिलेशन है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है, वो एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, प्रोडक्ट और सर्विस जो इंटरेक्ट करता है या जो एनवायरमेंटल जो या तो इंटरेक्ट करता है या इंटरेक्ट कर सकता है एनवायरनमेंट के साथ, और उस इंटरेक्शन से जो बदलाव आता है एनवायरनमेंट में उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। नाउ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव आल्सो एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैन बी नेगेटिव आल्सो, resulting from an organization's environmental aspect. For example, जब आप डीजी सेट चलाते हो तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या है एनवायरनमेंट के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो जिससे कि आपके प्रोडक्ट में या आपके प्रोसेस में पोल्यूशन कंट्रोल होता है या रिड्यूस होता है या कुछ एनर्जी सेविंग होती है, सो दैट एक्टिविटी क्रिएट्स एन पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल आपने अपने प्लांट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में और इवन अपने घर में अगर आपने एक सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि जो, बिकॉज सोलर एनर्जी इज ए ग्रीन एनर्जी,
तो दैट हैज गॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट वो गतिविधि है जो कि इंटरेक्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ या जो इंटरेक्ट कर सकती है एनवायरनमेंट के साथ, पर उसका इम्पैक्ट होता है जो कि एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को चेंज करता है या चेंज कर सकता है। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी हो सकता है और नेगेटिव एस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो बेसिकली ये एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उसी तरह से लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव में हम प्रोडक्ट की डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दैट लाइफ हम रिव्यू करते हैं और हर एक स्टेज के साथ हम उस एक्टिविटी को एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी एक केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट है, तो आप केमिकल प्रोसेसिंग, लेट अस से आप कुछ इंसेक्टिसाइड बनाते हो। अब इंसेक्टिसाइड का एक एंड प्रोडक्ट है, एंड यूज है, जो कि आप फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज होता है और उसकी एक अपनी शेल्फ लाइफ होती है। इसी तरह से आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, यू आर बेसिकली मिक्सिंग वेरियस केमिकल्स और उन केमिकल्स को मिक्स करके आप एक इंसेक्टिसाइड बना रहे हो। तो जो इनकमिंग रॉ मटेरियल है, इनकमिंग मटेरियल्स हैं आपके, उनकी भी कुछ एक लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव है, उनकी भी एक शेल्फ लाइफ है। वो भी आप जब आप क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हो, बेसिकली आप क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट, QMS एंड EMS को मर्ज करके यू आर क्रिएटिंग अ लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव। अब इसमें क्वालिटी एंगल क्या आता है, आपके पास रॉ मटेरियल आते हैं डिफरेंट फॉर्म में, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैसियस, एंड देन यू हैव ए क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। उस क्वालिटी एश्योरेंस प्लान के मुताबिक आप उसको चेक करते हो। अब आपका जो भी QA प्लान है, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है, या तो मटेरियल पास होगा या फेल होगा। पास होगा तो आप उसको अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करोगे, और अगर फेल होगा तो आप उसको अपने सप्लायर को वापस रिटर्न कर दोगे। उसी तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट को अपने मार्केट में सेल किया। मार्केट में सेल करने के बाद अगेन, या तो उसको कस्टमर, यानी कि जो फार्मर है या जो भी जहाँ पे भी उस केमिकल का यूज़ है, दैट विल गेट यूज्ड। और इट में भी पॉसिबल कि कुछ मटेरियल का मार्केट में सेल नहीं हुआ या कस्टमर एंड पे समझो कि उसकी शेल्फ लाइफ यूज हो गई, शेल्फ लाइफ निकल गई, तो अब आपको क्या करोगे? समटाइम्स इट हैपन्स कि दैट प्रोडक्ट कम्स बैक टू द कंपनी, बिकॉज कंपनी इज बेसिकली द प्रोसेस ओनर, कि उसने उस प्रोसेस को, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं, उसके थ्रू उसको क्रिएट किया है। तो उस प्रोडक्ट का एंड ऑफ लाइफ साइकिल डिस्पोजल भी सबसे बढ़िया कंपनी ही हैंडल कर सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट की यूनिक लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव होता है, हर एक सर्विस का एक यूनिक लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव होता है। तो जब आप अपना ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेजेस, like raw material incoming, in process, final inspection, dispatch to customers, rejection complaints, any material which comes under warranty which is returned back to customer, and maybe some cases something related to compliance obligation also, like I said कि जो जितनी भी ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, they are covered by law to ensure that whatever X production they are doing in a year, after end of life cycles, and end of life cycle is also defined कि किसी की 3 साल है, किसी की 4 साल है, एंड इट इंक्लूड्स ऑल IT प्रोडक्ट्स। उसमें आपके मोबाइल फ़ोन्स भी आते हैं, लैपटॉप्स भी आते हैं, आपके प्रिंटर्स भी आते हैं, सब चीज़ें आते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है। तो एटलीस्ट 30% कंपनी हैज़ टू मेक सम पॉलिसीज, कंपनी हैज़ टू इंसेंटिवाइज। कई बार आप कस्टमर को, बिकॉज फॉर एग्जांपल आई एम द ओनर ऑफ दैट कस्ट मोबाइल, अब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस मी कि भाई मैं एंड ऑफ डिस्पोजल में अब उसको कैसे यूज़ करूँगा। तो कंपनीज क्या करती हैं? इंसेंटिवाइज करती हैं कि आप अपना पुराना फ़ोन किसी भी कंडीशन में, वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉन वर्किंग, यू रिटर्न टू अस एंड you buy a new product, we will give you some 10%. Even now this policy is also coming under car scrapping policy. Government of India एक because जितनी जैसे कार पुरानी हो जाती है तो it becomes more polluting and non-compliant with respect to the environmental regulations. And car itself, scrapping of that car has got all different parts. उसमें rubber parts भी हैं, metallic parts भी हैं, plastic parts भी हैं, उन सब का रिसाइकल करना भी एक चैलेंज है। और रिसाइकलिंग के अलावा व्हाट अबाउट एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल? क्यों, आपने नई कार तो खरीद ली, पुरानी का क्या करोगे?
So now government of India is coming out with a car scrapping policy also कि पुरानी कार को रिटर्न करते हो नई कार खरीदते समय, तो based on some calculation, some formula, you will get some incentive or subsidy, or you convert, let us say, a petrol driven EV, electrical vehicle. आने वाला टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है. द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग. तो जो पुराना प्रोडक्ट है, पुरानी कार है, डिस्पोजल क्या है, तो गवर्नमेंट. So these are some examples of life cycle perspective. So depending upon the product, depending upon the services you are in, you need to consider different stages of the product or service aspects associated with each stage. क्योंकि हर एक एक्टिविटी के साथ कुछ ना कुछ environmental aspect associated है. So this has to be taken care when you are finalizing environmental aspects. अभी एक एग्जांपल दे रखा है स्मार्टफोन लाइफ साइकिल. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट जस्ट स्टेजेस क्या होते हैं. डिजाइन है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, मैन्युफैक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल है, यूज है, एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट. तो जब आप प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है, आप एनर्जी को यूज करते हो और प्रोडक्ट जनरेशन ऑफ वेस्ट. बिकॉज नेक्स्टली डिजाइन स्टेज पे आप काफ़ी सारे ट्रायल्स करते हो, तो आप काफ़ी मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो. तो क्या होता है, आप उन एक्सपेरिमेंटेशन की एनर्जी भी यूज़ करते हो और आप वेस्ट भी जनरेट करते हो, बिकॉज कंपोनेंट्स काम नहीं कर रहे. बिकॉज डिज़ाइन इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ इनोवेशन, एंड इनोवेशन मे और मे नॉट यील्ड करेक्ट रिजल्ट. तो देन यू कीप ऑन चेंजिंग. तो क्या होता है, डिज़ाइन स्टेज पे काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है. तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड डिपेंडिंग अपॉन ग्रेविटी, वॉल्यूम, डिफरेंट. जब आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो और वेस्ट जनरेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे भी इफेक्ट है और पोल्यूशन पे भी इफेक्ट है. ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में रहती है टू इन्फ्लुएंस एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद अदर लाइफ साइकिल स्टेजेस. जब आप मटेरियल प्रोक्योरमेंट करते हो, मे बी फॉर द डिज़ाइन पर्पस और मे बी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, तो इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है. अगेन कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस होता है, यूज़ आप करते हो, तो उस मटेरियल को प्रोड्यूस करने में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जनरेट होते हैं, एमिशंस होते हैं. अगर कोई पार्ट इलेक्ट्रोप्लेटेड पार्ट है, तो उस पार्ट को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में केमिकल्स यूज हो. उन केमिकल्स के यूज़ करने से एयर एमिशन भी होता है, उन केमिकल्स को यूज़ करने से लैंड कंटेमिनेशन, वेस्ट जनरेशन होता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अल्टीमेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज. बट कुछ चीज़ें हैं इसमें आप लिमिटेड कंट्रोल है, एंड कई जगह पे फॉर एग्जांपल आप अपने सप्लायर्स के लिए लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव को उसको भी फॉलो करना है, या आपके सप्लायर्स भी ISO 14001 कंप्लाइंट है हो, तो आप कुछ हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. एंड मैन्युफैक्चरर डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैन्युफैक्चरर, stage पे your supplier is a big supplier like Reliance or HPCL or somebody like that, so you cannot control, you basically can use your material only. Then comes the main stage manufacturing, जहाँ पे आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, एनर्जी को यूज़ करते हो, एमिशंस होते हैं, वेस्ट जनरेशन होता है. तो उससे सब टाइप का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है. एयर पोल्यूशन होता है, लैंड कंटेमिनेशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइस जनरेट होता है, एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है. अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल दिया था, एनर्जी को अगर आप वेस्ट करते हो या रिसोर्सेज को वेस्ट करते हो, तो वेस्ट जनरेशन भी होता है. बट मैन्युफैक्चरिंग एक एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कंट्रोल में है, तो इट इज़ लाइक ए पार्ट ऑफ योर इंटरनल इश्यूज, जो आप अपनी कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज दैट मैन्युफैक्चरिंग इज टोटली इन द हैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स, आप पैकेजिंग करते हो, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस अनदर प्लेस, मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस से लोकल वेयर हाउस से शॉप्स, एटसेट्रा. तो इसमें पैकेजिंग वेस्ट भी बहुत जनरेट होता है. अब आप
अमेजोन से कोई सामान मंगाओ तो, लेकिन उसकी पैकिंग का साइज होता है, व्हाट दैट पैकेजिंग डज, दैट पैकेजिंग इज ऑल्सो बिग वेस्ट। कई बार वो पैकेजिंग रिसाइकिल होती है और कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं रिसाइकिल नहीं भी होती है। तो अगेन लैंड कंटेमिनेशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, एंड अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टेड बाय एवरीथिंग। So nowadays, if a company is even going for 9001 without going in for ISO 14001, still it has to address climate change in the quality management system. और अगर आप ISO 14001 जो कि मेन स्टैंडर्ड ही एनवायरनमेंट का है, तो you have to address climate change at all the possible activities of your organization. इसी तरीके से आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हो, आप अपने फ़ोन को रिचार्ज करते हो, बैटरी को रिचार्ज करते हो, रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी एनर्जी का यूज़ होता है, वहाँ पे भी रिसोर्सेज डिप्लीशन होता है, वहाँ पे भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, एंड एंड ऑफ लाइफ साइकिल आपको मैंने एग्जांपल दिया था। अल्टीमेटली इवन जो आप वेस्ट को जब आप रिसाइकिल करते हो, मोबाइल फ़ोन्स को जब आप ई वेस्ट को जब जो ऑथराइज एजेंसीज रिसाइकिल करती हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी एनर्जी यूज होता है। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, एंड देयर आर थिंग्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर आर थिंग्स which are beyond the control of the organization, but organization has to make efforts of whatever best they can do it, fine, but it is mandatory that in your environmental to include all stages of the life cycle, and that is the key activity। जब आपके यहाँ ISO के ऑडिटर्स आते हैं, आपके यहाँ ऑडिट करते हैं, तो लाइफ साइकिल स्टेजेस को आपने कैसे एड्रेस किया है। ये रिक्वायरमेंट ISO 14001 2004 में नहीं थी, बट ISO 14001 2015 में ये रिक्वायरमेंट बहुत एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन की गई है, डिमांड की गई है। एंड हम लोग भी ऑडिट करते हैं ISO 14001 का, तो बहुत सारी कंपनीज में जहाँ पे उन्होंने एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट तो किया है, बट उन्होंने लाइफ साइकिल स्टेजेस के साथ लिंक नहीं किया, तो वहाँ पर हम नॉन कन्फॉर्म देते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव टू address that life cycle stages and demonstrate the controls adequately, fine। So life cycle stage is very important requirement of ISO 14001 environmental aspect impact assessment। तो एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये भी है कि जब आप एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हो, तो आपको 3 कंडीशंस का ध्यान रखना है। एक होता है नॉर्मल कंडीशन, एक है एबनॉर्मल कंडीशन, एंड तीसरा है इमरजेंसी सिनेरियो। अब नॉर्मल कंडीशन क्या है, प्लस जब भी कुछ चेंजेस होता है प्रोसेसेस में, चेंज मैनेजमेंट का पार्ट, मैन मशीन मटेरियल मेथड, किसी में भी कुछ चेंज होता है, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करते हो, कोई नए रिसोर्सेज डेवलप करते हो, तो भी आपको चेंज मैनेजमेंट के टाइम पे भी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को और उसके इम्पैक्ट को कंसिडर करना है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आपने ISO 14001 के लिए अप्लाई किया या सर्टिफिकेशन लिया और आपने एक बार एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट किया एंड दैट डॉक्यूमेंट विल गो ऑन। जैसे आप रिस्क असेसमेंट करते हो, जैसे आप FMEA करते हो, कंट्रोल प्लान बनाते हो, तो टाइम टू टाइम आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हो, उसी तरीके से आपने जो भी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट किया है उसको एटलीस्ट एक बार साल में आपको जरूर रिव्यू करके अपडेट करना है या वैलिडेट करना है। ये भी हो सकता है कोई भी चीज़ ना हो, कोई बात नहीं, बट आप उसको नए रिवीजन के साथ आप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से पब्लिश करो, और जब भी चेंज होता है तो उस समय आपको साल भर बाद का वेट नहीं करना है। जब भी वो चेंज होता है, आपने 1 महीने के बाद कोई प्लान डेवलपमेंट, नई डेवलपमेंट हो गया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कोई नई मशीनरी इंक्लूड ऑन कर दी, तो उसका रिलेटेड जो भी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट है, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उससे रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स है, उसको आपको अपने डॉक्यूमेंट में अपडेट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट वंस इन ईयर आपको अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, एंड इन एडिशन टू दैट जब भी कोई चेंजेस होती हैं उस समय अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, चेंज करना है, उस समय आपको साल का कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है, ठीक है। और ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशंस, बट एबनॉर्मल कंडीशंस में भी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट होता है उन एक्टिविटीज़ को भी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इमरजेंसी सिचुएशंस को भी आपको कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल
आप कोई केमिकल्स यूज़ करते हो या कोई रॉ मटेरियल कुछ भी यूज़ करते हो, तो नॉर्मल कंडीशन में स्पिलेज नहीं होगा अगर आपकी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ठीक है, आपके बिन्स वगैरह ठीक है, बिन मैनेजमेंट ठीक है, आपके बंदे ट्रेंड है। तो नॉर्मल कंडीशन में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इज़ वन थिंग, बट वही चीज़ अगर एबनॉर्मल सिनेरियो क्या है, कहीं कुछ स्पिलेज हो गया, कोई इक्विपमेंट फेल हो गया, कोई मेंटेनेंस ब्रेकडाउन हो गया, कोई इंस्टॉलेशन ब्रेकडाउन हो गया, एंड ऑल्सो इमरजेंसी सिचुएशंस में जैसे आई एक्सप्लेन कि कोई फायर इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पावर आउटेज हो गया, तो आपको सारी कंडीशंस को कंसिडर करना है अपने एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट को। दैट मीन्स अगर कोई सिस्टम में चेंज है तब भी आपको उसको रिव्यू करना है, और अदरवाइज ऑल्सो आपको तीनों सिनेरियोज को कंसिडर करना है, नॉर्मल कंडीशन को, एबनॉर्मल कंडीशन को एंड इमरजेंसी सिचुएशंस को। जब आप एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हो तो आप क्या कंसिडर करते हो? आप कंसिडर करते हो एमिशंस टू एयर क्या है, रिलीजेस टू वाटर क्या है। एमिशन टू एयर, जैसे आपने एक डीजी सेट चलाया या आपके यहाँ कोई बॉयलर यूज हो रहा है, तो अल्टीमेटली एमिशंस किसको जा रही हैं? एयर को। इवन आप अगर एक बड़ा छोटा सा एक बेसिक प्रोसेस करते हो सोल्डरिंग का, तो सोल्डरिंग में भी पॉल्यूशन होता है, तो अल्टीमेट, हालांकि उसका क्वांटम कम है, बट अगेन एमिशंस आर देयर टू एयर। तो एमिशन टू एयर हो रहा है, रिलीज टू वाटर हो रहा है, जैसे आप कोई केमिकल प्रोसेसिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो, तो उसमें रिलीजेस टू वाटर है, बिकॉज आप केमिकल्स, बिकॉज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद यू आर क्रिएटिंग वेस्ट केमिकल, तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली क्या है, आप किसको कंसिडर कर रहे हो? रिलीज टू वाटर। लैंडफिल, रिलीज टू लैंड, वेस्ट मटेरियल अल्टीमेटली कहाँ जाता है? लैंडफिल में, तो रिलीजेस टू लैंड को आपको कंसिडर करना है। किस टाइप का रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, क्या नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, जो एनर्जी एमिट हो रही है आपके प्रोसेसेस में, हीट जनरेट हो रहा है, रेडिएशन है, वाइब्रेशन है, नॉइस है, लाइट है, इसको आपको कंसिडर करना है। जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट, उसको भी आपको कंसिडर करना है, एंड यूज़ ऑफ स्पेस को भी आपको कंसिडर करना है। यूज़ ऑफ स्पेस का मतलब ये है कि जब आप डिज़ाइन करते हो किसी प्रोडक्ट को, अगर आप एक बल्कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, आई एम कंपेयरिंग टू एग्जांपल्स, आपकी दो कंपनीज हैं, लेट अस से मोबाइल फ़ोन दोनों ने डिज़ाइन किया, अब एक का मॉडल तो बहुत बल्कि है और एक का मॉडल कम्पैक्ट है। तो यूज ऑफ स्पेस मतलब जब आप एक छोटा आइटम विद द सेम फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, पार्ट्स का कंजम्पशन कम होगा, बट वही मटेरियल अगर बल्कि है तो दैट विल कंज्यूम मोर स्पेस, दैट विल कंज्यूम मोर रिसोर्सेज ऑल्सो। So that is also one aspect which you need to consider when you are considering your environmental aspect and deriving the environmental impact out. अब जब आपने environmental aspect impact assessment करा, तो आपके सारे के सारे aspect तो significant नहीं होंगे, तो normally हम कोई एक साइंटिफिक फार्मूला या एक मेथडोलॉजी यूज करते हैं जिसके तहत हम अपने environmental aspect impact को एनालाइज करते हैं। बेसिकली एक स्कोरिंग सिस्टम या कोई रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजी करते हैं। तो आइडिया क्या है, अब आपने एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट करा और आपने लेट अस से 100 एनवायरमेंटल एस्पेक्ट रिलेटेड टू योर एक्टिविटीज़, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स आपने एवेल्युएट करे, बट सबके सब तो सिग्निफिकेंट नहीं है ना। फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट सम मशीनरी, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं, तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स में एनर्जी यूजेज, because they have got big horsepower motors and they are using electricity 24 hours, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 24 घंटे चलती हैं, तो एनर्जी यूजेज, इलेक्ट्रिसिटी यूजेज बिकम्स अ मेजर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। ऑफ कोर्स वाटर भी यूज होता है फॉर कूलिंग द मशीन्स, बट वो वाटर क्या है, रिसर्कुलेट हो रहा है। तो अगर आप दोनों को वो कूलिंग टावर के थ्रू रिसर्कुलेट करके मशीन को ठंडा रखने के लिए या मशीन के जो पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए यूज होता है। तो अगर आप दोनों एस्पेक्ट को कंपेयर करो तो एनर्जी यूज, इलेक्ट्रिसिटी यूज इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट और एन एस्पेक्ट विच हैविंग ए सिग्निफिकेंट स्कोर, बट water consumption for molding purpose, because that water is getting recycled, reused, तो वो एक significant aspect नहीं है। So that means we need to have some methodology where we establish a criteria how we will define whether a particular aspect can have a significant environmental impact or not.
तो पहला काम आपको करना है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, और दूसरा काम आपको करना है उन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में से जो सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि जिनका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है, उनको मॉनिटर करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, और उनको कंट्रोल करने के लिए या आप कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम बना सकते हो। ऑफ कोर्स ऑपरेशनल कंट्रोल तो रिक्वायर्ड है ही है, बट आप उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव टारगेट भी बना सकते हो या कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम बना सकते हो। एंड इवन एनी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जो कि एक पार्ट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ही सिस्टम में सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स सिग्निफिकेंट मीन्स मोर फोकस इज रिक्वायर्ड, मोर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। So identification of significant environmental aspect is a very important activity of the organization's environmental management system. So the requirement is organization shall means mandatory. तो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जहाँ पे आपको shall वर्ड यूज होता है, shall का मतलब है कि ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। अगर आपने इस shall को इम्प्लीमेंट नहीं किया, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया, then they depending upon the gravity, depending upon the impact, that will be raised as a non-conformity, and you have to address and close that non-conformity for either obtaining the certificate or maintaining the continuity of the certificate. So the requirement is organization shall determine using established criteria. वो established criteria क्या है? वो आपकी methodology है, वो formula है जिसके तहत आप उसकी significance को identify करोगे। क्या करना है? Those aspects that have or can have a significant environmental impact. तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्राइटेरिया, कोई एस्पेक्ट नॉर्मल कंडीशन में तो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट अंडर एबनॉर्मल कंडीशन और अंडर इमरजेंसी कंडीशन इट बिकम सिग्निफिकेंट। तो एस्पेक्ट सेम है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो कंट्रोल्ड है तो इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, बट एबनॉर्मल यानी कहीं स्पिलेज कुछ हो जाता है देन इट बिकम्स और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फेलियर हो जाता है, देन इट बिकम्स a significant. And of course emergency में तो it can become a very critical, and it becomes critical means you need to have a good controls over that. So significant is a concept relative to an organization and its context. So ultimately significance कहाँ से निकल रहा है? आपके इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज को कंसिडर करके, आपके रिस्क असेसमेंट को कंसिडर करके, आपके ओवरऑल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्टिविटी को करके, और आपके लीगल कंप्लायंसेस, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करके then you can identify. So maybe if you have got a list of around 100 environmental aspect, maybe 10 or 20 are significant, but those 10-20 significant means there should be awareness within the organization कि these are the significant. There should be operational control measures in place. There should be some objectives and targets to reduce the impact of that significant one. Fine. So that means more monitoring is required. So that is why standard has specified this requirement that you need to identify the significant aspects, and then you need to demonstrate your controls over those significant aspects also. So this is one of the formula, but you can use any formula for that. There are different formulas for calculating the significance. तो एक फॉर्मूला इसमें डिमॉन्स्ट्रेटेड है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। जब आप एयर कंडीशनर्स वगैरह यूज़ करते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था दैट आईटी कंपनी दे आर पुटिंग अप देयर एसी टेम्परेचर और कूलिंग कंफर्ट एट 18 डिग्रीज 19 डिग्री टेम्परेचर विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। इवन 24-25 डिग्रीज इज ए कंफर्टेबल वन, बट अल्टीमेटली what is happening is more greenhouse gases are getting into the environment, and which is contributing to the environmental heat, which is contributing to global warming. So your frequency can be very high, severity can be high, and your score becomes 20. Okay, तो हमने एक मेथडोलॉजी लगा दी। अब वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है, क्वांटिटी कम है तो फ्रीक्वेंसी इज मीडियम, बट उसकी सिविरिटी हाई है बिकॉज वेस्ट वाटर कैन बी हैजार्डस ऑल्सो। सो ओवरऑल स्कोर इज 12. पेपर वेस्ट क्वांटिटी हाई है बट उसका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली लो है, सो ओवरऑल स्कोर इज लो। तो एक ग्रेडिंग कर दी, वेरी लो 1 to 5, 6 to 10 लो, मीडियम 11 to 15। तो आपने क्राइटेरिया बना दिया सिग्निफिकेंट को आइडेंटिफाई करने का। बट अगर आप इन तीनों को देखें
अगर as of now there is no legal requirement, but if it is covered under legal requirement depending upon the size of the organization, then by default it becomes irrespective of the score. For example, let us say there is something else, e-waste generation instead of paper waste, let us say it is e-waste, but e-waste overall score is low, let us say, because quantum of e-waste is less. But since it is part of legal requirement that you have to dispose of your e-waste to authorized agency only, so it is a part of legal requirement. So in spite of having a low score, this can be a significant aspect. So when you make your procedure for environmental aspect impact assessment, there you mention that this is our criteria for significance. So one criteria is that environmental multiple score risk assessment score is 12 or above, or say 15 or above, then it becomes, or 16 or above as per this sheet, 16 to 25, then it is a significant aspect. The other criteria is any activity, any aspect, irrespective of the score, if it is okay, if it is yes, if it falls under legal requirement, or if it is even if it falls under concerns of interested parties, if you define in your system, then it becomes a significant. Then in that case score doesn't matter, but applicability of legal requirement and applicable concern of interested parties, then it becomes a significant one. Okay? So what you define in your procedure, that becomes the guidance criteria for determining the significance. So next is compliance obligation. Determine, so again compliance obligation is a very important requirement which need to be understood properly when you are implementing ISO 14001. So compliance obligation is legal plus other requirements. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन compliance obligations को identify करना है, determine करना है, because legal requirements, now these legal requirements are easy accessible also thanks to internet. आप अभी आज के टाइम में इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी लीगल रिक्वायरमेंट, चाहे वो पर्सनल टैक्सेशन को लेकर भी क्यों ना हो, तो अगर आपकी इग्नोरेंस है तो नोबडी विल एक्सेप्ट इट बाय लॉ. तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स कंप्लायंस ऑब्लिगेशन में हम लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी, तो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो आपको कस्टमर बताएगा, लेकिन जो एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट है फॉर रनिंग दैट इंडस्ट्री, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिन एंड हैव एक्सेस टू द रेलिवेंट compliance obligations and also determine how these legal requirements applicable for you. For example, जब आप environmental consent लेते हैं under air and water, तो pollution control board depending upon the industry उसका classification करता है high risk में या medium risk में या low risk में या green category में या orange category में या white category में. तो फॉर एग्जांपल आप एक सिंपल असेंबली करते हो जहाँ पे ना कुछ एयर पोल्यूशन है आपके प्रोसेस में, ना कोई वाटर पोल्यूशन है, तो आपको सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक बार इंटीमेट करके, ऑफ कोर्स विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू इंटीमेट देम कि दिस इज, एंड उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी अपनी गाइडलाइंस है, तो उन्होंने इंडस्ट्री डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये इंडस्ट्रीज वाइट कैटेगरी में आती हैं. वाइट कैटेगरी मीन्स नो पॉल्यूशन और वेरी मिनिमल पॉल्यूशन. ये इंडस्ट्री जो है ऑरेंज कैटेगरी में आती है, दैट मीन्स मीडियम रिस्क. एंड ये इंडस्ट्री जो है हाई रिस्क में आती है, फॉर एग्जाम्पल हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल सम केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट, फॉर एग्जाम्पल सम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट, फॉर एग्जाम्पल सम जिसमें कुछ प्रोसेसेस में एनोडाइजिंग, फॉस्फेटिंग, बफिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिफरेंट पॉल्यूशन क्रिएटिंग प्रोसेसेस जनरेट हो रहे हैं, चाहे वो वाटर को लेकर हो, चाहे वो एयर को लेकर, एयर एमिशंस हो या वाटर डिस्चार्जेस हो. तो देयर आर डिफरेंट नॉर्म्स टू बी फॉलोड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. वाइट कैटेगरी में आपको सिर्फ टाइम कंसेंट लेना है, बेसिकली एग्जाम्पशन है कि यू आर नॉट these requirements of air and water pollution are not applicable for your industry because it's a very simple process. एक assembly है, उसमें एनर्जी का भी यूज ज़्यादा नहीं है, ना एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. बट एज यू गो हायर, दैट मीन्स मीडियम कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी और हाई रिस्क, दैट मीन्स रेड कैटेगरी, देन देयर आर लॉट मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस दैट यू नीड टू फॉलो. तो अल्टीमेटली ये सारी रिक्वायरमेंट्स के हैं जो लीगल लॉज हैं, उन लॉज में मैंशनड हैं. तो अब लॉ तो सेम ही है, एयर एक्ट या वाटर एक्ट, तो आपने एक्सेस तो कर लिया उस लॉ को, एयर एक्ट को, वाटर एक्ट को या ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स को,
बट वो लॉ की क्या पर्टिकुलर क्लॉज, क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आपके ऊपर अप्लाई करती है, उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है, डिटरमिन करना है। जो एक लीगल रजिस्टर की मैं बात कर रहा था कि आपको एक लीगल रजिस्टर बनाना है अपनी कंपनी की एप्लीकेबिलिटी के लिए, और उस लीगल रजिस्टर में आपके लिए क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उन ऑब्लिगेशंस को आपको आइडेंटिफाई करना है और उन ऑब्लिगेशंस को टेक इनटू अकाउंट, यानी उन ऑब्लिगेशंस को आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो जब आप लीगल कंप्लायंसेस को कंसिडर करते हो तो आप अपनी, जैसे आपने एनवायरमेंटल पॉलिसी में भी एक रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कमिटमेंट होना चाहिए फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए। जब आप अपने एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करते हो उस समय भी आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स को, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को कंसिडर करते हो, और एक उस नॉन कंप्लायंस का इम्प्लीकेशन क्या है ये अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि if a polluting industry is not following the norms of pollution control board, then pollution control board has got the authority also to seal that industry। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमने उन रेगुलेशंस को जो हमारी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, there are regulations related to occupational health and safety also, but that we will discuss in detail in next month's training on ISO 45001। बट अभी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। अगर आप एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करोगे, इंडस्ट्री कंप्लाई नहीं करेगी, यानी कि नॉन कंप्लायंट है, तो इंडस्ट्री बंद भी हो सकती है। ठीक है, तो कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रोबस्ट होने चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। और कंप्लायंस ऑब्लिगेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। अगर आपकी एनवायरमेंटल टेस्टिंग इस मंथ में और इस डेट को ड्यू है तो आपको ड्यू डेट को करानी है। जैसे आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो उसी तरीके से आपको एनवायरमेंटल स्टेटमेंट भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जमा करनी होती है एनुअल। उसी तरीके से आपको हजार्डस वेस्ट की भी रिटर्न जमा करनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइक जैसे मैंने बताया था ना कि वाइट कैटेगरी भी है, वाइट कैटेगरी में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑरेंज कैटेगरी में है दैट मीन्स मीडियम टाइप ऑफ इंडस्ट्री, और अगर आप रेड कैटेगरी में हैं तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इंडस्ट्री, अब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्वार्टरली रिटर्न भी सबमिट करती हैं, छोटी इंडस्ट्री हैं वो एनुअल भी करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कब क्या क्या रिटर्न, क्या क्या इन्फॉर्मेशन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से को सबमिट करनी है। और आजकल तो ये रिटर्न्स ऑनलाइन भी होती हैं, जैसे आप इनकम टैक्स की रिटर्न ऑनलाइन करते हो उसी तरीके से आप हजार्डस वेस्ट की जो लिमिट, जो स्टेटमेंट है या एनवायरमेंटल स्टेटमेंट है वो भी आप डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कितने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो दोज रिटर्न्स कैन ऑल्सो बी सबमिटेड ऑनलाइन। बट आपको ये इंश्योर करना है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली फुलफिल्ड हो। एंड ISO 14001 सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज even a single non-conformity on legal non-compliance, that means your company will not be awarded ISO 14001 certificate, and if any legal non-compliance is observed in the subsequent audits, that is the surveillance audits, so in that case the organization can get major non-conformity also. Major non-conformity means ऑडिट। ठीक है, तो लीगल कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ISO 14001 पर्सपेक्टिव से। लीगल रिक्वायरमेंट अदरवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से। तो आपको इंश्योर करना है, वैलिडेट करना है और उनको रेगुलरली फुलफिल करना है। इनको आप पोस्टपोन नहीं कर। रिक्वायरमेंट्स का फुलफिलमेंट आप इंटरनल ऑडिट में या मैनेजमेंट रिव्यूज में आप उनको रिव्यू करते हो, पीरियडिकली रिव्यू करते हो, टॉप मैनेजमेंट रिव्यू करती है या जो मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो रिव्यू करते हैं। तो देर आर डिफरेंट, कई कंपनीज एक अपना जैसे लीगल रजिस्टर की बात करते हैं तो लीगल रजिस्टर के साथ दे मेक अ लीगल ट्रैकर ऑल्सो। जो कंपनीज आईटी में बेसिकली आईटी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सिस्टम अपने आप ही उनको रिमाइंडर भेजता है, पॉपअप्स आते हैं कि नाउ दिस लेट अस से अक्टूबर के मंथ में ये टेस्टिंग ड्यू हो रही है, सो इट्स ए पॉपअप मैसेज फॉर द कंसर्न पर्सन। सो दे हैव टू इंश्योर कि वो फ्रीक्वेंसी डिलेड ना हो। ठीक है, और कभी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि आप लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो
तो आपको इमीडिएटली उस सिचुएशन को एड्रेस करना है। मतलब इट इज़ लाइक अ इमरजेंसी एड्रेसिंग समथिंग, यू कैनॉट पोस्टपोन इट कि चलो इस महीने नहीं करें नेक्स्ट मंथ रिव्यू कर लेंगे, नो, नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू एड्रेस एनीथिंग related to legal compliance not being met, you have to address it immediately. तो अगर हम these are some examples, ये अपने आप में बहुत डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, तो लिमिटेड टाइम में इन सबको एड्रेस करना ज़रूरी नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि दीज आर द डिफरेंट एक्ट्स। और अगर आप इनकी डिटेल में जाना चाहो तो ये सारे एक्ट्स जो हैं, बिकॉज हर एक कंट्री गवर्नमेंट स्पेशली इंडिया में, तो मतलब यू नीड नॉट पे एनी मनी एनी चार्जेस फॉर डाउनलोडिंग दिस एक्ट। आप सिंपली गूगल में टाइप करो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो पूरा एक्ट आ जाएगा। अब आप उसको डाउनलोड करो, आप उसको पढ़ो, उसको समझो, ठीक है। तो एक्ट्स में भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आते हैं, अपडेशन होते रहते हैं। तो these are, as of now, these are the acts which are applicable for any industry. So Environmental Protection Act है 1986. This is a comprehensive action in India. It has been amended several times over the years to address emerging environmental challenges. उसके बाद वाटर एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974. This act regularly regulates the water pollution and establishes pollution control boards. Then air prevention and control of pollution act 1985 है. This act regulates air pollution and sets standards for ambient air quality. Hazardous waste management handling and transboundary rules 2016. So these acts also and rules also keep on changing and updating. तो ये रूल 2016 का है जो कि गवर्न करता है मैनेजमेंट से। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल है, बायोमेडिकल मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स, कंट्रोल रूल्स, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट भी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनजीटी एक्ट 2010 and batteries management and handling rules 2001. So these are this is a list of environmental acts which is applicable in India. तो बहुत डिटेल में जाने के लिए you can just download these acts and rules from internet and then you can study in detail and then see how these apply to. Then आपको क्या करना है, प्लान बनाना है। प्लान मतलब एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स आपको सेट करने हैं और आपको एक्शन लेने हैं। तो एक्शन क्या लेने, प्लान टू टेक एक्शंस टू एड्रेस, तीन चीज़ों की हम बात करें। आपने सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करे, आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, कंप्लायंस, आपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट किया है। तो बेस्ड ऑन दीज थ्री एक्टिविटीज अब आपको एक्शन लेना है, आपको कंट्रोल करना है, आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ यानी अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करना है एंड रिस्क को मिटिगेट करना है, कंट्रोल करना है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है और आपके जो सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनको आपको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है। तो प्लानिंग एक्शन कहता है कि आप इन सारी एक्शंस को आप इंटीग्रेट करो, इम्प्लीमेंट करो इनटू द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेसेस और बिजनेस प्रोसेसेस एंड टाइम टू टाइम आप इवैल्यूएट करो इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शंस टेकन। फॉर एग्जांपल, हम अपनी कंपनी में एनर्जी सेविंग के लिए कुछ इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, हमने लोगों को एनर्जी सेविंग के बारे में ट्रेनिंग दी, बट क्या वो ट्रेनिंग कामयाब है? जैसे हमने एक प्रोटोकॉल बनाया कि लंच टाइम में, बहुत सी इंडस्ट्रीज में आप जाओ तो लंच टाइम में दे स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, तो क्या वो चीज़ एक्चुअल इम्प्लीमेंट हो रही है? या हमने वाटर सेविंग के लिए प्रोटोकॉल बनाया, या हमने पेपर रिडक्शन, पेपर वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए कुछ SOP बनाया, तो क्या वो चीज़ें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं? तो उनकी इफेक्टिवनेस को भी इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। So that is why this is the requirement. Evaluate the effectiveness of actions taken. तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप environmental objectives बना रहे हो, establish environmental objectives at levels and functions within the organization, considering your environmental aspects, significant environmental aspects, risk and opportunities, and obligations, compliance obligations. These objectives we have already discussed in detail in the previous sessions.
अगेन एज ए एक्सप्लेन कि एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स आपके पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। एंड जो 9001 में हमने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी, स्पेसिफिक, measurable, achievable, realistic, time bound, so those things are applicable for environmental objectives also, क्योंकि आप मॉनिटर मेजर तभी कर पाओगे ना जब आपके ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल हैं, स्मार्ट हैं, स्पेसिफिक, मेजर, एंड आपको इन ऑब्जेक्टिव्स का रिकॉर्ड रखना है, इन ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, मॉनिटर करना है, एंड इन ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को, डाटा को आपको मेंटेन करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है, क्या एक्शन पॉइंट रहेंगे, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करोगे और रिजल्ट्स को कैसे इवेल्युएट करोगे। ठीक है, सो नाउ दिस इज ए रीकैप ऑफ क्लॉज नंबर 6। बेसिकली हमने बात करी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज की, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट की, एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स की, compliance obligations. So risk and opportunities determine risk and opportunities in relation to environmental aspect, compliance obligations, and elements of the context. Environmental aspect impact method determine the aspects of activities, products, and services and their impact considering a life cycle perspective. And then compliance obligations, legal and other requirements, determine and have access to compliance obligations in relation to environmental aspects and take them into account within the environmental management system. So I think now there will be some exercise. Then planning action, plan to take action to address environmental aspect, legal requirements, risk and opportunities, set up the objectives, establish environmental objectives at relevant functions and levels, and plan for their achievement. All right, sir. Thank you very much. So I have also attempted the exam paper. So now we have 39 responses. So we can start with the discussion. Sagar, please display the correct answers. So the first question is, which of the following is a key focus of clause 6 planning in ISO 14001:2015? The right answer is setting environmental objectives and planning actions to achieve them. And we have a 95% correct response rate. That's overwhelming response. Next, please. Question number 2, according to clause 6.1.2 of 14001, what must an organization do while identifying environmental aspects? The correct answer is considering aspects as it can control and those can influence. So 70% correct response rate we are having. That's nice. Next question, Sagar. What is required under clause 6.1.3 regarding compliance obligations? The correct answer being the organization must determine and have access to compliance obligations, and we have a correct response rate of 78%. Next, please, Sagar. The fourth question is under clause 6.2, which of the following should be considered when establishing environmental objectives? The answer being organization's significant environmental aspects and compliance obligation being the right answer, 94% response rate, again overwhelming. Next, please. Environmental objectives set by an organization in clause 6.2 must be specific, measurable, achievable, relevant, and time bound, that are SMART objectives, and we have 92% response rate correct for this. And till date we have 71 responses and counting. So thank you very much for your valuable contributions. Hello everybody and welcome back. So now we start with clause number 7, that is support. So if you see clause 7, there are 5 subclauses: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. 7.1 is resources, 7.2 is competence, 7.3 is awareness, communication again general, 7.5 is documented information, again general, creating and updating, 7.5.2, and 7.3 is control of documented information. So we'll take up these clauses one by one. So first of all, what you need to do is determine resources. Like in leadership and commitment, it was there that management has to provide the resources and provide these resources. So determine the resources which are required for implementation of environmental management system in the organization. That is human resources, infrastructure, equipment, financial resources, information systems, externally provided services, that is outsourced services, etc. This is also required. Competence, again, it is a requirement of all the management system standards. For 9001 may be hai, 14 may be hai, 45 may be hai, 22 may be hai, 20 may be hai, 27001 may be hai, 51 may be hai, 55,001 may be hai. So
all ensure that the relevant personnel are competent. Now, the basis of competence can be education, training, skills, and experience. Then you also need to identify the training needs of those personnel and then take adequate action based on the training need identification and delivery of training so that people acquire the desired competence. तो उसमें आप क्या करते हो? ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, मेंटरिंग, reassignment of currently employed persons, contracting, etc. And then finally, you need to evaluate the effectiveness of the actions taken. That means what competence the individual has acquired after receiving that particular training. So awareness, actually it is clause number 7.3. Awareness. Top management shall ensure that persons who are working under the organization's control are aware of environmental policy, significant environmental aspects of their environment, their contribution to the environmental management system, and implications of non-conforming to the requirements. तो जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, अगेन कंट्रोल, वर्किंग अंडर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल मींस आउटसोर्स पर्संस आल्सो. तो उनको किस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए? सिंस दे आर वर्किंग इन ISO 14001 organization, certified organization, or planning to go for ISO 14001, so they should be aware of environmental policy, environmental significant environmental aspects of their work. तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें significant environmental aspects क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मशीन शॉप में काम कर रहा है और वहाँ पे मोटर चल रही है, मशीन चल रही है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये मेरी मशीन एनर्जी कंज्यूमिंग मशीन है और मैं अगर इसको बिना मतलब के मशीन को ऑन करके रखूंगा तो दैट मीन्स आई एम वेस्टिंग एनर्जी. ठीक है. तो जो भी सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, और सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में हम लीगल एस्पेक्ट्स की भी बात करते हैं, बिकॉज एनीथिंग विच इज कंसर्निंग द इंटरेस्टेड पार्टीज और एनीथिंग विच इज concerning legal or other requirements is also part of significant environmental aspect. So the persons who are working in that department on the process, they should be aware of significant environmental aspects of their work. The persons should also be aware of their contribution to the environmental management systems, and they should also be aware of implications of not conforming to requirements. Non conforming to requirements क्या है? सबसे पहले तो लीगल ही है. अगर आप किसी चीज लीगल को कंप्लाई नहीं करोगे, so as I explained in the morning session, it can be closed because regulatory bodies, they have got full power to basically close and seal. आपने कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ते होंगे कि इवन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वेदांता, उनका तूतीकोरिन में कोई प्लांट था साउथ में, एंड इट वाज नॉट मीटिंग एनवायरमेंटल नॉर्म्स, इट वाज क्रिएटिंग पॉल्यूशन, एंड जो भी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नॉर्म्स हैं, they were not complying with that, so that plant was sealed. एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अप्रूव दैट कि ठीक है, जब तक ये नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं करेंगे दैट प्लांट विल रिमेन सील्ड. एंड सच काइंड ऑफ प्लांट्स तो उनका तो महीने का टर्नओवर हजारों करोड़ रुपया होता है. ठीक है. तो पीपल शुड अंडरस्टैंड कि अगर हम नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है. इवन द प्लांट ऑफ द फैक्ट्री कैन गेट सील्ड. सो इसलिए जो भी लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में 14001 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में, या जो ऑर्गेनाइजेशन 14001 के लिए अप्लाई कर रही है, तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए एनवायरमेंटल पॉलिसी के बारे में, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, स्पेसिफिकली द सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू देयर वर्क, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में उनका योगदान क्या है, क्या रोल है, और अगर वो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं करेंगे, फुलफिल नहीं करोगे, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है. 7.4 इज बेसिकली द कम्युनिकेशन पार्ट. अब अगेन कम्युनिकेशन के भी दो पार्ट है, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. जैसे जब आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, अपनी टीम को एनवायरमेंटल पॉलिसी के बारे में बता रहे हो, या एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल ऑपरेशनल कंट्रोल्स के बारे में बता रहे हो, या लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता रहे हो, तो दैट इज ऑल इंटरनल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू EMS. और जब एक्सटर्नली कम्युनिकेट कर रहे हो, एक्सटर्नली कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसी इंटरेस्टेड पार्टी बता रहे हो, आप अपनी जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, कस्टमर के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है अदर रिक्वायरमेंट फिल करने के लिए, एनवायरमेंटल जो रिटर्न्स है, जो जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आपको स्टिपुलेटेड फ्रीक्वेंसी पे आपको उन रिटर्न्स को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को या तो उनकी वेबसाइट पे अपलोड करना,
ये हार्ड कॉपी मेल करनी है बट या कोरियर करनी है, व्हाटएवर इट इज, सो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपके यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम्स इफेक्टिव होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू EMS, so that awareness at appropriate level should on what, when, with whom and how। तो जब आप कम्युनिकेट करते हो तो कंप्लायंस obligations को भी रिव्यू करते हो, information consistent with the requirements of environmental management system can be communicated within the organization। तो दो तरह की कम्युनिकेशन होगी, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन है बिटवीन वेरियस लेवल्स एंड फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन which includes a method to receive suggestions, comments। बहुत सारी कंपनीज में सजेशन बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे एनीथिंग रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे वो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स हो, हेल्थ एंड सेफ्टी की हो, या जो भी एप्लीकेबल हो उसकी रिक्वायरमेंट्स को लोग कुछ सजेशन दे सकते हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेज हैं, कमेंट्स हैं, वो सब कर सकते हैं। और आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ, रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ होती है। तो नॉर्मली यू आइडेंटिफाई कि हु विल कम्युनिकेट व्हाट एंड विद whom, एंड उस कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड आपको एज एन एविडेंस रखना है, बिकॉज जब इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट होता है तो आप उस एक्टिविटी को, उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हो कि क्या आप सही मीडियम यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का, और क्या उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। ठीक है। Now comes the documentation requirement, because it is an international standard, just like any international standard like 9001, 45001 or other standards also requires documentation। में दो पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है। एक वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ISO 14001 स्टैंडर्ड की, कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं। और दूसरा वो जो है जो कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम या ISO 14001 स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। एंड टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कई हार्ड कॉपी रखती है, बट चूंकि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा पेपर यूज़ करते हो दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द एनवायरमेंटल नॉर्म्स। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे या तो कुछ ERP यूज होता है, इवन इफ ERP नहीं भी यूज होता तो भी उन रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को या डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को वो सॉफ्ट कॉपी में रखते हैं। ओनली थिंग इज you should have adequate backup of that document also। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है ISO 14001 की, जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो क्या चीजें हैं जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन है EMS के हिसाब से, ISO 14001 के हिसाब से? सबसे पहला, स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो क्लॉज हमने 4.3 में पढ़ा था, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आपकी कंपनी में अपने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है, और नॉर्मली वही आपके ISO 14001 के सर्टिफिकेट पे भी रिफ्लेक्ट होता है। तो दैट स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इज पार्ट ऑफ ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड। देन आपकी एनवायरमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, आपके एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट, जो एनवायरमेंटल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, एज आई एक्सप्लेन, द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज कैन बी पार्ट ऑफ overall risk and opportunities also, which includes QMS, EMS, OHSAS, IT, information security, food safety, energy management. So as per applicability for the organization, but that's a mandatory record. So it can be a standalone record also. Aspect impact assessment. So environmental aspect impact assessment जो हमने बात करी थी लंच से पहले, हमने जिसको डिस्कस किया था, वो भी एक मैंडेटरी रिकॉर्ड है। और आपका क्राइटेरिया क्या है सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का, वो भी एक मैंडेटरी रिकॉर्ड है। देन कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, जो एक लीगल रजिस्टर है और एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जो आपकी कंप्लायंसेस हैं, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स प्लस कस्टमर ड्रिवन रिक्वायरमेंट्स, plus there can be some other requirements also of the society or the area where you are। for example, आपकी इंडस्ट्री एक प्रोटेक्टेड जोन में है, इस लेटर से फॉर एग्जांपल एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स को भी आपको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कई इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या होता है, एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है,
तो उस कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में बेसिकली डिफरेंट इंडस्ट्रीज का जो भी वेस्ट आता है, वेस्ट वाटर आता है, वो एक कॉमन ईटीपी उसको प्रोसेस करता है। तो उस केस में आपको एक इंडिविजुअल या कंपनी स्पेसिफिक ईटीपी की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू हैव वेज एंड मेजर्स। मतलब आपको बेसिकली आपका जो एनवायरमेंटल वेस्ट है, डिस्चार्ज है, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है, उसको कॉमन ईटीपी तक ले जाने का प्रोविजन करना होता है। इट कैन बी through some transportation mechanism also, or it can be through some pipeline also, depending upon ki what is the requirement. तो कुछ legal requirements and other requirements के में not only customer requirements but other society related or other interested, because that common ETP or that zone that is also a part of your interested parties. तो interested parties की क्या requirement है, that are also part of your compliance obligations. Then competence of personnel भी एक mandatory requirement है. For example, आपके internal auditors जो कि ISO 14001 का audit internal audit करेंगे, तो उनका competence क्या है, या in general जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी आपका competence hierarchy है, उससे related जो भी record है, that is also a mandatory record. एंड जो भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, आप एक्सटर्नल बॉडीज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दैट इज आल्सो ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय ISO 14001 स्टैंडर्ड। इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट प्रोसेसेस आर कैरिड आउट एज पर प्लानिंग। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ISO 14001 स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंटेड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। सो इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स यू विल आल्सो फाइंड ए क्लॉज व्हिच टॉक्स अबाउट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। तो इमरजेंसी सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप मॉक ड्रिल वगैरह करते हैं, आपका इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान है, ऑन साइट ऑफ साइट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान, that is all part of the mandatory documentation which is required by ISO 14001 standard. Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation. तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी एयर कंसेंट या वाटर कंसेंट की या हजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन, ई वेस्ट का, तो इसमें मैंडेटरी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टेस्ट भी हैं। जैसे आपका डीजी सेट है तो उसका स्टैक एमिशन की टेस्टिंग आपको करानी है, या आपका ईटीपी का इनलेट और आउटलेट वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चेक कराने हैं, एसटीपी की टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, या और भी कोई भी एमिशंस आपके प्लांट में हो रहे हैं, तो उनकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग मेजरमेंट थ्रू सम एक्सटर्नल लैब, अप्रूव्ड लैब, और कुछ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उनके यहाँ इन हाउस लेबोरेटरीज वगैरह भी होती हैं उन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो वो मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय ISO 14001 स्टैंडर्ड। इसके अलावा आप इंटरनल ऑडिट करते हो, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करते हो, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है, जो आप एनवायरमेंटल टेस्टिंग करते हैं। अगर आपके सिस्टम में कोई नॉन कन्फॉर्मिटी आइडेंटिफाई होती है, चाहे वो ऑडिट के थ्रू हो, चाहे वो कस्टमर ऑडिट के थ्रू हो, या आपके एक्सटर्नल रेगुलेटरी बॉडी की विजिट या उनकी मेमोज के थ्रू हो, तो जहाँ भी नॉन कन्फॉर्मिटी डिटेक्ट होती है या आपके खुद वॉक थ्रू ऑडिट के थ्रू हो, तो आपको अप्रोच करेक्टिव एक्शन उस नॉन कन्फॉर्मिटी के ऊपर लेने हैं बेस्ड ऑन द रूट कॉज एनालिसिस. So all that correspondence, all that regard is a mandatory documented information required by ISO 14001 standard. तो नॉर्मली जैसे आप 9001 या किसी और मैनेजमेंट सिस्टम में करते हो, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, चाहे वो एपेक्स मैनुअल है या रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं या स्टैंड अलोन प्रोसीजर्स फॉर ISO 14001 स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, या कुछ वर्क सेक्शंस या ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वन एंड द सेम थिंग, जो भी आप बनाते हो, फॉर्मेट्स बनाते हो, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाते हो, तो हर एक डॉक्यूमेंटेशन का एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, फॉर्मेट का नंबर होना चाहिए, उसका इशू डेट, रिवीजन डेट, अगर उसमें आप कोई डॉक्यूमेंट चेंज कर रहे हो, उस डॉक्यूमेंट की रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन है, उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कौन करता है, ये सारे रिकॉर्ड, एंड इट इज़ ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, दैट इज क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग डॉक्यूमेंट्स. तो आपका प्रोसीजर क्या है? नॉर्मली एक प्रोसीजर होता है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का, जो कि
डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स दोनों को कवर करता है। तो दिस इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एंड अपडेट योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में जब आप डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन आपने जो प्रिपेयर कर दिया है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं, उसको आपको मेक श्योर करना है कि जहाँ पे डिजायर्ड जगह है वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आपने कुछ वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाया है या कुछ फॉर्मेट्स बनाया है, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन पे अवेलेबल भी होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए एंड प्रॉपर। आपको क्या इंश्योर करना है, उस डॉक्यूमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन और यूज एट द एक्सेस, उस डॉक्यूमेंट का स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, उस डॉक्यूमेंट का कंट्रोल ऑफ चेंजेस। अगर उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज हो जाता है, आपको उस डॉक्यूमेंट का रिटेंशन पीरियड आइडेंटिफाई करना है एंड पोस्ट द रिटेंशन पीरियड उस डॉक्यूमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, डिस्पोज ऑफ कैसे करते हो, ये उसका भी आपको सिस्टम बनाना है। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स दोनों इंक्लूड करते हैं। तो मारुति, हीरो होंडा या कोई भी बड़ी कंपनियां बेसिकली अपने सप्लायर्स के लिए मैनुअल बनाते हैं। उन सप्लायर मैनुअल के अंदर क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, उसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, उनमें हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम चेंज करती है, रिव्यू करती है, अपडेट करती है। इसके अलावा जो आप ISO स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ISO 14001, 1996, 2004, 2015, 9001 में कुछ चेंज आ गया, उसमें भी अमेंडमेंट आ गया। तो यू हैव टू कि आप इसके अलावा कुछ लेटेस्ट से आप एनवायरमेंटल टेस्टिंग इन हाउस फैसिलिटी है, तो आप कुछ नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड BIS स्टैंडर्ड्स या कोई IEC स्टैंडर्ड या कोई और ISO स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हो, तो यू नीड टू हैव ए मॉनिटरिंग सिस्टम जिससे कि आप उन डॉक्यूमेंट्स की चेंजेस को भी ट्रैक कर सको, उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपडेट कर सको और जो रेलिवेंट पर्सनल है उनको उन चेंजेस के बारे में कम्युनिकेट कर सको। सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट 5.3 which addresses control of documented information। तो अगर हम इस क्लॉज नंबर 7 को रिकैप करें तो इसमें सबसे पहले हमने बात करी थी रिसोर्सेज की। मैनेजमेंट का काम है रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, जो ऑपरेशनल टीम है उसका काम है इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, उनका काम है उन रिसोर्सेज को पहले आइडेंटिफाई करना, क्या रिक्वायरमेंट है एंड अल्टीमेटली इन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना विद इन द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। देन कॉम्पिटेंस ऑल्सो इज ए रिक्वायरमेंट, बिकॉज कॉम्पिटेंस होगा तभी तो आप स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करोगे। कॉम्पिटेंस चाहिए तो एक प्रोसेस होना चाहिए, एस्टैब्लिश ए प्रोसेस टू एंश्योर दैट कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन्स हु कैन इम्पैक्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इज अवेलेबल, यानी कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई करना और उस कॉम्पिटेंस को फुलफिल करना। फिर अवेयरनेस होनी चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज आल्सो। तो अवेयरनेस होनी चाहिए किसकी चीज़ की, एनवायरमेंटल पॉलिसी की अवेयरनेस होनी चाहिए, एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, एंड कमिटी है तो उसका नुकसान क्या है तो उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। देन आपके कम्युनिकेशन सिस्टम रोबस्ट होने, कम्युनिकेशन में हम इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो कि रेलिवेंट है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से, दोनों को कंसिडर करते हैं। यानी कि आप किससे कम्युनिकेट करोगे, क्या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करोगे, कैसे तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी कम्युनिकेशन है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीन्स जब आप रेगुलेटरी बॉडी से कम्युनिकेट कर रहे हो या इंटरेस्टेड पार्टी से कम्युनिकेट कर रहे हो या डिफरेंट स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कर रहे हो फॉर द इंफॉर्मेशन पार्ट विच इज रेलिवेंट टू द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। एंड देन योर डॉक्यूमेंटेशन जो कि ISO 14001 से गवर्निंग है, जिसमें हमने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट करी थी, वो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का कंट्रोल भी जरूरी है। The documented information which is required as per ISO 9001, ISO 14001 standard, as well as the documented information which is required for effective implementation of requirements of ISO 14001 within the organization. So what you need to do is control the document information to ensure that it is available, suitable, and adequately protected.
45 responses. Excellent. So we have 45 responses. Now we can start with the discussion. So first question is, which of the following is the primary focus of clause 7 in ISO 14001? And Sagar, can you please show us the correct answers? So ensuring that resources, competence, awareness, communication and are documented. So we have 98% correct response in this. That is really overwhelming and excellent. Next question, please, Sagar. Right. So next question is, according to clause 7.2, how should an organization determine the competence of employees working within the EMS? So the correct answer is by assessing training needs and ensuring that personnel and competent based on education, training, etc. So 87% right responses we have. Next question, please. Clause 7.3 of ISO 14001 emphasizes on which of the following in relation to the employees. So ensuring that the employees are aware of the environmental policy, their roles and how they can contribute to the EMS. We have 96% correct response rate over here. Next, please. So what is the purpose of clause 7.4 communication in ISO 14001-2015? So to establish internal and external communication processes related to EMS, we have 88% correct response rate, which is again very good. Next, please. Final question stands, which of the following is true about the documented information as per clause 7.5 of ISO 14001-2015? The organization must establish, maintain and control documented information required by EMS. So we have 90% response and this is the correct answer. So thank you very much for doing this workshop, and we are having 73 responses as of now, mostly majority of which are correct. Right. Again, thank you very much, and I'll request Atul sir to please carry forward. So now we come to clause number 8. Number 8 basically talks about operational planning and control and emergency preparedness and response. तो जो हमने significant environmental aspect impact identify किया था, हमने जो legal requirements को identify, basically उन चीजों की compliance के लिए उन चीजों controls, and then we have to be prepared for emergency also. So emergency response में we need to identify what can go wrong in the organization, which can affect environmental management system and occupational health, because the like both 40,001 and 45,001. For example, this particular clause, emergency preparedness and responses, same clause is the requirement of ISO 45001, because any emergency can affect environment as well as occupation. It can also affect the personnel who are working. So it is not only the environment which is affected, or within the vicinity of that emergency area, they are also affected. तो इसलिए ये दोनों स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है 14,001 की भी एंड 45,001 की. So let us take up these clauses one by one. Operational controls क्या है? Operational planning and control processes to fulfill the commitments in the environmental policy, to manage significant environmental aspects, to meet compliance obligations and to achieve the environmental objectives. तो इसमें 4 कीवर्ड्स क्या हैं? एनवायरमेंटल पॉलिसी है. हमने एनवायरमेंटल पॉलिसी में कमिटमेंट किया था कि हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे, कंटेनर इंप्रूवमेंट करेंगे. एनवायरमेंटल पॉलिसी में एड्रेस किए थे. अब उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ऑपरेशनल प्लानिंग करनी पड़ेगी. इसी तरह हमने सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे. उन चीज़ों उन सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी मॉनिटर करना है. फॉर एग्जांपल एनर्जी कंजम्पशन इज ए सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट. तो एनर्जी कंजम्पशन मतलब एनर्जी का कहीं वेस्टेज नहीं हो रहा, या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें एनर्जी को सेव करना है, उसके लिए जो हम टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करने की जरूरत है. लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए एप्लीकेबल है. लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स जो कि पार्ट ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, उनको मीट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इट इज ए रिक्वायरमेंट. तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें ईटीपी का वर्किंग मेथोडोलॉजी, ईटीपी के कंट्रोल्स, ईटीपी के चेक पॉइंट्स, ये सब बनाने पड़ेंगे. तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए भी हमें ऑपरेशनल प्लानिंग की जरूरत है. एंड अल्टीमेटली जो भी हमने एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, हम एनर्जी
कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, हमने वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, हमने पेपर वेस्टेज को रिड्यूस करना है, हमने रिजेक्शन रीवर्किंग को रिड्यूस करना है। ये जो भी हमारे एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें ऑपरेशनल प्लानिंग की एंड कंट्रोल्स की जरूरत पड़ती है। तो 8.1 क्लॉज उन्हीं ऑपरेशनल कंट्रोल की बात करता है। तो नॉर्मली क्या मेथडोलॉजी रहती है? एलिमिनेशन, यानी अगर कहीं सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है तो उसको हम एलिमिनेट कर सकें, या सब्स्टिट्यूशन, एक बेटर टेक्नोलॉजी से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकें, या हम इंजीनियरिंग कंट्रोल अप्लाई कर सकें, या हम उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अप्लाई कर सकें। तो ये डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम एनवायरमेंटल कंट्रोल्स को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन कंट्रोल्स का हमें रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी रिकॉर्ड है। सो व्हाट वी नीड टू डू, maintain documented information to the extent necessary to have confidence that the processes are carried out as per planning. For example, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप ये फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि कुछ पाउडर कोटिंग का प्रोसेस हो रहा है, सो दैट पाउडर कोटिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो क्या है? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, जो नोजल है उसके थ्रू मटेरियल स्प्रे हो रहा है ताकि मटेरियल का वेस्टेज कम से कम हो। जो एम्प्लॉई है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है, तो उसको जो अप्रोप्रिएट मास्क है उसको भी प्रोवाइड किया गया है। एंड अगेन एक कॉर्डन एरिया में ये ऑपरेशन हो रहा है, सो दैट कि जो वेपर्स हैं या जो डस्ट है इसके पाउडर के, लिक्विड पाउडर के, वो एनवायरनमेंट में डिस्पर्स ना हो। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू इज एलिमिनेट द हैजार्ड और द सोर्स ऑफ पोल्यूशन, we can institution some better technology, we can have some engineering controls, or we can have some administrative controls. And उन कंट्रोल्स को हमें तब भी इम्प्लीमेंट करना है जब कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होता है, जब कोई प्रोसेस चेंज होता है, जब कोई इक्विपमेंट चेंज होता है, या कुछ भी प्लान चेंजेस और अनप्लान चेंजेस होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंट्रोल प्लान चेंजेस review the consequences of unintended changes and take action to mitigate adverse effects. लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव के बारे में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था एक एग्जांपल के साथ। तो हमें लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव से एनवायरनमेंट every stage of at every stage of the product and services, starting from design and development, procurement. तो लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव से जो भी हमारे कंट्रोल्स निकल के आए थे वो भी पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग का पार्ट है, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल का पार्ट है। So consider the need to provide information about potential significant environmental impacts associated with the transportation, delivery, use, end of life treatment and final disposal of product and services. तो ये life cycle perspective we have already discussed in detail in the previous session. इसके अलावा आपके प्रोसेसेस आउटसोर्स भी हो सकते हैं, आप जॉब वर्क भी करा सकते हैं। तो उन आउटसोर्स प्रोसेसेस, जॉब वर्क प्रोसेसेस को भी कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो किस तरह के कंट्रोल्स हैं आपके उन आउटसोर्स प्रोसेसेस में, चाहे वो परचेज के थ्रू हो, चाहे वो क्वालिटी इंस्पेक्शन के थ्रू हो, चाहे वो आपके सप्लायर ऑडिट के थ्रू हो, ये सब आपको कंट्रोल्स डिफाइन करने हैं इन योर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। देन एज आई सेड, इमरजेंसी सिनेरियोज, तो बहुत सारे इमरजेंसी सिनेरियोज होते हैं, स्पिलेज होते हैं। इवन आपने न्यूज़ में भी देखते होंगे, सी में भी स्पिलेज होते हैं। कोई बड़ा कार्गो है विच इज कैरिंग सम ऑयल एंड समथिंग हैपन्स एंड सम फायर हैपन्स, सम लीकेज हैपन्स एंड ऑयल goes into the ocean and which affects the marine life also. So there are different emergency scenarios which can happen. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर्डनेस रखनी होती है टू रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी सिचुएशंस, बिकॉज ये इमरजेंसी सिचुएशंस एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करती है एंड ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा डेंजर है। तो करने इमरजेंसी सिचुएशंस, तो आपको जो आप इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाते हो उसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि क्या क्या गलत हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री है, कोई केमिकल का लीकेज हो सकता है, स्पिलेज हो सकता है, फायर हो सकता है, एक्सीडेंटल सिचुएशन हो सकता है, स्लिपेज हो सकता है, स्पिलेज हो सकता है, और इन सब के ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट हो सकता है, ह्यूमन सेफ्टी पे भी इफेक्ट हो सकता है, एंड साथ में एनवायरमेंट आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द ऑर्गेनाइजेशन
what kind of emergencies can happen, what kind of environmental impacts it will generate. Because अगर आपको ध्यान हो environmental aspect जब आप करते हैं assessment, तो उसमें एक requirement ये था कि you have to consider 3 scenarios: normal condition, abnormal condition and emergency scenario. तो emergency scenario में क्या environmental impact हो सकता है, that also you need to address in your emergency preparedness and response plan. And then जहाँ पे practically possible हो आपको mock drill भी करना है, तो आपको emergency scenarios को identify करना है, उनके लिए adequate preparedness करनी है। मतलब लेटर से आपको कुछ PPE चाहिए या कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए या उसको सेफगार्ड एनवायरनमेंट ऑडिट करना है, वो करिए, सो दैट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, एग्जांपल अगर कोई स्पिलेज होता है तो स्पिलेज को कंट्रोल करने यू शुड हैव वेज एंड मैकेनिज्म्स। अगर कोई स्पिलेज होता है, उस स्पिलेज को कंट्रोल करने के लिए कोई फायर सिनेरियो होता है तो यू शुड हैव ट्रेन्ड फायर फाइटर्स। किसी को कोई चोट लग जाती है तो यू शुड हैव, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, so you should have trained firefighter, you should have trained first aiders in the organization। इलेक्ट्रिकल फायर को हैंडल करने के लिए या कुछ और केमिकल फायर को अटेंड करने, you should have different ways and mechanisms to identify। So all this comes under the requirement of clause 8.2, prepare and respond to emergency situations। and जहाँ पर practically possible है आपको mock drill कर wherever practicable, and based on the findings, based on the learnings, you can always review and revise your emergency preparedness plan। but इससे related जो भी activity है, चाहे आपका emergency preparedness plan है या आपका जो mock drill आपने किया है, उसका आपको record maintain करना है। तो basically clause 8 and 8.2, 8.1 was about operational planning and control the processes to address significant environmental aspects, to meet compliance obligations, to treat the risk and opportunities, and to achieve objectives. And 8.2 was about emergency preparedness and response, prepare for and respond to emergency situations, and wherever practically possible, test periodically the emergency plans and preparations. So I think again a small exercise. So we have 43 responses now, and let's start with the discussion. Sagar, please show us the correct answers. So the first question is, which of the following is the main focus of clause 8 in ISO 14001? So the correct answer is planning and controlling the processes need to meet EMS requirements, and we have 98% correct response. That is quite overwhelming. Next question. Question number 2, clause 8.1 of ISO 14001-2015 requires organization to establish operational controls for, correct answer is managing significant environmental aspects, compliance obligations and risk associated with the processes, and we have 98% of correct response out of 59 responses. That's again very overwhelming. This shows your dedication and this shows that you have understood the requirements well. Next question, please. In clause 8.2 of 14001-2015, how should an organization address emergency preparedness and response? So by establishing, implementing and maintaining training procedures to respond to potential. So 92% correct response, and this is the right answer. Next question, please. So question number 4, we are having clause 8.2 requires that organizations periodically test and review their emergency response procedures. Why is that important? So the correct answer is to ensure procedures remain effective in minimizing environmental impacts. That is 98%. We are having the vote here, and this is the right answer. Thank you very much. Next, please. When planning for control of outsourced processes as per clause 8.1, the organization should ensure that outsourced processes are controlled to meet the organization's EMS requirements. And again, we have a 98% of correct response here, and this is the right answer. Thank you very much, Sagar. You can put down your screen. And audience, I really appreciate your responses, and I'm really impressed with the kind of responses that I'm getting, because you guys are, now we are having an average of 90% plus as the correct answer. This shows your dedication, this shows that you are understanding the subject well, and this shows the success of our training program. Thank you so much. Atul sir, please continue with the same. Thank you. It is performance evaluation. Again, there are 3 subclauses: 9.1, 9.2 and 9.3.
So 9.1 is about monitoring, measurement, analysis, and evaluation. Again, 9.1.1 general and 9.1.2 specific requirement of evaluation of compliance. Then there is 9.2 internal audit. So it talks about general requirements as well as internal audit program. And then finally 9.3, which is management review. So again, monitoring, measurement, analysis, performance evaluation, though we have discussed these activities in the previous slide also, but to summarize, हमें क्या करना है? We need to identify what to monitor and measure. For example, periodic environmental testings are required, which are legal requirements also, requirement or some other requirement also. Then we also need to have some how we validate the results, verification of the test reports. Then we also and measure. So prescribed frequency. Now prescribed frequency, if it is a legal requirement, so that prescribed frequency you have to follow. So the frequency can be more, but it cannot be less than the prescribed frequency. For example, आपको हर 6 महीने में अगर स्टैक एमिशन की टेस्टिंग करानी है, विच इज ए लीगल रिक्वायरमेंट, तो आपको मिनिमम 6 महीने में तो करानी ही है. अगर आप चाहो तो 3 महीने में भी करा सकते हो, बट दैट इज नॉट, बट 6 महीने में एक बार कराना लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैंडेटरी है. सो यू हैव टू फॉलो दैट फ्रीक्वेंसी. तो नॉर्मली आप एक जैसे लीगल ट्रैकर बनता है, उसी तरीके से आप 9001 में आप एक कैलिब्रेशन प्लान बनाते हो. इसी तरीके से आप 14001 में एक मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट का भी एक प्लान बनाते हो. सो यू आइडेंटिफाई कि मेरी कौन सी एनवायरमेंटल टेस्टिंग कब कब ड्यू हो रही है. ठीक है. देन व्हेन टू एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, जो आप पीरियोडिकली उन रिजल्ट्स को भी वेरीफाई करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरनल ऑडिट में चेक करते हो, मैनेजमेंट रिव्यू को फीडबैक देते हो. Here to evaluate performance plus appropriate indicators. Now these indicators can be your environmental objectives and the status of achievement. Even these can be some KRAs or or key performance indicators. So in addition to quality, you can have key performance indicators for your environmental management system, your occupational health safety management system, and other management systems which you are implementing in your organization. This is what is the requirement of clause 9.1. अब रिक्वायरमेंट ये भी है कि जब आप कोई इन हाउस मेजरमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल नॉइस मेजरमेंट आप करते हो, तो यू कैन, और लक्स मेजरमेंट करते हो, तो आप इन हाउस टेस्टिंग भी कर सकते हो, इन हाउस मेजरमेंट भी कर सकते हो. बट यू हैव टू एंश्योर कि जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए. ठीक है. एंड देन यू कैन अप्लाई सुटेबल इंडिकेटर्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, आप स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, देयर आर डिफरेंट वेज एंड मीन्स, एंड दीज कैन बी लिंक्ड विद योर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. जैसे आप एनर्जी, वाटर कंजम्पशन, स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, waste generated, recycled, carbon footprint, number of complaints, it can be regulatory complaints कि आपने pollution control board से या जो भी regulatory bodies हैं जिनकी requirements को fulfill कर रहे हो, उनके यहाँ से कितनी complaint है related to environmental performance. So all this is part of your monitoring and measurement. जब monitoring and measurement का आपके पास result आ गया, then you have to analyze the data which is obtained from monitoring and measurement and evaluate the environmental performance and effectiveness of environmental management system. For example, आपके पास ETP है, effluent treatment plant, STP है, sewage treatment plant, तो आप periodically ETP and STP की inlet water and outlet water के test parameters को measure कर रहे हो, monitor कर रहे हो, तो उससे आप अपनी STP या ETP की performance को analyze कर सकते हो. इसी तरह जो भी environmental performance है, आप उसको analyze कर सकते हो and evaluate कर सकते हो. Then analysis and evaluation also includes communicating relevant environmental performance information internally as well as externally, क्योंकि आप internally भी communication कर रहे हो और आप externally भी communicate कर रहे हो. और उस monitoring and measurement का आपको documented evidence रखना है as an evidence of monitoring, measurement, analysis and evaluation. तो यही evaluation of compliance है. Determine the frequency for compliance evaluation, evaluate the compliance and take actions which are required, and maintain the knowledge and understanding of compliance status, and maintain this record as an evidence because it is a mandatory record of ISO 14001. Then internal audit, of course internal audit को हम detailed
after we discuss all the clauses, then we'll have a detailed slides for internal audit, जो कि इंटरनल ऑडिट मेथडोलॉजी और उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. बट एज ऑफ नाउ इंटरनल ऑडिट के बारे में ये कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है आपको पीरियोडिकली इंटरनल ऑडिट करना है प्लान्ड इंटरवल्स पे. अब वो प्लान्ड इंटरवल की फ्रीक्वेंसी यू हैव टू डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसेस, बट इट शुड बी एटलीस्ट वंस इन अ ईयर. आइडियल फ्रीक्वेंसी कैन बी वंस इन 6 months. अगर नया सिस्टम है तो इट कैन बी वंस इन 3 months ऑल्सो, बट देन यू हैव टू टेक ए कॉल कि वो प्लान्ड इंटरवल्स क्या है. बट वो प्लान्ड इंटरवल जो भी आप रखोगे, यू हैव follow that planned interval, you have to follow that frequency. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनल ऑडिट के थ्रू आप इवेल्युएट कर रहे हो कि जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया है वो रिक्वायरमेंट को कंफर्म कर रहा है, एंड सेकेंडली वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड है. एंड इंटरनल ऑडिट के थ्रू आप गैप्स को भी आइडेंटिफाई करते हो, यानी कि नॉन कन्फॉर्मेंसेस को भी आइडेंटिफाई करते हो. उन नॉन कन्फॉर्मेंसेस से क्लोज करने के लिए आप रूट कॉज एनालिसिस, करेक्शन, करेक्टिव एक्शंस एज अप्रोप्रिएट आप लेते हो. तो आप क्या करते हो? इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो जिसमें कि ऑडिट फ्रीक्वेंसी, ऑडिट की मेथडोलॉजी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लानिंग. ऑडिट को हम इंटरनल ऑडिट को हम और डिटेल में सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. बट एज ऑफ नाउ कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि आप फ्रीक्वेंसी, मेथड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करते हो, एंड आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को, चेंज मैनेजमेंट को, प्रीवियस ऑडिट्स के रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हो. तो जब आप इंटरनल ऑडिट करते हो तो एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके जो ऑडिटर्स हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, दैट मींस कि क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर डूइंग इंटरनल ऑडिट एज पर ISO 14001 रिक्वायरमेंट्स, एंड इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए. इम्पार्शियलिटी का मतलब ये है कि यू कैन नॉट ऑडिट योर ओन वर्क, सो दैट इम्पार्शियलिटी हैज टू बी टेकन केयर. ऑडिट का हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, स्कोप डिफाइन करते हैं, क्राइटेरिया, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में. फिर आप एक ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, रिपोर्ट को, रिजल्ट्स को मैनेजमेंट से डिस्कस करते हो, एंड उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करते हो बिकॉज इट इज ए मैंडेटरी रिकॉर्ड ऑफ ISO 14001. इनफैक्ट इंटरनल ऑडिट इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स. तो जब आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, बट जब आप स्टैंड अलोन ऑडिट करते हो या स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करते हो, देन इंटरनल ऑडिट में आप उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को ही वेरीफाई करते हो. देन फाइनली आप एक मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करते हो. मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग इज बेसिकली एड्रेस्ड बाय द top management. Up top management doesn't mean the director or owners of the company. Top management means local top management. It can be branch head, it can be operations head, it can be plant head, or whosoever is overall responsible for ensuring EMS requirements are met within the organization, and whosoever is responsible for providing the desired resources. So requirement of the standard क्या है? Top management shall review the EMS at planned intervals to ensure its continuing suitability, adequacy, and effectiveness. तो just like any other management system management review, जो आपके defined inputs हैं management review के, the changes because हमने context of the organization की बात करी थी जिसमें हमने internal and external issues की बात करी थी, need and expectations of interested parties की बात करी थी, हमने एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करी थी, हमने एनवायरमेंटल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करी थी. तो उसमें अगर कुछ चेंजेस है तो वो आप मैनेजमेंट रिव्यू में डिस्कस कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो. अगर आपकी कोई इंटरेस्टेड पार्टी से कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आपको कुछ मेमो मिला कि आपने साहब ये चीज़ कंप्लाई नहीं किया, और इट कैन बी सम लोकल इशू ऑल्सो कि यू आर पार्ट ऑफ सम इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ का कोई नोटिफिकेशन है which you have to comply, or some guideline है from NGT which you need to ensure, for example in the month of November to February in Delhi. Yeah, so all this is a communication from interested party which you need to discuss in the management review meeting. Then you have set environmental objectives also. तो उन objectives का performance status क्या है, उन objectives का road क्या है, उन objectives की मेथडोलॉजी ऑफ अचीवमेंट क्या है, उन ऑब्जेक्टिव्स का रिलेटेड डाटा क्या है, ये सब आपको मैनेजमेंट रिव्यू में मैनेजमेंट के साथ, टॉप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है. एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस जिसमें सारी आ जाती हैं
इंक्लूडिंग द मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड एनालिसिस पार्ट जो आप एनवायरमेंटल टेस्टिंग कर रहे हो. So all that part of environmental performance related data you need to discuss in the management review meeting. Then you also need to review and discuss the adequacy of resources. For example, आपको कुछ ETP कुछ amendment करना है, कुछ process में improve करना है, कुछ आपको pollution control equipment लगाना है, कोई नया resource लगाना है. Even manpower is also a resource. Training के लिए कुछ budgeting करनी है. So all kind of resources which are required for improving or enhancing the performance of environmental management system that you discuss as an input in the management review meeting. एक्शन फ्रॉम प्रीवियस रिव्यूज, आपने पुरानी मैनेजमेंट रिव्यूज में क्या डिसीजन लिया था, वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हुए नहीं हुए हैं, या उसमें कुछ चेंजेस है या कुछ इंप्रूवमेंट है. सो दैट ऑल यू डिस्कस इन द मैनेजमेंट रिव्यू. एंड एनी अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट रिलेटेड टू environmental management system, or if it is an integrated management system, then overall opportunities for improvement. So all these are part of inputs to the management review. जैसे मैनेजमेंट मीटिंग का इनपुट्स होते हैं वैसे आउटपुट भी होते हैं. तो आउटपुट क्या है, जो भी आप डिसीजन एंड एक्शन लेते हो रिलेटेड टू सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी, इफेक्टिवनेस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, या इम्प्रूवमेंट के लिए, या कुछ चेंजेस के लिए, या कोई अपने इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ EMS को इंटीग्रेट करते हो, बिजनेस प्रोसेसेस में इंप्रूव करते हो, कुछ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हो. तो रिव्यू में इनपुट एज एन इनपुट डिस्कस किया, उसके बेसिस पे जो भी आउटकम है मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, एनवायरनमेंट के टर्म्स में, विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, टारगेट डेट, एक्शन प्लान, ऑल दैट इज आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग. तो बेसिकली 3 सब क्लॉज है, 9.1, 9.2 एंड 9.3. 9.1 बात करता है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, एंड उस कंप्लायंस की इवैल्यूएशन की. तो आपको क्या करना है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, मेजर करना है, एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, लीगल रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट को इवैल्यूएट करना है. फिर आपको पीरियोडिकली इंटरनल ऑडिट करना है. इस इंटरनल ऑडिट के रिलेटेड और स्लाइड्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वंस ऑल द क्लॉजेज आर कंप्लीट. एंड देन फाइनली आपको मैनेजमेंट रिव्यू करना है, टॉप मैनेजमेंट को रिव्यू करना है, EMS परफॉर्मेंस को, विद कंसिडरिंग ऑल द इनपुट्स and suitable outputs which I have derived from the output of the management review meeting. Also, I would, for the people who have submitted their responses, I would request them to put a feedback in the chat box regarding these exercises. How interactive and how interesting do you find them, and whether do you find them appropriate, not too much, not too less, or whatever your feedback is. I would like to have it in the chat box, please. Fine, very fine. So, do you like these exercises in the middle of the training? These are basically common for me. I have already joined your courses. You know that. Yes. I know Yes, very well. I have picked you specially. So great. So I hope you are liking this session and these exercises. Yeah. I was waiting for this training sessions. Wow. That's so wonderful. That's so wonderful. So we'll continue to provide such training sessions to you for different ISO standards. Yeah, I'm always available for that. Thank you very much, Tarun. Have a nice day. Yeah, sir. Very good afternoon. Good afternoon. Please introduce yourself as well. Yeah, myself Deva Tripathi, and I am working in Superbond as a technical service manager. Excellent. So I want to review this regarding this training session, that it is going very good, and the auditors and the participants which you have taken are really very giving very tremendous knowledge. So I just want to give a positive feedback on this. That's why I opened. Thank you so much, Deva. It's a pleasure that you have attended the training, and we are also glad to know that you like this, and we'll be providing such training sessions to you in the future as well. Thank you very much for your response. And also I would like to inform all of you that all the audience which we are having today, all of them are from reputed companies at very reputed positions and doing great work for the industry. So it's a pleasure to interact with all of you in this training session, and create a positive impact on the society and the industry with respect to the knowledge and competence on ISO standards. All right, so we can start discussion on the clauses now, the questions now. So Sagar, can you please display the right answers so that we can discuss the same?
Yeah, so the first question is, what is the main focus of clause 9 in ISO 14001? Correct answer is evaluating the performance of the environmental management system, and we have 100% response, correct response rate at 75 responses. So that is a good one. Next, please. The next question is, which of the following is not a requirement for monitoring and measurement as per ISO 14001? So conducting environmental impact assessments is the right answer at 48%. And I think so this was a confusing question, so some of the you must have read it wrong, that it is not a requirement. So I think so you have ticked what is a requirement, that's why we are having a distributed array of answers over here. So establishing procedures for monitoring and measurement of relevant environmental aspects, that is a requirement, right? Then ensuring monitoring and measurement methods are appropriate and accurate, that is a requirement. Maintaining records of monitoring and measurement results, this is a requirement. So I think so you guys have ticked in the wrong manner, so again that is also very fine. Next, please. So under clause 9.3, management reviews must cover which of the following topics? The status of actions from previous management reviews, changes in internal external issues. This is a 97% correct response rate at 78 responses. Again, very overwhelming. Next one. According to clause 9.2, how frequently should internal audits be conducted? So at planned intervals based on the importance of processes and previous audits, again at 91%, 78 responses, again a very good one. And last but not the least, question number 5, Sagar. So what is the role of top management in management review process according to clause 9.3 of 14001? So to ensure the continuing suitability, adequacy and effectiveness of EMS. So again we are having 98% correct response rate at 84 responses, which is again very nice. So I am really impressed by the kind of response that I am receiving from the audience. So this is a mark of your you can say dedication, your focus that you are putting on the training, as well as it's a mark of success of our training team as well, that they are able to explain everything to you in a good manner so that you are attempting the questions right. So again, thank you very much for attempting this workshop, and I'll hand it over back to Atul Suri sir. Sir, please continue. Thank you very much. So now we come to the last clause, which is clause 10, improvement. So again, basically there are 3 subclauses, 10.1, which is general, then 10.2 is non-conformity and corrective action, and 10.3 continual improvement. In fact, all management systems, चाहे वो 9001 है, 14001 है, 45001 है, 20,000, 22,000, 27,000, 26,000, 50,000. So every standard last clause will be the improvement, which will be talking about the improvement with respect to that particular standard. अगर आप integrated management system बात करते हो तो you are talking about overall improvement. अगर आप standalone standard ISO 14001 की बात कर रहे हो तो आप continual improvement and take action taken for non-conformity and corrective action with respect to environmental management system बात कर रहे हो. तो requirement क्या है? अगेन 10.1 इज जनरल, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट 10.2 बात करता है नॉन कन्फॉर्मिटीज को मैनेज करने की. तो नॉन कन्फॉर्मिटीज कैन बी विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के टर्म्स में बात करें तो नॉन कन्फॉर्मिटी कुड बी विद रिस्पेक्ट टू एनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लॉज नंबर 4 टू क्लॉज नंबर 9. तो एंड डिफरेंट सब क्लॉजेज. तो उसमें लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड नॉन कन्फॉर्मिटी भी हो सकती है, ऑपरेशनल कंट्रोल से रिलेटेड नॉन कन्फॉर्मिटी हो सकती है, ट्रेनिंग अवेयरनेस को लेकर नॉन कन्फॉर्मिटी हो सकती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट को लेकर नॉन कन्फॉर्मिटी हो सकती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात हो सकती है, नॉन कन्फॉर्मिटी हो सकती है. आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज जो नीड एंड एक्सपेक्टेशंस है, स्टेक होल्डर्स की नीड एंड एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको लेकर नॉन कन्फॉर्मिटी हो सकती है. आपकी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स, एक्शन प्लान, रोड मैप, रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसा किसी भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड जिसको आप मीट नहीं कर रहे हो उसको लेकर नॉन कन्फॉर्मिटी हो सकती है. तो कोई भी नॉन कन्फॉर्मिटी है, एंड ऑफ कोर्स अगर वो एक लीगल नॉन कन्फॉर्मिटी है तो वो लीगल नॉन कन्फॉर्मिटी और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, बिकॉज लीगल के साथ देयर इज ऑलवेज अ डेंजर कि अगर वो लीगल नॉन कन्फॉर्मिटी रेगुलेटरी बॉडीज डिटेक्ट करती हैं तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, मेजर रिस्क, कि वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती हैं, आपका कंसेंट की वायलेशन के लिए कोई मेजर पेनल्टी लगा सकती हैं, एनवायरमेंट फाइनेंशियल पेनल्टी लगा सकती हैं. सो लीगल नॉन कन्फॉर्मिटी तो इमीडिएटली एड्रेस होनी चाहिए, बट ऑल नॉन कन्फॉर्मिटीज हैव टू बी एड्रेस्ड. ठीक है, तो करना क्या है, आपको नॉन कन्फॉर्मिटीज को मैनेज करना है.
क्या करना है, रिएक्ट करना है। रिएक्ट करना है मतलब whenever the non-conformity is identified you have to take an appropriate action। अब appropriate action में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं कि why that non-conformity happened। अगेन जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बेसिक टूल्स हैं 5W 1H या YY एनालिसिस या रूट कॉज एनालिसिस, जो भी क्वालिटी टूल QC टूल आप यूज करो, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि you have to identify the root cause why that particular non-conformity happened। तो आपको क्या करना है, review the non-conformity to detect its causes। there can be multiple causes also। वो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट भी के गैप की वजह से भी हो सकती है, रिसोर्सेज के गैप की वजह से हो सकती है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस की वजह से हो सकती है, कुछ और टेक्निकल रीजन, नॉन टेक्निकल रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। बट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द कॉजेज। इट इज नॉट अ सिंगल कॉज, देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेज ऑल्सो। देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट corrective actions। I hope you understand the difference between correction and corrective action. So correction is the immediate action, but corrective action is based on the root cause analysis, why that problem occurred. Again, man, machine, material, method, environment. तो आपको corrective action लेना है। It is not standard talks about corrective action, not correction. Correction तो आप करोगे ही, but आपको corrective action को implement करना है। बेसिकली आपको रूट कॉज पे जाना है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आई, और उस रूट कॉज को आपको एड्रेस करना है। तो जैसे हम एक टेक्निक यूज करते हैं नॉर्मली 5W 1H, वी आस्क द क्वेश्चन व्हाई 5 टाइम्स, फर्स्ट व्हाई, सेकंड व्हाई, थर्ड व्हाई, fourth why and fifth why, and then finally 1H, how it will be overcome। नॉर्मली होता है क्या है, जहाँ पे इन टूल्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती या अवेयरनेस नहीं होती या कंप्लायंस नहीं होता, हम सिर्फ 1W या 2W की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल शॉप फ्लोर में कुछ स्पिलेज हो गया, केमिकल प्रोसेस प्लांट है, कुछ लीकेज हो गया, तो हम सिर्फ 1W की बात करते हैं। तो 1W क्या है, hello, some disturbance, background disturbance is there, can you just mute everyone? Sagar, please mute the person. Yes, I'll check. ओके, सो नॉर्मली होता क्या है, हम सिर्फ 1W की बात करते हैं कि एक केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट है एंड केमिकल्स आर ऑलवेज हैजार्डस एंड डेंजरस एंड देयर इज सम लीकेज और स्पिलेज और पिलफरेज। तो हम सिर्फ 1W की बात करते हैं। 1W में हम कहते हैं कि साहब वर्कर ने लापरवाही करी है, तो उसका हम रूट कॉज क्या बोलते हैं, वर्कर वाज नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, एंड हम उसका करेक्टिव एक्शन में कहते हैं कि साहब हमने उस वर्कर को ट्रेनिंग दे दिया। नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। अगर वो वर्कर ने गलती करी तो सेकंड W क्यों है, उस वर्कर ने गलती क्यों करी, तो उस वर्कर की गलती का रीजन ये है बिकॉज दैट वर्कर वाज नॉट गिवन ट्रेनिंग ऑन SOP। और देयर कैन बी मल्टीपल W's ऑल्सो कि SOP एग्जिस्ट ही नहीं करता, SOP की हमने ट्रेनिंग नहीं दी। अब SOP की दोनों के अलग अलग कॉजेज हैं। फर्दर रूट कॉज, फर्दर हम W की बात करें, अब SOP की ट्रेनिंग नहीं दी तो मे बी अवर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इज यूज्ड, बट इट इज क्वाइट लाइकली कि वो SOP ना बनाओ, तो देन देयर इज सम टेक्निकल गैप। अब SOP की ट्रेनिंग नहीं दी, देन यू आस्क द थर्ड व्हाई कि SOP की ट्रेनिंग क्यों नहीं मिली। मे बी दैट पार्ट दैट वी डोंट हैव ए प्रॉपर सिस्टम और रबर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। Okay, then there can be further W कि why the training need identification system is not there. Then 4W can be maybe our training, we don't have a proper training department, or we are not doing proper training need assessment. Then why we are not doing, next fifth W, why we are not doing training need assessment, because maybe there is no focus on that. Maybe the HR department is not competent itself to identify the training needs, and so it is like a tree with multiple branches। तो नॉर्मली होता क्या है, जब हम बेयर मिनिमम काम करते हैं तो हम सिर्फ एक W पे रुक जाते हैं, हम कहते हैं कि साहब वर्कर ने गलती कर दी, स्पिलेज हो गया, बट हम उसकी रूट कॉज की तह में नहीं जाते। और रूट कॉज की तह में नहीं जाने का रीजन क्या होता है कि वो प्रॉब्लम किसी और फॉर्म में रीसर्फेस होती रहती है। आज एक वर्कर ने गलती करी, आपने उसको ट्रेनिंग दे दी, कल को दूसरा वर्कर गलती कर देगा किसी और प्रोसेस में, परसों कोई और वर्कर कर देगा किसी और प्रोसेस में, बट अल्टीमेटली वो वर्कर या टीम ऑफ वर्कर्स या लेट अस से ऑल वर्कर्स, व्हाई दे आर नॉट
actually delivering, or why they are not given training. So root cause is something else, because ultimate root cause is ki our HR department is not properly equipped to identify the training need assessment, to have a proper training plan and all that. So whenever you're doing root cause analysis, always use this technique 5W1H. Not only to environment, for any aspect, चाहे वो quality का aspect हो, चाहे वो environment का aspect हो, चाहे वो safety का aspect हो, चाहे वो किसी भी standard की requirement का aspect हो, always use this formula 5W1H. So ask the question W 5 times. Why this? One, why this happened? Second, why this happened? Third, why this happened? So what will happen जब आप फिफ्थ why पे पहुंचोगे, तो एक जैसे एक ट्री होता है और उसकी काफी ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस हो जाती हैं, वो ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस बन जाएगी. And then you start eliminating, you start correcting, and you start taking adequate actions. This is how your root cause analysis and corrective action methodology will be very effective. ठीक है? तो what standard says, determine and implement corrective actions, review the effectiveness of corrective actions, and if required, make changes to the environmental management system, or for that matter, any management system which you are implementing. And then whatever records you are maintaining, that is a mandatory record of root cause analysis and corrective action. So clause 10.2 talks about managing non-conformities. And then finally, improvement. तो कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है, क्वालिटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ सेफ्टी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी, एनर्जी, हर सिस्टम एक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात करता है टू एनहेंस द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस. ठीक है? सो these are basically the requirements of improvement, clause number 10.1, 10.2, 10.3. तो आप उस कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट कर सकते हो. एनकरेज एम्प्लॉइज एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स. टॉप मैनेजमेंट भी इसके लिए कुछ इंसेंटिवाइज कर सकती है इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करने के लिए. इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो depend based on your experience, benchmarking, auditing, data analysis, literature, feedback, knowledge sharing, training, etc., etc. So different ways and means can be used for continual improvement. I'm good, thank you. Can you please introduce yourself and then your feedback on the training and these workshops? Yes, sir. Myself, Nauman Sadiq. I am from Miss Chavra Okay. and company, and it's a very good training, sir. And very thing is aware about that for ISO 14,000, and it's a basic knowledge and also known about that. Very good training, sir. Thank you so much for the feedback. Hi Samarth, how are you? I'm good, sir. How are you? I am also good. I'm good. So I am Brijesh also from DIC India. So your program is too good actually, and these exercises in between are keeping awake and motivate towards to learn quickly and enhance focus on the topics whenever it is presented. So thank you so much for organizing it free. That is also a good motivation. It's a pleasure, sir. It's a pleasure to serve the industry, and we'll keep on providing you with such programs in the future as well. Hi, ma'am. How are you? Please introduce yourself. I'm fine. Back on the training. I'm Bhavna from Paharpur. I'm doing this procurement. Hello? Yes, you're perfectly audible, ma'am. Please go on. Okay, actually the voice is getting okay. So I am from procurement department, and it is very nice to have this training. Being Sunday, it is quite tough, but yes, we are enjoying since morning. That's very nice. That's very nice. The things need to be fixed. That is the voice only, I think. Right. I Actually, had there met is sir as well, Mr. Atul, in past. So it's good to see again. Thank you. Thank you so much for your feedback, ma'am. Thank you. So we start with discussion on the responses. So we have 72 responses. Sagar, can you please display the right answers in the bar formats? So the first question is, what is the primary focus of clause 10 in ISO 14001? So continuous improvement of the environmental management system, and we have a 98% correct response rate. That is excellent. Next is, which of the following is a key requirement under clause 10.2, non-conformity and corrective action of ISO 14001? So to identify the root cause of non-conformities and take corrective actions to prevent them, we have a 94% correct response rate on this. That's again very overwhelming. Thank you very much.
Next is in clause 10.2, what must an organization do when a non-conformity occurs? So respond by controlling and correcting the non-conformity and deal with its consequences. So 98% correct response rate out of 80 responses. That's also very excellent. Next, please. Then with clause 10.3, continual improvement, what is the organization required to do? So continuously improve the suitability, adequacy and effectiveness of the EMS. Again, a 97% correct response rate. That's very nice. Next, please. And last but not the least, which of the following is a key objective of continual improvement as per clause 10.3? So the answer is to enhance the overall environment performance of the organization, and we have a 90% correct response rate in this. So the responses are really very well, and thank you very much for attempting these workshops and keeping live with the training. And I again hand over to Mr. Atul Suri for further. Just a recap. So basically the clauses which we discussed were clause number 4 was context of the organization. So where the requirement was determine the relevant internal and external issues as a part of the concept of the organization. Now climate change also has been added. So of course we are talking about environmental management system. So climate change was always addressed, but it has now been added in all other management system standards also by ISO. So then we need to identify the interested parties, their needs and expectations. We need to determine the scope of the environmental management system. That is the key activity which our organization is doing. And then finally, we need to establish, implement, maintain, and continue improve the environmental management system. So environmental management system can be standalone management system, or it can be part of the overall integrated management system. Then clause number 5, we discussed leadership. Again, leadership, because for any management system, leadership role is important. So top management has to demonstrate the leadership and commitment with respect to environmental management system. So what the management needs to do is establish, implement, and maintain an environmental policy, assign the responsibilities and communicate the same, and more importantly, provide the resources which are required for effective implementation of the environmental management system. Then we discussed clause 6. Clause 6 included the main activities of ISO 14001, that is planning. Planning included the risk and opportunities, which includes the potential emergency situations which can happen in the organization. More importantly, conduct this environmental aspect impact assessment exercise, have a criteria for defining the significance of the environmental impacts, and determine which environmental aspects have a significant impact. Then more importantly, also, hello, some disturbance. Resolved. Okay. So more importantly, determine the relevant compliance obligations. These compliance obligations include the legal requirements as well as other requirements which are applicable for the organization. So which can be customer driven requirements or related to EMS, or it can be some society related or some membership related legal requirements also. Then you need to make certain environmental objectives. You need to take actions to address significant environmental aspects, legal requirements, risks and opportunities. And finally, you need to allocate and provide the resources which are required for achieving these objectives. Clause 7 was about support. Support includes, first of all, determining the resources which are required for implementation of EMS. Then need to have a process to ensure the competency. So that means competence requirements, and then also awareness requirements. So awareness, what awareness is required? Environmental policy, environmental objectives. What are the associated significant environmental impacts based on the aspect impact assessment? What are the legal requirements, legal and other requirements which the organization has to comply? And more importantly, the implications of not conforming to the requirements. So that awareness has to be created within the organization for those who are working in the organization, that is within the organization or on behalf of organization. On behalf of organization means those basically who are doing some, because many organizations have now contractual employees also, but they are working as per the guidelines of the organization. So those working
as employees or those working as part of subcontracted team. They should, because they are also part of that particular EMS, environmental management system. So they also need to be given the relevant environmental awareness. Then you need to have a effective internal and external communication, because you are communicating within the organization also with respect to EMS, and you are communicating with the outside world also, stakeholders, including the regulatory requirements. So you need to have a effective internal and external communication system within the organization. And then since it is an international standard, so you need to have lot of documented information also, which includes your manuals, procedures, policy, objectives, legal requirements, environmental aspect, impact assessment, training records, communication records, emergency preparedness plan, operational controls. So lot many documented information is there. So all that documented information needs to be controlled as per the procedure or as per clause 7.5. Then we discussed operation part. Operation basically talks about the operational controls, which consider the life cycle part also of the products and services. And then wherever the processes are outsourced, you are getting it done from external resources, then you need to have adequate controls over that outsourced processes also. So that includes the purchase parts also, where you're buying some services from your vendors, or you're buying some outsourcing a complete product or part of the product to your suppliers. So that also is part of operational planning and control. And then same clause, emergency situation also, you need to have a emergency preparedness plan and take adequate actions, preventive actions based on the emergency preparation plan, and conduct mock drills for the wherever possible for the detected, for the identified emergency scenarios. Then performance evaluation was there in clause number 9, which talked about monitoring, measurement, analysis, and evaluation. Because as part of legal requirements, you need to conduct periodical environmental testing also. Like for example, DG stack emission, boiler stack emission, some electrical testings also. Because electrical, see, safety and environmental things are overlapping. So you have got your fire safety equipment, fire hydrants are there, fire extinguishers are there. So their inspection, periodic preventive maintenance, all that is part of performance evaluation. Then you also conduct environmental testing if there is STP, sewage treatment plant, or ETP, effluent treatment plant. Certain testings like noise testing, workplace air monitoring, etc. Chemicals you have got, so material safety data sheet, their training. So there are lot many requirements which are part of performance evaluation. Then you need to conduct periodic internal audits also as per the frequency which is documented in your environmental management system. And the top management has to review the performance periodically of environmental management system to ensure that the management system is suitable, effective, and adequate, and leads to continual improvement. So finally, there was improvement. We talked about two things. One is the continual improvement, and second is the management of non-conformities. So as I explained, always follow this 5W1H approach for non-conformities: root cause analysis and corrective action. Because if you restrict yourself to 1W and 2W, then corrective action is always superfluous. It will not adequately address the reasons responsible for that non-conformity. So do the root cause analysis in detail. It is like a tree with various branches and sub-branches, and address various sub-branches and the various say branches of the tree appropriately so that adequate actions can be taken. And finally, you need to demonstrate that your EMS performance is improving. So best ways, uh, all the tools which you are using, for example, you're conducting internal audits, you are doing management reviews, you are doing the performance as per the plan, performance evaluation as per the plan. You have got environmental policy, objectives, aspect, impact, communication. So all these ultimately leads to environmental performance. So these were the 7 main clauses: clause number 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So any organization can be certified for EMS. So normally
These audits, basically, whenever an organization applies for EMS, so there is a 3-year cycle. So that is known as the initial certification cycle. So initial certification audit comprises of 2 audits. First audit is known as stage 1 audit, and the second audit is known as stage 2 audit. So stage 1 audit is basically the document review, because as you have seen, ISO 14001 standard has got lot of documentation requirements, and then it is also talking about the legal compliance obligations. So stage 1 audit is more about the document review, getting a feel of the implementation, not in details, but just an overview, and also to ensure that legal requirements are fulfilled. Because if there is any legal non-conformity, then the organization cannot be recommended for award of ISO 14001 certificate. So it is better that if any legal non-conformity is there in the organization, it is better that it gets detected in stage 1 audit itself, so that before stage 2 audit, the organization can take adequate actions for fulfilling that legal requirement. So then stage 2 audit happens, and once stage 2 audit may also have some non-conformances identified depending upon the maturity of the management system. Again, these non-conformities can be minor or major non-conformity. In case a major non-conformity is there, then reassessment or re-audit is required, but only for that part where the major non-conformity was there. In case minor non-conformity is there, so both cases, either minor or major non-conformity, still root cause analysis and corrective action is required. But in case of minor non-conformity, root cause and corrective action can be verified off-site also. But in case of major non-conformity, a follow-up audit is required for that particular area where major non-conformity was there to verify, so that at least that major non-conformity gets modified to a minor non-conformity. Minor non-conformity is there. So based on your root cause and the acceptance of corrective action plan, your organization can be awarded ISO 14001 certificate. But it is always better that along with the corrective action plan, you submit the evidence also of the corrective action taken. So once the certificate is awarded, this certificate is valid for 3 years, but it is subject to annual surveillance audits. So most of the organizations have annual surveillance audits, but sometimes organization size is very big and audit mandates are also too much. So normally they opt for 6 monthly surveillance audits. So what happens? The total number of audit mandates for surveillance audit gets split into 2 6 monthly audits. Okay, but it is not mandatory. It basically depends on the size of the organization. But 95% of the organization would have annual surveillance audits. So annual surveillance audits also same methodology will follow. Any non-conformity can be categorized as major or minor depending upon the gravity, and anything which comes under legal ambit and it is not being met by the organization, then you have to consider it as a major non-conformity. And again, same root cause, correction, corrective action, all actions you have to take for closure of the non-conformity. And further details you can get in the link also, Quality Asia, where you can understand this process in more details. Thank you again for conducting such a wonderful training. It's a pleasure. And Pleasure. the most beautiful part of this training is that the workshop, which keeps us awake because this is something like and also that also force us to learn and to give our input about that. So really I really appreciate. It is our job to mix the standard well and make you drink it. True. So we have to devise certain methodologies to keep you all awake as well as engaged in this program so that it can generate results. So next time when we are auditing your organizations, at that time we can see the, you can say, result of these organizations. We want less NCs while auditing you guys. That is the main Yes. this thing. So that you understand, because see what this session has yielded is, over the period of time we have seen that access to good quality content regarding internal auditor training and the detailed implementation of standards is not available in the industry, right? So this was the only venture to introduce such a thing, so that everyone can get access to this free content. Also, these trainings are being posted on our website as Quality Asia School also. So I'll also show it after the training is over,
so that you guys can even circulate it to your people. Let's say your teammates who cannot attend on a Sunday, as ma'am was also saying that it's difficult to, you know, leave all the work because you guys only get Sundays to, you know, do your personal things and etc. Yes. So Yes. we have also uploaded this thing. We will also upload this thing on YouTube. The last month's quality management session is already live on YouTube as well as our website. So you guys can access that training over there also, access the course material, give the exams. Whomsoever are giving the exams will be, you know, and qualifying will be certified as well. So this is the overall motive. This is how we can improve the knowledge and competence. And when we go, our team goes for audits, you know, to organizations like yours, we want to see the visible results. So now we start about the audits, internal audit definition, principles, and types of audit. So there is a definition of audit. Audit is basically a systematic, independent, and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. So audit is basically a systematic exercise. It is an independent exercise because this exercise is different from whatever work you're doing. And it is a documented process also. Documented process means that for each stage, there is some procedure required. For each stage, you have to maintain the records. So it's a documented activity. For obtaining the evidence. Evidence means whatever you have verified as a conformance or as a non-conformance or area for improvement, you document it. And then you also evaluate it with respect to the criteria to what extent that criteria has been fulfilled. So this is the definition of audit. So audit is a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled. So effective audit की requirement क्या है? Timely access to facilities, documents, personnel, including the top management. Then you need to have a defined audit procedures. You require support or involvement of the top management or the local management. Most importantly, you require competent audit team because your internal audit process will be effective only if the team is competent. And then this audit is also an independent, impartial activity which involves audit team to capture the audit evidences. Impartial activity means one basic requirement of auditing is that you cannot audit your own activities. You cannot audit your own work. And then this activity is conducted irrespective of what other activities are being undertaken by the organization. So normally तीन तरह के audit होते हैं with distinct objectives. First party audit जब हम internal audit करते हैं, an audit by the organization on its own processes, systems and procedures is known as internal audit. तो इसका objective क्या होता है? The maintenance and development of the environmental management system or the integrated management system which the organization is implementing. यही audit जब आप अपने suppliers के end पे या आपका customer आपके यहाँ के audit करता है, that is known as second party audit. Second party audit because there are two parties involved. One is the vendor and another is the customer, or one is the organization, the other is supplier. तो उसे हम second party audit बोलते हैं. एंड थर्ड पार्टी ऑडिट बोलते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ना कि आपका सप्लायर है, ना सब कॉन्ट्रैक्टर है, ना आपका कस्टमर है, वो आपको ऑडिट करता है, तो उसे बोलते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट. लाइक फॉर एग्जांपल योर ऑर्गेनाइजेशन being audited by Quality Asia, so that is a third party audit because Quality Asia is not involved in your routine activities and it has got no commercial arrangement with your products and services. So basically three type of audits. One is the first party audit, जो आप internal audit करते हैं उसे first party audit बोलते हैं. जो आप अपने supplier की premises पे करते हैं उसे हम second party audit बोलते हैं या supplier audit करते हैं. और जो एक independent third body आपका audit करती है like Quality Asia, that is known as a third party audit. तो किसी भी audit में phases होते हैं. Again PDCA cycle, plan, do, check and act cycle which we discussed in the morning, which is applicable for internal audits also. That means we need to have an audit planning, then we prepare for the audit, then we perform and conduct the audit, and then finally we prepare the report, audit report,
and in case any non-conformity or any issues are there which require further follow-up, then we conduct that follow-up also. So the phases of audit are planning, preparation, performance, reporting, and follow-up. So planning stage is like any activity, planning is very important. So planning is about the frequency, किस frequency पे आप internal audit करोगे, and the timings of the audit. Then defining the responsibility, who is responsible for conducting the audit, what is the criteria, against what norms you will conduct the audit, whether it is a quality management system, whether it is an environmental management system, whether it is an occupational health safety management system or some other management system, or it is an integrated management system. So we define the criteria for the audit. Then we define the scope. Scope means the boundary and the periphery. And scope, for example, in ISO certificate, you get scope also, which is a key activity. For example, the company I visited, that was basically producing the recycled grade granules. So the scope is manufacturing of recycled granules. So that becomes the scope. Or if you are an IT company, providing IT services is the scope. If you are some manufacturing company which involves design and development, so design, manufacture and supply of XYZ product. So that becomes the scope. And then your audit methods. Audit method is about the procedure of internal audit which you have defined. So audit procedure will capture the methodology for the auditing. And finally, the duration of audit. Matlab, how much time will it take to conduct the audit? Which process will be audited? From what time to what time? So duration is about detailed audit plan. So जब आप plan करते हो, frequency and timing is based on the status and importance of the activity. For example, जो आपका key operational area, performance area, production area, even with respect to any standard, चाहे वो quality management system हो, चाहे वो environment management system हो, occupational health safety management system हो, there are always key processes in the organization जो कि manufacturing से या quality से या design से related है, and there are support functions, for example purchase, marketing, customer interaction, storage activities. So these are considered as the support functions. So you always spend more auditing time in the main functions and comparatively lesser time in the support functions. EMS maybe because let us say most of the EMS activities are done by the operational team. Operational team means maintenance team, because there is ETP in the organization, there is STP in the organization, or there is some boiler or utilities. So that means in that case, you have to spend more time on the utilities. अगर ये audit आप 9001 का करोगे तो probably utilities you will spend lesser time. So depending upon the standard requirement, depending upon the status and importance of activity, you will devote the time for the frequency for the internal audit. So that is part of planning. Now who will do the audit? Competent auditor with the respective technical knowledge. तो टेक्निकल नॉलेज, प्रोसेसेस को समझने की नॉलेज भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ऑडिटर के लिए. तो ऑडिटर के लिए नेसेसरी कॉम्पिटेंस एंड टेक्निकल स्किल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड. क्राइटेरिया, ऑडिट क्राइटेरिया क्या होता है? नॉर्मली कंपनी के ओन प्रोसीजर्स, स्पेसिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल स्टैंडर्ड्स, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा. एंड स्कोप क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया का आप ऑडिट कर रहे हो या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हो या एक पर्टिकुलर प्रोसेस का ऑडिट कर रहे हो. एंड ड्यूरेशन ऑफ द ऑडिट आल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे आप फर्स्ट पार्टी ऑडिट करते हो, उसी तरीके से सेकंड पार्टी ऑडिट के केस में भी आपको प्लानिंग करना होता है. सो फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग एज डिटरमिन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पिटेंट ऑडिटर विद टेक्निकल नॉलेज. क्राइटेरिया कैन बी योर contractual obligations or the organization's environmental management system or the ISO 14001 standard or your supplier checklist or whatever agreed standard is there. Scope can be the entire facility or a specific area where you want to conduct the audit. For example, a particular product line of the supplier which you are buying. And duration also depends on the size of the scope. The same thing is applicable when it comes to the third party audit. The same methodology is there. Again, auditor competence gets increased. For example, internal audit में तो qualified internal auditors can conduct the internal audit, but when it is third party audit, so there is a special criteria which is the lead auditor course. So auditor must be
a lead auditor, certified lead auditor in that particular standard, for example, 9001, 14001 or 45001. And more importantly, auditors should have the technical knowledge and experience. So even if you are a lead auditor for 9001 or 14001 or 45001, but you don't have sector specific knowledge. Let us say you are auditing IT company and you don't have IT processes knowledge. So you cannot do an audit there. You can still do the audit there, but one industry expert will accompany with you as an advisor. So either the auditor is having the technical code and technical knowledge and expertise. वो technical knowledge and expertise को कौन decide करता है? Certification body decide करती है. ठीक है, तो ऑडिटर या तो खुद कॉम्पिटेंट है उस टेक्निकल प्रोसेस का ऑडिट करने के लिए, या अगर वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए क्वालिफाइड नहीं है, टेक्निकली क्वालिफाइड, तो उस पर्टिकुलर टेक्निकल सेक्टर का इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऑडिटर टीम के साथ जाता है एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट हु गाइड्स द ऑडिटर on the technical aspects of that particular process. So criteria can be ISO 9001, ISO 14001 or any standard against whom you are doing the audit. And again, scope depends on the scope for which the organization is being certified. And duration of audit also depends on there are certain accreditation requirements where depending upon the company's processes and manpower, etc. There are different factors for that. So basically, these are the norms of accreditation. Based on the norms of the accreditation, the duration of the audit is decided. So audit में पहले आप एक audit planning के बाद audit preparation करते हो, तो जिसमें आप एक advanced planning करके you notify the department or the process or the organization about the audit, because audit is not a surprise element. Audit आप कभी भी कहीं भी जाके audit, you cannot do an audit. So it is since it is a planned activity, systematic activity, document activity, so always a planning is there and prior intimation is there to the auditee. Auditee is the person or the department whose audit is conducted, and auditor is the person who conducts the audit. So there has to be a mutual, especially about the internal audit and also applicable for third-party audits, that you have to notify the person or the organization to be audited and agree on a date and time. And audit preparation में, see, external audit में तो you don't have that document, but internal audit में you always, because you are part of the organization, so those documents like procedures, manuals, formats, previous reports, etc., they are sometimes available in the company's documented management system. For example, many companies are using documented management system where all documents are there on the intranet. So you can always refer to those documents before conduct of actual audit or during the preparation stage, and you can always prepare your guidelines, checklists, etc. Sometimes you also use audit checklists, although the experienced auditors, they never use audit checklists. But for initial stages, when you are new to the auditing or you are new to the process or you are new to the organization and you get qualified as an internal auditor, so you can always make certain audit check. You can always refer some audit checkpoints or you can use some audit checklists. So चेकलिस्ट के एडवांटेजेस भी हैं, चेकलिस्ट के रिस्क भी है. चेकलिस्ट का एडवांटेज ये है कि इट एक्ट्स एज ए गाइड टू द ऑडिटर. तो जो ऑडिटर्स दोज हु आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस इन ऑडिटिंग, तो उनसे कोई चीज छूट ना जाए तो वो एक ऑडिट चेकलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, जिससे क्या एडवांटेज ये है कि दे विल बी एबल टू कवर ऑल द एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस टू बी ऑडिटेड एंड दे कैन रिकॉर्ड देयर फाइंडिंग्स आल्सो बेस्ड ऑन द ऑडिट चेकलिस्ट. बट अगर आप ऑडिट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, ऑडिट चेकलिस्ट को, तो कई बार क्या होता है आप इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और एक पर्टिकुलर एरिया जो आपने ऑडिट चेकलिस्ट में आपने एड्रेस किया है उसी पे फोकस करता है. तो ऑडिट चेकलिस्ट, दो इट इज नॉट मैंडेटरी, बट वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द skill and experience of the auditors. As I say, experienced auditors never use or very rarely use audit checklists because they remember those things by virtue of their experience. But new auditors, it is always better that they refer to the audit checklist so that they don't miss out on the important points. So normally जब audit होता है external audit, and you can do it for the internal audit also, normally opening meeting होती है जहाँ पे ऑडिटर ऑडिटिंग मेथडोलॉजी के बारे में बताता है. नॉर्मली लीड ऑडिटर, लेट अस से एक सिंगल ऑडिटर है तो वही एड्रेस करता है मीटिंग को. अगर एक से ज्यादा ऑडिटर्स हैं, टीम है पूरी, then lead auditor addresses the opening meeting where
all auditors, including the lead auditor, they give their introduction and they also seek the introduction of the auditees. उसके बाद ऑडिट को कंडक्ट करते हैं एज पर द ऑडिट प्लान. अगर कुछ फाइंडिंग्स होती है उसको रिव्यू करते हैं एंड फाइनली एक क्लोजिंग मीटिंग होती है. ओपनिंग मीटिंग में क्या होता है, ऑडिटर्स और ऑडिट टीम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑडिट स्कोप एंड मेथडोलॉजी और प्रोसेस को एक बार डिस्कस किया जाता है. नॉन कंफर्मिटीज का कैटेगराइजेशन एंड फॉलो प्रोसीजर्स क्या हैं वो ऑडिट टीम एक्सप्लेन करती है ऑडिटीज को या ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन को. तो इसका एडवांटेज क्या है, ये एक कम्युनिकेशन medium, because if third party audit is there then it is sort of external communication because the organization is communicating with external auditors, but internally it is a part of internal communication also. तो इस opening meeting से क्या होता है, एक openness और एक cooperation और एक effective communication को हम achieve कर पाते हैं. तो कुछ ऑडिटर्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं. ऑडिटर्स की अप्रोच होती है कि जब भी आप ऑडिट करते हैं एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर और एज एन इंटरनल ऑडिटर, यू ऑलवेज मीट टू द टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट डजंट मीन कि आप डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से मिल रहे हैं. टॉप मैनेजमेंट मीन्स इफ यू आर डूइंग इंटरनल ऑडिट देन यू आर इंटरेक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल विद द एचओडी डिपार्टमेंट, एचओडी जिस डिपार्टमेंट का आप ऑडिट कर रहे हैं. अगर आप एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हैं देन यू आर supposed to meet the top management. Top management means local top management, चाहे वो plant head है, चाहे वो branch head है या director of the company, अगर वो लोग वहाँ बैठते हैं तो ठीक है. ऑडिटर की हमेशा अप्रोच ये होती है कि he or she needs to understand the key issues in the organization. अब key issues में हम जब बात कर रहे हैं तो the key issues related to the scope of the quality or environment और occupational health safety management system, और basically जैसे हमने clause 4 में बात करी थी context of the organization, to understand the context of the organization कि उस organization का internal issues क्या हैं, external issues क्या हैं, interested parties कौन हैं, scope of the management system क्या है. So basically all these things are required for the auditor to understand. So ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंटरनल ऑडिटर हो, चाहे आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो, चाहे आप सप्लायर ऑडिट कर रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द की इश्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस? विल कम अप थ्रू द डिस्कशन ओनली. देन अगेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज आई सेड देयर आर सर्टेन क्रिटिकल प्रोसेसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में एनवायरमेंटल ऑपरेशनल कंट्रोल से रिलेटेड है या ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज हैं. सो ऑडिटर मस्ट अंडरस्टैंड एंड देन फोकस ऑन द क्रिटिकल प्रोसेसेस, बिकॉज आपका जो ऑडिट प्लान बनता है या जो आप ऑडिट मेथडोलॉजी यूज करते हो उसमें भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप क्रिटिकल प्रोसेसेस पे फोकस नहीं करोगे देन इट इज़ क्वाइट लाइकली कि जो आपका ओवरऑल ऑडिट रिजल्ट है या ऑडिट फाइंडिंग्स हैं वो मेच्योर ना हो या वो बहुत डिटेल ना हो. तो अंडरस्टैंडिंग एंड फोकस ऑन क्रिटिकल प्रोसेसेस a desired thing for the auditors. So auditors have to focus on the critical processes, and ultimate objective of the audit is चाहे वो internal audit है चाहे वो external audit है, the basic idea is business improvement. The basic idea is, so I was just explaining the auditor's approach. I think audit for business improvement, that was audible, na? Yes. So audit for, so basic objective of audit is a business process improvement. So that auditor must always keep in mind. So auditor is not like an inspector, चाहे वो internal audit हो, चाहे वो external audit हो, चाहे वो supplier audit हो, कि auditor is not like an inspector who is on a fault finding mission. The auditor is basically one who wants to or who is supposed to add value to the processes. So that includes business process improvement also. So auditor must always focus on business improvement, give new ideas. So as an internal auditor or as an external auditor, what you do is you meet the area representative, and some key guidelines for the auditors are that you must always talk to those who are performing the task. Because if you talk to top management, if you talk to the HOD, they will explain you everything. But as an internal auditor or as an external auditor or as a supplier auditor, you want to understand the effectiveness of the management system. So that is only possible if you talk to the persons, those who are actually performing the task. You want to see their awareness, you want to understand their understanding,
and you want to see how effectively they are implementing the management system. कोई भी management system हो, quality हो, environment हो, health or safety हो, yeah, for that matter, any management system. So that is very important that you always talk to those who are performing that particular task. Then you also need to explain there are certain characteristics or some desired traits for the auditors that you have to explain the purpose of the visit. कई बार audit के नाम से लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, काम सही कर रहे होते हैं, उसको अचानक ही गलत शुरू कर देते हैं या गलत explain कर देते हैं. तो you don't have to create any panic situation there. So best thing is you be calm, polite, reassuring. You explain the purpose of your visit. You never have to act superior. You never have to talk down. And most importantly, you have to speak clearly and carefully. So these are certain characteristics or some desired traits for the auditors. तो audit process क्या है? Auditor के लिए auditor information collect करता है. So there is some source of information which provides you the information. The information results in the audit evidence, and if it is meeting the criteria, it is okay. If it is not meeting the criteria, then comes a non-conformity. तो ऑडिटर एक इंफॉर्मेशन को कैसे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ऑडिटर कैसे कलेक्ट, ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करता है, एविडेंसेस को, रिकॉर्ड्स को रिव्यू करता है, एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म होती है उसको रिव्यू करता है, एंड रेलिवेंट लोगों से बात करता है, अंडरस्टैंड करता है उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज के बारे में. ऑडिटर सीक्स वेरिफिकेशन ऑल्सो. Auditor compares with the audit criteria. Audit criteria can be company's own documented management system as well as the requirements of the particular standard. Then finally, auditor reviews that data, the information which he or she has collected, and compares with the audit criteria, and finally decides whether it is meeting those norms or not. If it is meeting, okay. If it is not meeting, then it can be a non-conformity. Again, depending upon the gravity of non-conformity, it can be both minor and major non-conformities have to be adequately addressed. But if it is a certification decision, in case of major non-conformity, auditor cannot recommend award of certificate. So it has to be done with a follow-up audit. But follow-up audit is restricted only to the area where the major non-conformity was found. If a minor non-conformity, auditor can still recommend for award of certificate, but again, it is subject to the root cause analysis and corrective action for the detected non-conformity. So ultimately, non-conformities have to be closed. कई तरीके हैं ऑडिटर्स के पास ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के, चाहे वो आप इंटरनल ऑडिट की बात करें, चाहे हम की बात करें, या हम सप्लायर ऑडिट की बात करें, यानी फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट. तो क्या मेथडोलॉजी है, आप इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हो, आप लोगों से बात करते हो, इंटरव्यू करते हो, उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हो, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस में मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट कैसे की जाती है, क्या डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, क्या रेलिवेंट रिपोर्ट्स हैं, क्लाइंट फीडबैक है या कोई रेगुलेटरी बॉडी का फीडबैक है. आप लोगों से बात करते हो, लोगों का कॉम्पिटेंस जज करते हो, इवन लेवल ऑफ कोऑपरेशन जज करते हो, कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है उसको आइडेंटिफाई करते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि लोग उस सिस्टम एंड डॉक्यूमेंटेशन को कितना समझते हैं और कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनसी मशीन, ही मे बी वेरी कॉम्पिटेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, कि वो अपने पार्ट को प्रॉपरली बनाता है, ड्राइंग के हिसाब से बनाता है, इंस्पेक्शन भी करता है, या वट एवर इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, बट ही मे नॉट बी कॉम्पिटेंट फ्रॉम environmental point of view, he may not be competent from safety point of view. For example, जो desired PPs हैं, he is not wearing PP, अपना काम तो ठीक से कर रहे हैं, लेकिन जो PP उसको वियर करना चाहिए, चाहे वो मास्क है, चाहे वो हेलमेट है, चाहे वो गॉगल्स हैं, चाहे वो क्या कहते हैं सेफ्टी शूज हैं, ही इज नॉट वेयरिंग. तो ही इज कॉम्पिटेंट और ट्रेंड फ्रॉम क्वालिटी परस्पेक्टिव, बट ही इज नॉट कॉम्पिटेंट और ट्रेंड फ्रॉम ओसास परस्पेक्टिव. सेम वे ऑल्सो कि रिजेक्शन एंड रीवर्किंग को वो कैसे हैंडल कर रहा है, वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट कर रहा है, वेस्ट को एंड नॉन हैजार्डस वेस्ट को प्रॉपर्ली सेपरेट बिन्स में रख रहा है, नहीं रख रहा है. तो इफ इज नॉट डूइंग दैट प्रैक्टिस,
So he may be competent from QMS perspective, but he's not competent or trained from EMS perspective. So there is some gap. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड की पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना है, मीट करना है। तो आप एक्टिविटीज को भी ऑब्जर्व करते हो, कैसे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, प्रोसेसेस इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं, एक लॉजिकल सीक्वेंस जो एसओपी में डिफाइन किया हुआ है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रोसेसेस के बीच में इंटरलिंकेज क्या है, प्रोसेसेस के बीच में सिग्निफिकेंस क्या है, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर्टिकुलर प्रोसेस के सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या है, उन प्रोसेसेस का मॉनिटरिंग मेजरमेंट कैसे हो रहा है, उस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए रिसोर्सेज क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो देयर आर डिफरेंट वेज एंड मीन्स थ्रू विच ऑडिटर as an internal auditor, as an external auditor, as a second party auditor can collect the objective evidence. Then records are for internal audit or external audit point of view. तो आप documents and records को verify करते हो because you can correlate it with the clause number 7.5 which is basically the documented information, because standard में ISO 14001 में काफ़ी सारे documents की काफ़ी सारे records की requirement है। तो उन documents का control क्या है, उन records का control क्या है, क्या वो documents and records complete हैं, legibility क्या है, availability और डिजायर्ड रिसोर्स डिजायर्ड प्लेसेस क्या है, उन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कौन कर रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स की समरी क्या है। देयर आर डिफरेंट वेज एंड मींस थ्रू विच यू कैन वेरीफाई द एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो आपको जो एविडेंस मिलता है आप उसको इवेल्युएट करते हो इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा। डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा कंप्लीट है, एक्यूरेट डाटा है, प्रॉपर ऑथराइजेशन है, उस डाटा का एनालिसिस है, उसके एविडेंसेस को इवैल्यूएट कर रहे हो, एंड किन एनवायरमेंटल कंडीशंस में आप उस डॉक्यूमेंट एंड डाटा को प्रिजर्व कर रहे हो या यूज कर रहे हो, एंड अल्टीमेटली you establish to what extent there is non-conformity or the conformity. So it is not only the non-conformity you have to identify and capture in your audit report, you also have to note down the extent of conformity, because audit doesn't mean कि you only have to report the non-conformity. Audit also means that you have to mention the audit evidences which you आपने ETP एरिया का ऑडिट किया है, तो आपने का ETP यानी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का आपने लॉग बुक जो भी मेंटेन हो रही है वहाँ पे उसको आपने वेरीफाई किया, आपने ETP का जो SOP है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको वेरीफाई किया, आपने ETP ऑपरेटर से उस SOP की अवेयरनेस को वेरीफाई किया, आपने ETP ऑपरेटर जो वर्क प्रैक्टिसेस वहाँ पे फॉलो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू, ऑफ कोर्स अगर आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट कर रहे हो तो आप IMS पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेक करोगे, अगर आप सिर्फ EMS कर रहे हो तो EMS पर्सपेक्टिव से चेक करोगे। कहने का मतलब ये है कि दैट ऑपरेटर में भी बट दैट ऑपरेटर में नॉट बी फॉलोइंग द नॉर्म्स एज पर EMS। फॉर एग्जांपल जो ETP का स्लज है विच इज ए हैजार्डस स्लज, so it has to be stored like a hazardous waste. ETP operator may not be with proper identification, so that becomes a non-conformity. So you have to establish the extent of conformity as well as non-conformity both with respect to the standard for which you are doing the audit, and then you also have to see nature of non-conformity. Normally internal audit में we don't बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस करती भी हैं, but most of the organizations do not classify as a non-conformity as a minor or major non-conformity. But जब हम एक्सटर्नल ऑडिट की बात करते हैं तो कैटेगराइजेशन इनटू माइनर और मेजर इज ए मस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली on the basis of categorization you are deciding whether to recommend or award that organization the respective certificate or not. ठीक है, and then one more important thing is कि सैंपल आपको कितने सैंपल चेक करने हैं, कितने रिपोर्ट चेक करनी है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपका टाइम एलोकेशन क्या है और जिस ऑपरेटर या जिस मैनेजर या जिस इंचार्ज या जिस एम्प्लॉय से आप इंटरेक्ट कर रहे हो उसका कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, उसका ट्रेनिंग लेवल क्या है, उसका एक्सपीरियंस लेवल क्या है। तो ये होता है क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय लेट अस से सेम ऑर्गेनाइजेशन एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर आई एम विजिटिंग again and again, and I have
audited that employee also several times, and I know his competence level also. He is a quite experienced, qualified person, experienced person. तो जब आप उस employee से interact करते हो, तो the depth of auditing is comparatively less because you've already interacted with the employee several times previously. But if you are interacting with a new employee, you have found he has joined the organization recently, so he or she may not be aware of the processes in detail. तो आपकी auditing and probing becomes in more details. तो आप क्या सैंपल सेलेक्ट करते हो और कितनी डेप्थ में आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हो, इसके लिए कोई फिक्स गाइडलाइंस नहीं है. इट entirely depends upon your skill and experience as an auditor. As I said, कि कभी कभी आप checklist को भी यूज कर सकते हो, but again normally experienced auditors जो day in day out audits करते हैं, तो they normally don't use a checklist unless there is some checklist specified by the certification body. So they do it more by the virtue of their experience and skills. But if you are a first timer, or if you are a new auditor, or if you are an internal auditor who very rarely does the internal audit, then it is always better you can use an internal audit checklist or third party audit checklist, and you can refer to that so that you don't miss out on some important aspects of the auditing. तो important चीज क्या है, आपको नॉन कन्फॉर्मिटी एंड कन्फॉर्मिटी जो भी आप वेरीफाई करते हो उसको रिकॉर्ड करना है. टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बिकॉज स्पेशली इन केस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट में तो इवन इफ देयर इज टाइम रीरन, अगर आप आज कोई टास्क कंप्लीट कर पाए तो यू कैन ऑलवेज अगेन म्यूचुअली डिसाइडेड टाइम पे आप दोबारा से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो. बट एक्सटर्नल ऑडिट में वो भी अगर लेटर से कोई आउट ऑफ स्टेशन ऑडिट हो, तो आपके पास ना तो आपको टाइम मिलेगा, ना आपको सर्टिफिकेशन बॉडी अलाउ करेगी कि वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ऑडिट देन यू री ऑडिट. तो इस केस में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप डिले ना हो और आप एक ही प्रोसेस में, एक ही एक्टिविटी में आप स्टकअप होके ना रह जाओ. सो कंट्रोलिंग द पेस ऑफ द ऑडिट, एंड समटाइम्स you meet different kind of audit personalities also, auditees personalities also. कई लोग ऑडिट के दौरान ऑडिटर्स का टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, गॉसिपिंग करने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू डिस्कस ऑल अदर थिंग्स अदर देन the scope of the audit. So you have to be aware of those kind of things, and you have to manage the pace of audit, control the pace of the audit as per your requirement. Then you have to ensure that all areas, all processes which you are scheduled to audit, they are adequately covered. You have to make a detailed audit report also, so you ensure that you take proper notes so that you can later on prepare a final report in proper details. And that report or those audit notes you can keep for, you can have for future reference also. तो normally auditing में आप कुछ क्वेश्चनिंग टेक्निक्स यूज करते हो. अगेन जहाँ पे हमने 5W1H की बात करी थी, तो we were talking about why we were asking question why 5 times. one why, second why, third why, fourth why, fifth why. तो यहाँ पे भी हम 5W यूज करते हैं और 1H यूज करते हैं, बट ये डिफरेंट W's हैं. तो इसमें क्वेश्चनिंग टेक्निक्स के थ्रू आप ऑडिट के बारे में, ऑडिट प्रोसेस के बारे में और ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो. कैसे? सो नाउ हियर W इज डिफरेंट. So first W is who does the activity. Second W is what work is performed. Third W is when. तो ये एक्टिविटी कब परफॉर्म होती है, एंड वेयर, किस जगह पर ये परफॉर्म होती है, और ये एक्टिविटी आप ऐसा क्यों करते हो, व्हाई, एंड देन हाउ इट इज डन. सो बेसिकली दीज आर द क्वेश्चनिंग टेक्निक्स. यू आस्क द क्वेश्चन जिस भी सीक्वेंस में आपको जानना है, जिस भी सीक्वेंस में आपको ऑडिटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. सो यू आस्क द क्वेश्चन W 5 times, but now in terms of what, when, where, how, and who. And then finally how. One H is how. So there are 5 W's: who, what, when, where, and why, and there is 1 H, how. So these are the questioning techniques which you use during the auditing. Then auditing, controlling the audit, because pace of the audit is also important. There are certain things, so you have to take care that insist that people being questioned answered for themselves. Then as an auditor you are asking questions, so do little talking, let the other person respond, because question हमेशा one liner होता है, answer takes more time. So do little talking as possible,
do not let others dictate the pace of the audit. As I explained, there will be people who try to waste your time during the audit. So don't let them dictate the pace of the audit. And you must ensure you must follow your timings also. Sometimes you need to rephrase the misunderstood questions also. Find some good working methodology or good system. So you can always give some compliments, and you can also say thanks wherever some information has been shared. But you have to be aware of the hidden agendas and some emotional blackmailing while doing the audit. So there are certain basic rules. So ultimately, through the audit, you are trying to verify or you are trying to assess whether the company has got adequate control over the operations or processes or not. Then you need to involve the management also in the audit process. Observe work progression wherever possible, whenever possible. Evaluate the evidence which has been given to you. Examine the inputs and outputs, and also make comprehensive notes which will help you in preparation of the audit report. So some basic rules are there that seek verification. It is not that people will lie to you, but wherever required, you can verify the statements also. For example, if you went to store and you ask about कि साहब ये मटेरियल ये केमिकल आता है तो क्या इसके साथ इसका मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट या वर्क इंस्ट्रक्शंस कुछ आता है सप्लायर की तरफ से, तो स्टोर वाला सेज कि यस आता है लेकिन हम उसको क्वालिटी को भेज देते हैं बिकॉज क्वालिटी इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ उसको फाइल अप कर लेता है. So when it is not कि store person is lying to you or is giving you wrong information, but when you are auditing or when you are talking to the quality guy, so you can always talk to them, cross verify. Okay, तो क्या जब raw material आता है chemicals आते हैं तो do you get some material safety data sheet also with that? So wherever required, where you feel like as an auditor, you can always verify statements if you feel like. But very important thing is कि you should not accept pre-prepared samples. As an auditor, you must always select the sample size on your own. Otherwise, क्या होगा? If you give the liberty to the auditee, then auditee will always share that sample, that report, that product, that process, which is perfectly all right. ठीक है? तो sample size you have to sample, you have to select on your own. That is very important. General principles of auditing, again, some basic ethics हैं, work ethics हैं, integrity, fair presentation, due professional care. You have to take care of the confidentiality also because whatever information client is providing you, audit is providing you, you have to keep it confidential and should not share with others. Independence of the audit, and ultimately it's an evidence-based approach. So this always you must keep in mind. So auditors have to be ethical, auditors have to be open-minded, diplomatic wherever, but because you need people management skills also. Then you have to be observant. So you have to actually observe how the activities are being executed. You have to be perceptive also, aware and able to understand various situations, versatile, decisive, and self-reliant. So these are some auditor's personal attributes which you should have or should develop. Whether you are doing internal audit or supplier audit, what is expected from auditors is that they have a knowledge of audit principles, procedures, methods, that particular respective management system, चाहे वो quality है, environment है, health safety है या कोई और standard है, and उससे related documents, उस organization का organizational context, उस organization की applicable legal and contractual requirements. Normally होता क्या है, like for example, we external auditors, it's not कि we are auditing clients in India only, so we go to other countries also for auditing. तो अब हर कंट्री की लीगल रिक्वायरमेंट्स, एक्ट्स एंड रूल्स, हालांकि बेसिक चीजें तो वही होती हैं, बट स्टिल एक्ट्स आर डिफरेंट, रेगुलेशंस आर डिफरेंट, देयर टाइटल इज डिफरेंट, देयर इशू नंबर इज डिफरेंट, देयर ईयर ऑफ इशू इज डिफरेंट, देयर नॉमेनक्लेचर इज आल्सो डिफरेंट. तो इसमें भी ऑडिटर्स को होमवर्क करना पड़ता है. For example, if you are auditing India, तो India की contractual requirements, legal requirements we are aware. But if we are with some other country, तो we need to do some homework. We need to understand. और आजकल तो Google के through and maybe the local office can also provide you the inputs. So we should be aware of the local legal requirements also.
or country specific legal requirements also where you are doing auditing. So in that case, let us say I am visiting some country first time and I'm not aware of the legal requirements there. So before visiting there, I must, so here that audit checklist will help me कि मैं वहाँ जाने से पहले उस कंट्री के जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है या नेट से डाउनलोड कर सकता हूँ या किसी लोकल रिसोर्सेज से या मे बी इवन आई कैन सी हेल्प फ्रॉम कंपनी ऑल्सो कि आपकी कंट्री में जो भी एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स है शेयर कर दो. कई बार लैंग्वेज इज ऑल्सो प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू मिडल ईस्ट तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इज मोस्टली इन अरेबिक लैंग्वेज सो विच यू मे नॉट बी कन्वर्सेंट. तो देन यू ऑल्सो हैव ऑलवेज हैव टू सीक एक्सटर्नल हेल्प कि वो कोई आपको ट्रांसलेट कर दे, ट्रांसलेट कर लो. तो बेसिकली ये है कि यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ सो दैट यू डू ए प्रॉपर जॉब. अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि साहब आप किसी दूसरी कंट्री में ऑडिट करने जा रहे हो और आपको उस कंट्री स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं मालूम. तो अगर रिक्वायरमेंट्स के बारे में मालूम नहीं है तो आपको कैसे ऑडिट करोगे कि वो लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है. सो एज एन ऑडिटर आपको अपनी नॉलेज को, स्किल्स को एंड लोकल इश्यूज को एंड लोकल रेगुलेशंस को जानना समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर मैंडेटरी फॉर ऑडिटर्स. So some other responsibilities of auditors also like balance the strength and weakness of individual. Let us say there is a big audit team, so you are a lead auditor. So कुछ responsibilities you have to balance the strength and weaknesses of the individual team members. You have to develop a harmonious working relationship among various team members. You have to plan audit overall and effectively use the audit resources. You have to manage the uncertainty of achieving audit objectives. Even health and safety ऑडिट टीम मेंबर्स के लिए भी ज़रूरी है, कंप्लायंसेस उनके लिए भी ज़रूरी है. जो पीपीज ऑर्गेनाइजेशंस खुद यूज करती हैं, सो ऑडिटर्स दे आर सपोज टू प्रोवाइड द सेम टू द ऑडिटर्स आल्सो सो दैट ऑडिटर्स आल्सो फॉलो द सेम पीपी. आप कंस्ट्रक्शन साइट में जा रहे हो तो सेफ्टी शूज या हैट या जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है जो लोग काम कर रहे हैं तो ऑडिटर्स के लिए भी चीज़ ज़रूरी है उस उन पीपीज को प्रोवाइड करना. एंड एज एन ऑडिटर आपको भी इंश्योर करना है दैट यू गेट adequate resources which are required or adequate PPs which are required. So there are certain responsibilities which are related to the audit team leaders also. तो कुछ गुड प्रैक्टिस ऑडिटर्स की क्या होती हैं? ऑडिटर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, एजेंडा को समझाते हैं, देन टाइम प्रोग्रेशन को मॉनिटर करते हैं, आर्गुमेंट्स को अवॉइड करते हैं, जो ऑडिटी एक्सप्लेन करता है उसको प्रॉपरली सुनते हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं और एक ओवरऑल काम प्रोफेशनल एटीट्यूड को डिस्प्ले करते हैं. तो जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, कई बार वो ऑडिट मल्टी डेज ऑडिट भी होता है, तो एक एंड ऑफ द डे मीटिंग करते हैं, रिव्यूज करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं, नॉन कंफॉर्मिटीज को लिस्ट डाउन करते हैं और रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं कि कोई आइसोलेटेड लैब्स है या ओवरऑल सिस्टम ब्रेकडाउन है और क्या ऑडिटर को ऑडिटी को उन लैप्सेस के बारे में पता है, क्या वो डेफिशिएंसी पहले भी रिपोर्ट की गई है. दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट. उसके बाद एक क्लोजिंग मीटिंग होती है. इंटरनल ऑडिट में वो क्लोजिंग मीटिंग थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होती है, बट इंटरनल ऑडिट में इट इज मोर कंस्ट्रक्टिव विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम इंप्रूवमेंट. बट थर्ड पार्टी ऑडिट जहाँ होते हैं, सेकेंड पार्टी ऑडिट में भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं क्लोजिंग मीटिंग के, बट इट इज मोर रिलेटेड टू द कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट. एंड थर्ड पार्टी में it is always related to the decision of whether your organization will be awarded the certificate or recommended for certificate or not, whether the existing certificate, for example if it is a surveillance audit, whether the existing certificate will be continued or not. थर्ड पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट में जो क्लोजिंग मीटिंग होती है उनका एजेंडा थोड़ा सा डिफरेंट होता है. आप उस नॉन कन्फॉर्मिटी को किस क्लॉज के अगेंस्ट, किस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट और क्या उसका एविडेंस क्या है वो आपको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना जरूरी होता है. तो इट इज लाइक ए स्टेटमेंट, ए शॉर्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द नॉन कन्फॉर्मिटी इंक्लूडिंग व्हाट द इशू इन द क्वेश्चन, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी.
For example, let us say the compliance of regulation related to say Indian electricity rules is not properly followed. तो ये आपने एक statement कर दी. Why it is why it is a requirement? Then you specify कि this particular activity is a requirement or this particular thing is a requirement. And what objective evidence you have found? So you have found कि in front of electrical panels, the insulation mats were not provided or earthing testing is not done. So you have to explain properly what is the non-conformity, with what reference you are raising the non-conformity, and what is the evidence of that particular non-conformity, objective evidence. The objective evidence which supports your statement of non-conformity. The contract review results was not affected, and this is with respect to the requirement of clause 8.2.3.2 of ISO 9001, or for that matter any standard 14 है 45 है या कोई और स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आपने किया तो you specify the requirement and then you mention the objective evidence why it is a non-conformity. Finally, the audit report is hello. Yeah, please mute. So finally, the final reporting process happens. Audit report is prepared. So audit report includes, so different certification bodies have different methodologies, different norms, but ultimately all there will be definitely some audit report which addresses who were the auditors, क्या scope of audit था, overall conclusion क्या है, deficiencies क्या observe हुई, observations क्या observe हुई with the supporting objective evidence and also evidences of conformity. अगर कोई follow up करना है तो उसकी details भी रहती है. Then कई बार क्या होता है कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो आपने लेटर से कुछ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन या फॉर एग्जांपल आपने कोई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया, तो कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो हो सकता है कई बार आपसे शेयर भी ना की जाए. और इवन इफ द इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड, so there is a request कि okay you can verify because as an auditor you are supposed to verify but that should not be reported. तो इस तरह के कोई इश्यूज होते हैं तो उनका भी ध्यान में रखा जाता है कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एज एन ऑडिटर ऑडिटी ने आपसे शेयर की है बट यू शुड नॉट पुट इट अप इन द रिकॉर्ड और यू कैन पुट अप सम जेनरिक स्टेटमेंट विदाउट मेंशनिंग द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो दिस इज हाउ द ऑडिट रिपोर्टिंग इज डन. And finally follow-up is done wherever non-conformities का रूट कॉज, करेक्शन, करेक्टिव एक्शन ये सब वेरीफाई किया जाता है. अगर कोई रिलेटेड फॉर्म्स हैं जो क्लाइंट ने साइन करने हैं या इवन इंटरनल ऑडिट में कोई नॉन कंफॉर्मिटी रिपोर्ट है या ऑडिट रिपोर्ट पे जो ऑडिटर ऑडिट then comes the audit registration process. So I think Samarth can explain this audit registration process. So I'm handing over to you. Yes, all right. So we'll be following up with this slide along with the Q&A session. So first of all, I would like to thank Atul Suri sir for spending the time with us, giving us a good 7-8 hours of training in the whole day on a Sunday and, helping our audience understand the standards to, perform well in the industry and understand the compliances, etc. So again, thank you very much, sir, for your knowledge, expertise and your time. All right, so we'll start with the Q&A session now. Other than that, I was just going through the audit registration process. So Sagar, can you please help me with that slide? So talking about the audit registration process flow. So basically, whenever your organization signs up for an ISO 9001 or 14001 or any kind of certification scheme, this is the core process that is followed, right? So it starts with an application. Organization will give an application to the certification body in their format for, in which there will be certain details about the organization, such as organization name, address, number of sites, scopes, number of employees, other critical information respective to the standard. Once the application is given, the certification body will assign the relevant technical codes and then they will give the commercial quotation upon sign up of which the project will be opened. So once the project is started, first of all, a stage 1 audit is done, which is basically a documentation review. So after stage 1 audit is done and the company's documents are evident to the standard requirement, then the auditor proceeds for the stage 2 audit, wherein they check the implementation of the audit program and implementation of the standard within the company, right?
Then the company gets certified for the first year. And then if during the cycle, if there are any special conditions such as site addition or scope change or addition of scope, right? In such cases, special audit is performed so as to include that into the certification scope as well. And then package review and certificate is issued. Once your certificate is issued, it is valid for 3 years subject to clearance of annual surveillances. So an annual or a semi-annual surveillance audits based on the preference of the customer is taken up. And after 3 year cycle is completed, recertification audit is done every 3 years. So this is a typical process flow. Thank you very much, Sagar, for this thing. And now we are beginning with the Q&A session. Sagar, please display the Q&A session slide. And now a raise of hands or in the chat box, you can upload certain queries and we can answer those, right? So first of all, please raise your hands. Mr. Deva, I think so. You were raising your hand for quite some time. Mr. Vinod Kumar. Yes, Vinod. I was asking regarding that. Are you provide this consultancy for ISO certification external auditor? Sir, see, I will tell you there are two things with respect to this thing. When you talk about consultancy and when you talk about auditing, these are two different kinds of processes, right? Consultancy is basically implementation of the standard in the company, and auditing is checking whether it is implemented or it is certified. So always there is a conflict of interest situation, wherever the organization is auditing, they cannot give the consultancy. They can do trainings, but not specifically consultancy. And if the organization is consulting the specific organization, they are giving trainings, they cannot do the certification part of it. Okay, okay. Oh, I hope that answers your. So, what kind of things you do? So basically, our organization is into training and certification. We do the certification part of it, and there are many good consultants that are working. We can panel you with some of the good consultants, and they can help you implement these in your organization. Anyway, you can contact our sales team for this thing. They will definitely connect you to some valuable resources. Okay, okay. And sir, for this certification purpose, you are going to send any link in chat, or you will send in mail? So basically, after this training session, you will receive a mail as well as we'll upload it in the chat, the examination link. So you can take it from either of the places. Okay, okay, sir. And When Mr. did this 5 o'clock will? Yes, sir. This 5 o'clock is the ending of the session, I think so. Yes, yes. We'll just take a few moments more. There are a few more slides to be presented. After that, we can end this session and you go about the training exam. All right, sir. Sure, sure, sure. Thank you so much. Thank you for the information. And Mr. Negi, please get in touch with Mr. Deva. Thank you very much. And now we are having Mr. Vinod. Vinod Kumar ji, please unmute yourself and speak, please. Mr. Vinod Kumar. So Ms. Bhavna Uppal is writing about timelines to submit the exam. So ma'am, tonight by 12 midnight, you can submit the exam, and if you are submitting before midnight, it will be considered. Next query, please. Mr. Vinod Kumar ji, you want to speak something or should I lower your hand? Hello. Sir, I would like to have a question. Then what will be the timing for the examination which you have uploaded on that website or somewhere? Basically, the examination will be mailed to you, right? It is it should take 30 to 45 minutes of your time depending on your level of preparedness, and it can be submitted before 12 midnight today itself. 12 midnight. So yeah. When the link will be started working? So that we can give us... receive the mail, the link will be active. It will close the link at 12. At 12. So till 12 midnight today, we can submit our question, answers and all. Yes, yes, yes. It is an objective type question paper, so it will not take much time of course. Okay, not issue. Thank you so much. Thank you so much, Sanjeev ji. Shyam Singh ji, you want to say something? No, I just want about this examination today. Only today we can do only. Yeah, only today you can do before 12. Vinod ji, you want to say something or should I lower the hand? Mute yourself and speak, please. Mr. Saddam. Yes, Saddam ji. Saddam Hussain ji. Yeah. Good evening, sir. Hello. Good evening. How are you? Very good evening, sir. Yes, Yes. fine, sir. What about you, sir?
Good, So good. it was very it was very interesting session. Actually, my doubt is so when we will get the link for the test Right. because I am traveling. So at that time I was unable to. No, you will just get the link shortly. Once the training program is over, our team will just mail the link to you. In the next 10-15 minutes, we have a few more slides. The registered mail. Yeah, on the registered mail with which you have done the registration. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Have a nice day and safe travels. Okay, any other queries? Anyone would like Bye to bye, discuss? sir. Bye bye, sir. Bye bye. Thank you very much for this very good training program. I request you to please stay in the training. The training program is not over yet. This is just a Q&A session going on. Can we receive hard copy of the certificate? Sir, it will be a soft copy certificate and you can just print it by yourself or you can give it to any other printing shop. It will be a PDF file, so it will be a high quality file. What about ISO 9001 internal auditor certificate which was done last month? So I think so, sir, we have mailed all the certificates. And if you have not received Mr. Praveen Singh Negi, please get in touch with Brijesh Srivastavji and ensure the certification is provided to him. Mr. Praveen Singh Negi has uploaded his contact number in the chat box. You guys can connect directly with him. He will give it to you. Okay, sir. All right. So I have a few more slides to display and a few more topics to discuss. I'll just share my screen and get started on that. So is my screen visible to all? Yes, sir. All right. So there are some certifications and internal audit training programs that are offered by our Quality Asia certifications. So one is ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environment Management System, ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System, ISO 50001 Energy Management System, ISO 27001 Information Security Management System, ISO 22000 Food Safety Management System, ISO 13485 Medical Devices Quality Management System, and ISO 26000 Social Accountability Management System. Accreditations at Quality Asia certifications are commitment to excellence is validated through our prestigious accreditations. We are proud to be recognized by leading national and international accreditation body, including NEBCB, that is a National Accreditation Board for Certification Bodies, which is an IAF accredited body, ensuring the highest standards of quality and compliances. Our accreditations reflect our rigorous adherence to industry standards and our dedication to providing reliable and trustworthy certification services. Just a moment. Our accreditations reflect our rigorous adherence to industry standards, and we are a proud BNI, that is Business Network International member. Introducing our leadership team, we have Mr. Atul Suri as our lead auditor and reviewer, who is responsible for leading teams of auditors and establishing excellence in auditing operations, who has taken the training also today. Then we have Mrs. Seema Suri. She is the Director Accreditations and responsible for maintaining accreditation status and heading audit review and certification decision process. Then we are having myself, Mr. Samad Suri, as a Managing Director, responsible for marketing and promotions and ensuring right visibility of the certification body. Then we are having Ms. Palak Ahuja as the General Manager Certifications. She is responsible for heading and managing certification operations and ensuring client success through certifications. Then we are having our core team. In our core team, we are having Mr. Praveen Singh Negi as the Business Development Head, responsible for heading sales team and ensuring customer acquisition in the most ethically right manner. Then we are having Mr. Sagar Mahor. He is the certifications head, responsible for heading teams responsible for scheduling of application reviews, audit reviews, certification decisions, and surveillances and recertifications. Then we are having a big team of auditors who are responsible for conducting ethical and quality-rich audits, enabling organizations to understand and upgrade their systems and processes. And we are having another team of executives who are responsible for managing the shows behind the scenes. Right? Then we would like to discuss certain more things. So on our Quality Asia website, you will find our training calendar, the link of which will will be sent to you in the mail as well. So we are having a few more training programs scheduled up till financial year end, and post that we'll plan for some more. So on October 20th, Sunday, we are doing ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System internal auditor training. On Sunday, November 24th,
certified internal auditor training on ISO 50001 energy management system. On Sunday, December 23rd, we are having certified internal auditor training on ISO 22000 food safety management system. On Sunday, 26 January 2025, certified internal auditor training on ISO 27001 information security management system. This will be a must take certification for all of you. So on Sunday, February 23rd, 2025, we have certified internal auditor training on ISO 13485 medical devices quality management system. And on Sunday, March 23rd, we are having a certified internal auditor training on ISO 26000 social accountability management system. Right. So the link of the training calendar will be given to you in the mail. Also, when you go to our Quality Asia website, on the home page in the resources tab, you can find this training calendar. Then we have launched a Quality Asia School, which is a free LMS open training. That is a learning management system, open LMS for these trainings. So as we have done last month, ISO 9001 quality management system training. So I will show that to you. So if you open this page, you will find the YouTube link to this, the training material and the training certification exam. So all of you who couldn't attend or couldn't give full time to this, or if you are any colleagues, relatives, anyone else who would like to access the content to the ISO 9001 training session, you can share this link with them. On our website, you can click on to Quality Asia School and then you can navigate to your favorite training. And ISO 14001 training will also be uploaded in the next 7 days. Right. Then there is one YouTube channel on which we are uploading by the name of Quality Asia School. So I would request all of you to visit our training programs. All the recording of the training programs will be added over here. And please like, share and subscribe. Then I'll show you certificates that you will be getting after the training. Just a moment, please. So this is a sample of the certificate that will be shared after the training program, right? And this training certificate, there is a certificate number which you will find ISC 00080, right? Similar kind of certificate number you will be getting, and you can go to our website homepage. You can go on this search and there you can search for training certificates. In training certificates, you'll have to select the internal auditor training tab and you have to paste your certificate number over here and you have to search. One second. So if you search like this over here, you will find the validation to the training program that will your training certificate that will ensure that your certificates are authentic and they are traceable, right? So all of the certificates that are awarded to all the people who have qualified the training shall be traceable in this manner. You can search in the search feature in the training certificates, internal auditor training certificates. Right. And also I would like to ask you to share your license training certifications on your LinkedIn page. For example, this is my LinkedIn page and this is a previous training certification that I have got. So if you open it here, so by this way you can share your training certificate. You can go to your LinkedIn exam under license and certification. You can add one training program here. You can click on plus and then you can fill up these fields. I'll show you one example as well. So when you go here, you can type here ISO 9001 2015 internal auditor or 14001 or whatever it is there. In the issuing organization, you can select Quality Asia certifications. Issuing date will be the month of issue of your certificate. There is no expiration date of this certificate. Then you can put the training credential. And then you can add media. You can upload your PDF copy of your certificate over here, which will be displayed on your LinkedIn. And you can add a good description, whatever you feel about the certification. So in this manner, this will ensure that your LinkedIn profiles are also updated with your, you can say, training certificates. And this will ensure, good career prospects and opportunities in the future. And also it will help us promote this training program by the mode of LinkedIn. So I will request all of you to please engage in this and share the certificates on your LinkedIn profiles. So that's all from my side as of now. Sagar, can you please display the last slide? Oh, 1 second, I'll just do that for you. So coming back, Sagar, can you please shoot the link now for the training exam? So once you receive the training exam mail, you will find access to all of these things. You will find an access to the training material, to the training evaluation, Google form. So the exam will be in the form of Google form as it was in the last month's training. You have to attempt that exam. And basis on the results of that exam, if you score 50% plus, we'll be awarding you the internal auditor training certificate. Then there is a training calendar for our upcoming trainings. And there are certain links to our other resources such as WhatsApp channel, Instagram, LinkedIn, and Quality Asia School and our YouTube channel. So I would request all of you to please circulate these channels and help us reach the right audience for these training programs and other certification schemes offered by us.
So that's all from my side. I'll hand over this call to Sagar and Mr. Praveen Singh Negi, who will be here to assist you. You guys can check whether you have received the mail or not. Sagar, can you please confirm that if you can stop the recording and you can even confirm that you have sent this mail? Over to you, Sagar. Hello. Yes, Yes. I'm just shooting it. Wait 2 minutes. In 2 minutes. In the meantime, I have uploaded in the chat box also. And Okay. So yes, in the meantime, also please switch off the recording now since the training is now officially over. In the meantime, I will just answer some queries. So one of the queries is, can I have the PPT in my mail? So yes, the PPT will be attached along with your mail. Along with that, it will be there in the Quality Asia School as well.